on the backhand. Mani trying to return, not succeeding. 2-1. Sampada serving. Look at the variation in the angles. First went on the cross court and then again went on the backhand and got that point. 2-all. Nityashree. Lot of spin on that serve. That is where the return going over the table. Controlling the return is very important when you receive a spun serve. Little rally, but in the end, Mani just trying to go on that backhand, trying to counter the chop, hitting it long. 3-all opening game. और जैसा कि हम जानते हैं बेस्ट ऑफ द 3 का ये पहला मैच और दोनों ही खिलाड़ी का प्रयास रहे कि जल्द से जल्द जीत द्वारा बढ़त बना सके। और आप देख सकते हैं संपदा युवनकर सर्विस करते हुए डीप ब्लू टी शर्ट में बढ़िया रिटर्न मगर यहाँ पर सर्विस को उनको। और अब स्कोर हो गया है 4-4 की बराबरी पर। सर्विस बैक टू नित्याश्री मानी मद्रास यूनिवर्सिटी। काफी देर बाद एक अच्छी रैली देखने को मिली मगर अपनी ही सर्विस पर अपना रिटर्न सही ढंग से वापस नहीं कर पाई और अंत में एक अंक गंवाया। 5-4। अभी भी एक अंकों का फासला दोनों खिलाड़ियों के बीच में। एक बार फिर से सर्विस करते हुए ये टेबल 1 का पहला मैच आज दूसरे दिन का। सर्विस में बदलाव मगर लगातार 2 अंक। भरपूर कोशिश करती हुई प्रयत्न जारी है मगर अभी तक सफलता नहीं। सर्विस बैक टू रिटर्न टू संपदा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की अच्छी सर्विस। किसी भी खिलाड़ी को अगर सर्विस में पॉइंट मिलता है आप समझ सकते हैं उस खिलाड़ी का आत्मविश्वास कितना बढ़ जाता है। ये पहला गेम बेस्ट ऑफ द 5 का स्कोर है 7-4। एक बार फिर से 2 अंक गंवाने के बाद एक अंक जीत गया 7-4 के स्कोर पे। Superb top spin on that return, picking up that point. Right now 5-7. Nityashree Mani from University of Madras preparing to serve. That is a very good serve, pretty deceptive as well. And the forehand return going beyond the table. 6-7, still a slender lead for Chandigarh University. That is a weak return and easy put away there for Nityashree Mani. Even Stevens to score 7-all. Sampada serving. 8-7. Trying to go for that backhand chop, putting it into the net. 8-7. Fantastic return of serve, quick sense of anticipation. Came with that backhand cross-court return on the body. 8-all. Nityashree staying pretty focused, keeping the opponent guessing on how she is going to serve. A very good return. 9. Not really anticipated, but a little slow to move on to her right at the forehand going into the net. 8-9. Oh, lovely little rally, and then Nityashree trying to close out the point, hurrying it up and closing the face of the racket a little early, putting it into the net. So that sets up 2 game points in favor of Chandigarh University. That is Sampada Bhivankar preparing to getting ready to serve, staying bit cool. This is what you should never hurry up. You got 2 game points. You hurry up, you make an error. Takes the allotted time to serve. See the focus. Good toss. Oh, there it is. The first game in favor of Chandigarh. Chandigarh University. Sampada Bhivankar closing it out at 11-8. The opening game. It looked pretty close, but in the crucial points she came off well. Sampada, that is where the confirmation of this score.
And a word of advice from the respective coaches. And there it is, Sampada from the Chandigarh University. And this is Niteshri Mani, and her coach has to say something because it is a close contest, Anil. In fact, up to 8 points, it looked as if it is anybody's game. बिल्कुल सही, शुरुआत काफ़ी ज़बरदस्त हुई थी यहाँ पर संपदा की। उन्होंने अपना संकेत दे दिया कि वो किस तरह की खिलाड़ी है, और आप देख सकते हैं फासला ज़्यादा नहीं, 11-8, 3 अंकों का अंतर है। तो ये गेम किसी भी तरफ जा सकता था, मगर जिस तरह से हालांकि कोशिश भरपूर की थी मनी ने, मगर उनको सफलता अभी तक नहीं मिली। खास करके अपनी सर्विस पे भी अगर आप पॉइंट अर्ज नहीं कर सकते तो थोड़ी सी बेचैनी या थोड़ी सी अपने आप को मतलब कंफर्टेबल फील नहीं होता है। लेकिन फिर भी बेस्ट ऑफ द 5 है, पहला गेम हारने के बावजूद अब दबाव थोड़ा सा मनी के ऊपर रहेगा कमबैक करने के लिए। But normally, psychologically, the person who held the first game will have a psychological advantage as she prepares to serve. Sampada, bit unlucky net card for Mani. The ball just clipping the top of the net and going outside the table. 1 love. मैं देख रहा हूँ नेट के बगल पे खेलने में थोड़ा सा उनको उतनी आसानी नहीं होती है, थोड़ी सी घबरा जाती है। लगातार 2-3 अंक पिछले मैच में भी और अभी भी 1 अंक उन्होंने जो गंवाया। अब थोड़ी सी सर्विस पर बदलाव करती हुई, हाई एंड सर्विस, मगर फिर भी बहुत बढ़िया उसको, और ये पहली बार 4 हैंड स्मैश, और इससे उनका आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ेगा क्योंकि हर एक अंक क्योंकि इस मैच इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। Definitely would always try to level the game score. Oh, superb. I think they probably after the first game they had a discussion with the coach, must have told her to go on an aggression. That is what we are seeing from the beginning. कॉन्फिडेंस के साथ साथ कन्विक्शंस का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। आपका आत्मविश्वास बहुत अच्छी बात है, मगर मैं कर सकती हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। और लगातार 2 अंक अर्जित करने के बाद उन्होंने साबित कर दिया कि दूसरे गेम में उनके खेल में आप देख सकते हैं काफ़ी बदलाव। This time again trying to go for that top spin return, but not closing the racket early. 4-2. See, this is what sometimes gives that psychological advantage. When you show the attacking mode in the beginning, you see that is where the last point here, and she was in a hurry. Sampada was in a hurry to close it out. You don't have to be that complacent also, क्योंकि हालांकि आपने पहला मैच जीत लिया है, लेकिन दूसरे मैच में आपको वो लीड अगर बरकरार रख सकते हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। Lovely rally here, but the forehand from Sampada letting her down. Both the players just see the power on that good forehand smash from Mani. Oh, what a serve! He should have capitalized on that. That was a bit short serve, kept the opponent guessing, but then in the end, Mani could not close it out. टेबल टेनिस में सबसे बड़ा हथियार होता है किसी भी खिलाड़ी के लिए सर्विस। अगर आप उस पे अंक गंवा देते हैं तो थोड़ी सी मतलब नाखुश तो होना ही है, मगर आप अपने आप पे दबाव बना लेते हैं। That's what happened here, and on this occasion, look at the last point here. Yeah, trying to go for that forehand spin. This time thinking was good. She tried to go on the backhand and wanted to go on the corner. Look at that. That is where she's making that error. (6-4). Again, the thinking was good. Seeing the opponent on the left side of the table, wanted to go on the forehand corner of the table, hitting it long. 6-5. Niteshri serving. Let. You see that she doesn't have high toss on her serve. Focuses a lot. In fact, she goes very much onto the, the leg side of the table and then brings the ball into her before serving. That seems to be her strategy, the way of serving. If you have another look at her serve, see where she's standing, where she's tossing the ball. Look at that. And then the ball comes onto a racket there. ये जो एक तरीका है किसी भी खिलाड़ी का जो सर्विस करता है, ये कंफ्यूज करने का अपने अपोनेंट को, मगर कहाँ तक वो सफल होते हैं ये तो सर्विस के बाद ही पता चलता है, क्योंकि आपने सामने वाला खिलाड़ी जो पहला गेम जीत चुका है तो आपको समझ जाना चाहिए कि
उसका भी जो जवाब होगा वो किस तरह का होगा. Keep the receiver guessing. That is a very good return. Picking up that point. A good comeback here. It's 8-5. Look at that point. दूसरे मैच में बहुत अच्छा कमबैक किया है, 9, मगर यहाँ पर 5. थोड़ा सा दबाव झलकता हुआ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की संपदा के ऊपर कि अभी भी जैसे उन्होंने सर्विस पर अपना अंक गंवाया और अब 9-5-4 अंकों का फासला दोनों खिलाड़ियों के बीच में. Good 9, thinking to 6. go on the powerful forehand smash, hitting it along Niteshri Mani. Still a 3-point lead for her, serving at 9-6. And her squad cheering her up because she has to win this game to level the game score. Oh, great effort there. 10. That is a very good spun serve. Weak return and nicely put away there. That sets up 5 game points. 4 game काफी points. बहुत खराब रिटर्न था, इतना ज़्यादा उसके अंदर फ्लाइट थी कि बहुत ही आसानी से फोरहैंड 11, स्मैश और एक अंक 6. जीत गया. 10-6, First game 4 अंकों की बढ़त. अब to 11-6 से दूसरा मैच University of जीत लिया है. Madras. बहुत बढ़िया कमबैक यहाँ पर मैं बताऊंगा. तो दोनों खिलाड़ियों ने, पहला संपदा ने और दूसरा मणि ने जीत लिया है. तो बेस्ट ऑफ द 5 में दोनों खिलाड़ियों ने एक मैच जीतने के बाद अब तीसरा मैच काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि अब दोनों खिलाड़ी एक की बराबरी पर हैं. और जो दर्शक हमसे देश से जुड़े उनको बता दें कि ये डीडी स्पोर्ट्स पर आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं. तरुण फूके इंडोर स्टेडियम, सारजी बलवा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, गुवाहाटी से आज दूसरा दिन है और टेबल नंबर 1 का ये पहला मैच. 2 गेम हो चुके हैं और ये जो टेबल नंबर 1 पे जो मैच चल रहा है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी संपदा B1 का वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास नित्यश्री मानी. तो पहला मैच चंडीगढ़ ने जीता 11-8 और दूसरा मैच मद्रास ने जीता, कमबैक किया 6-11 से. बहुत बढ़िया. और अब तीसरे मैच की तैयारी चल रही है, देखना है इसकी शुरुआत कैसे होगी. Absolutely, the game score is leveled 1-all. 5. And a lot of thinking to do for both the players. Good comeback by Madras University, that is Niteshri Mani, losing the first game at 8-11, coming back strongly in the second. Showed a lot Third of game, aggression from the beginning University of Madras. and succeeded in that Serve. as well, picking it up at level Love 6. all. And we are going into the game number 3, and it is Niteshri Mani serving low all. Nicely trying to change One. the angles and then just trying to go on the top spin back and cross court to hitting it wide. Love 1. Taking the permitted time to serve, the right thing to do. Good thinking from Sampada on that occasion. Wanted to return it on the backhand. Seeing Mani was far away from the table, missing it. A short little rally, the net card not going in favor of Sampada, hitting the top of the net and going long. There it is. Look at that back and top spin, hitting the net and going long. A superb rally here. This is where you say the luck can always play. She went on the backhand, wanted to go for that counter chop. Look at that again. See that quick little rally, lovely one run. And there, little unlucky there. काफ़ी एकाग्रता पूर्वक दोनों खिलाड़ी इस मैच को गंभीरता से लेते हुए, दोनों खिलाड़ी एक मैच जीतने के बाद में तीसरे मैच में वो जानते हैं कितना महत्वपूर्ण है. टेबल 1 पर आज का पहला मैच मद्रास और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बीच में वोमेंस का. अच्छी सर्व, उतना ही अच्छा उसका जवाब, मगर यहाँ पर वही दोबारा ये 5वीं ना 6ठी बार ये मनी से गलती हुई है. नेट के करीब से वो उतनी अच्छी तरह बॉल को पार नहीं कर पा रही है. हालांकि कोशिश जरूर कर रही है, मगर अभी तक उनको जहां तक मैं देख रहा हूं पहले, दूसरे और तीसरे मैच में भी वही गलती बार बार वो कर रही है और अंक गंवा रही है. सर्विस फॉर संपदा. 4-2. That is a very good serve and a weak return, and Sampada in the right position to go for the forehand smash and goes up 5-2. Oh, that's long. 5.
trying to go for that backhand top spin return, hitting it long. 3-5 Niteshri. 3-5 पर सर्विस करते हुए स्काई ब्लू जर्सी पर संपदा, माफ कीजिएगा, नित्या श्री मणि 3-6 से पिछड़ते हुए अब 3 अंकों का फासला, तो काफ़ी अच्छी कमबैक की है यहाँ पर आप देख सकते हैं। और स्काई ब्लू टी शर्ट पे नित्या श्री मणि मद्रास यूनिवर्सिटी की, जैसा कि हर बार वो कोशिश करती है अपनी सर्विस में थोड़ा बदलाव लाने की। देखिए इस बार वो क्या करती है, इस बार काफ़ी फास्ट और लो सर्विस, उसको सही ढंग से बैक एंड रिटर्न नहीं कर पाई और एक अंक फिर से गवा दिया। 7-3, अभी भी 4 अंकों का फासला। What a powerful forehand smash from Chandigarh University's Sampata, forcing that error and going up 8-3 with her own serve to follow. Good thinking here, trying to return that, trying to go for that cross-court backhand top spin return. It's 4-8, Niteshri Mani serving. Game each, the first game in favor of Sampada 11-8. Niteshri came back strongly in the second, 11-6. Now third game here. Oh, superb work here. Quick sense of anticipation and perfectly transferring the shoulder power on that forehand. Look at that. There it is. Absolutely no chance. So much of power and speed on that. Still a deficit, 3-point deficit, 5-8. Niteshri. Superb backhand. Absolutely top spin return. 2 अंक जिस तरह से उन्होंने अर्जित किए, दोनों अलग अलग तरीके के, पहले बाएं फिर दाएं, और फुटवर्क जो मैं देख रहा हूँ, हालांकि संपदा का फुटवर्क काफ़ी अच्छा है, मगर फिर भी यहाँ पर तारीफ करनी पड़ेगी मानी की। और फिर से एक बार, और ये बहुत ही मतलब कहना मुश्किल किस तरह से उन्होंने खेला, इतना अच्छा मौका उनको मिला। ये देखिए शायद अपने आप से नाखुश होगी। For a moment Niteshri thought it was all over, but not to be so. What a comeback by Sampada on that particular point. 7. संपदा का जो पेशेंस है जो नज़र आ रहा है, उनका जो शारीरिक भाषा है बहुत पॉजिटिव है, सकारात्मक है। दूसरी तरफ मानी भी अच्छा खेल रही है, मगर थोड़ा सा दबाव झलक रहा है उनके खेल में, कुछ अलग करने की कोशिश करने में वो अंक गंवा रही है। एक बार अच्छी सर्विस, इस बार बहुत बढ़िया, उन्होंने कोई मौका नहीं दिया अपने अपोजिट खिलाड़ी को। See, there was a lot of side spin on that, but then so much of power on that forehand cross court, smothering that spin, winning a point. ये इनकी सबसे बड़ी ताकत है। 8-9. Good thinking here, seeing that open part of the table there, as Sampada was very much on the back and corner side. She tried to go for it. Have a look at it there, but ball just missing the edge of the table. So that sets up 2 game points in favor of Chandigarh University. 10-8 Sampada serving. संपदा जो मानी जब खेलती है तो उनका एक साइड बिल्कुल खाली रहता है, उसका वो फायदा नहीं उठा रही है। दूसरी तरफ मानी उसका पूरा फायदा उठा रही है। Oh, there it is, the backhand Third game. return from Chandigarh Niteshri going into the net with that Sampata Vivankar from Chandigarh University, wrapping up the game number 3 at 11-8. A similar score, 11-8. She had taken the first set, the last hit at 6-11 in the second set. Now, with that game, now she is winning it at 11-8 as well. And Niteshri Mani having a word with that coach, giving her a lot of advice. In fact, a few points I felt Niteshri could have gone in her way, but it didn't. And Sampata is staying cool and able to control the crucial points. बिल्कुल सही, इसमें कोई शक नहीं। पहला मैच जीतने के बाद जिस तरह का दबाव उन्होंने बनाया था, मगर दूसरे मैच में थोड़ा सा मैं कहूँगा बेहतर खेली मानी ने,
मगर तीसरे मैच में उन्होंने जिस तरह से कमबैक किया, अभी भी पहला और तीसरे मैच का स्कोर 11-8 और अब 3 मैच में से 2 संपदा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीता है और 1 मद्रास ने। और अब जैसा हमने कहा कि बेस्ट ऑफ द 5 मैचेस है, तो अब गेम Absolutely, 2 games to 1 at the moment is a lead for Chandigarh University as Sampada preparing to serve. Just trying to go for that backhand chop, putting it into the net. Love one. Oh, what a powerful return of serve from Mani, Niteshri Mani to Love. Again in a hurry to close at that point on the forehand, Niteshri hitting it long. 2-1. Game number 3. Rather 4. 2-1. Oh, that was the last point. Trying to hurry up and closing out the point, hitting it long. Niteshri serve. 1-3. Sampada closed the racket little early on her backhand, putting it into the net. 3-1 lead. Now it's 1-3. Sampada. Good little rally, but Sampada just trying to go for that forehand spun return, hitting it long. Down 1-4. बिल्कुल आपने सही कहा, स्पिन करने के चक्कर में उन्होंने थोड़ा सा गलती कर गई और अब ये 2-4, अभी भी 2 अंकों का फासला दोनों खिलाड़ियों के बीच में। चौथा मैच, पहला मैच चंडीगढ़ ने जीता। ये जो मैच है इस बार बेस्ट ऑफ द 5 में 3 मैच, 2 मैच संपदा ने जीता और 1 मैच नित्या ने जीता है। तो ये मैच संपदा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, खास करके अगर वो जीतती है तो वो जीत जाएगी। मगर दूसरी तरफ नित्या की कोशिश रहेगी वो किसी भी तरह से ये मैच जीते ताकि 2-2 की बराबरी हो। Absolutely, that is what the player should be aiming at. And from Madras University, it is Niteshri Mani preparing to serve. 4-3. 3-5. The return just going long. A lot of support and cheer coming up from her squad for Niteshri Mani there. 3. Oh, 6. can you believe that? The way she closed the face of the racket in time. Look at that. There it is. And then this top spin. Just on the edge of the table. 3-6. Both the players just going on their backhand. And the error this time coming from Niteshri racket. Now serving 6-4. And 2-1 in favor of Sampaka. That was the game score. 5. Timeout. Timeout taken, and rightly so by Chandigarh University. They know that this game is crucial to wrap it up. बिल्कुल सही, 2 मैच है, 3 में से 2 मैच जीतने के बाद डेफिनेटली वो चाहेगी कि वो चौथा मैच भी देखिए किस तरह से फोरहैंड पर अंक अर्जित किया और फिर बैकहैंड पर कोई जवाब नहीं यहाँ पर संपदा का। एक बार फिर से फुल में काफ़ी खाली जगह छोड़ देती है और उसका पूरा फायदा। और ये देखिए क्या गलती उन्होंने की। एक बार फिर से दोनों खिलाड़ी, मगर अच्छा रिटर्न बैकहैंड पर नहीं कर पाई संपदा। हालांकि कोशिश एक बार फिर से आप देखते संपदा भिवनकर डीप ब्लू नीले रंग की चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की तरफ से, दूसरी तरफ स्काई ब्लू के अंदर में नित्याश्री मणि मद्रास यूनिवर्सिटी की, जिनको ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी है अगर वो कमबैक करना चाहती है, क्योंकि 3 में से 1 मैच, 2 मैच वो हारी है, 1 जीती है और ये चौथा उनके लिए जीतना बहुत ज़रूरी है। सर्विस फॉर स्काई ब्लू कलर नित्याश्री मणि ऑफ मद्रास यूनिवर्सिटी। 6-5 1 अंक का फासला। और यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा इतनी अच्छी रैली, बहुत बढ़िया सर्विस
मगर जो अंत होता है, शुरुआत काफ़ी अच्छी, कंटिन्यूशन भी काफ़ी अच्छा था, मगर उसकी जो कंक्लूजन था वो काफ़ी खराब। और अब 6-6 की बराबरी पर थोड़ी सा दबाव महसूस करती है यहाँ पर नित्य श्री मानी मद्रास यूनिवर्सिटी की। अब सर्विस फॉर संपदा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की, और एक बार फिर से बैक एंड रिटर्न, थोड़ा सा कंट्रोल 6-7 पर सर्विस करती हुई, और अनलकी थोड़ा सा भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया। और अब 8-6 2 अंकों की बढ़त 8-6 पर सर्विस करती हुई। ये देखिए किस तरह से अनगोया सर्विस करते हुई मनी स्काई ब्लू, और ये बहुत बढ़िया रिटर्न, मगर फोरहैंड पर अपने शॉट को कंट्रोल नहीं कर पाई और संपदा ने एक अंक अर्जित किया। फिर भी सर्विस अभी भी नित्य श्री मानी यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास के पास। 8-7. Oh, a bit unlucky there. Nityashree just trying to go on the backhand to close at the point. There it is. But full credit also to Sampada, because her backhand cross court is very strong and powerful. This was an unforced error from Sampada there, trying to go for that backhand push, putting it into the net. 8-9. Oh, that is error this time coming from Nityashree, trying to close out that point. There it is. Thinking was good, try to hurry it up on her backhand, putting it into the net. 9-all. A very, very evenly contested game here as Nityashree preparing to serve. Lovely rally. Valiant attempt on the backhand. Quickly she moved to her left, Sampaga, but the placement was perfect from Nityashree, picking up that point and also setting up a game point as well. Serving at 10-9. Can she close it out to level the game score as she prepares to serve? Focused serve. Oh, that she's a bit over anxious to close it out on the backhand, hitting it beyond the table. It's 10-all. What a game it has been. Pretty absorbing. Both the players trying to give their best. 10-all. A lot of spin on that backhand serve. Went with that heavy spin on that. Couldn't be countered. So this time game point in and a match point in favor of Sampada. 10-11. Nityashree Mani serving. Oh, there it is. What a way to wrap it up at 12-10. Sampada Vivankar from Chandigarh University winning this opening match in, very nicely in wrapping up those 3 sets. The fourth set score being 12-10. The first set went in her favor, 11-8. And then it was a look at this. 3-1 is the final game score. And customary shake of hands. And what a match it has been, Anil. बिल्कुल कोई शक नहीं, क्योंकि टेबल 1 का ये पहला मैच दूसरे दिन का मद्रास यूनिवर्सिटी और चंडीगढ़ के बीच में। और हम देख रहे हैं हाइलाइट्स, ये पिछले मैच का यानी चौथा मैच 12-10 से जीता और 2 अंकों का फासला। मगर फिर भी तारीफ करनी पड़ेगी संपदा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की, जिस तरह की खेल का प्रदर्शन उन्होंने किया। पहला मैच 11-8 से जीता, दूसरा मैच उन्होंने 6-11 से हार गई, लेकिन तीसरे मैच में फिर कमबैक किया 11-8, और उसके बाद चौथे और निर्णायक मैच में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए वापसी की और इस 3-1 से बेस्ट ऑफ द 5 के मैच में 12-10 से चौथा मैच जीत के ये टेबल 1 पे पहला मैच दूसरे दिन का उन्होंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की संपदा विवनका ने जीत लिया है। और आगे का हाल हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से हमारे साथी कमेंटेटर आपको सुनाएंगे। Thank you, Anil, and thank you, Sri. Good morning, viewers. I am Akshay Maurya, and I welcome Vikas Pandey along with me in the commentary box. And what a way to start the proceedings on day 2.
of Khelo India Youth Games here, as the match between University of Chandigarh, which is incidentally not in Chandigarh, it is in Punjab. It's close by station. That university is taking on the University of Madras, and as the two players you see on your TV screens in blue jersey, it's Trisha Gogoi, and Ashika Lekandar of Madras will be taking on this next match. So, Vikas, welcome, and very good morning to you, and good morning to all the viewers on Doordarshan. अक्षय, आपको भी शुभ प्रभात और सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। प्रदर्शन कुछ वैसे ही प्रदर्शन की आशा। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बीच में ये मुकाबला है बेस्ट ऑफ 5 में। जो पहले 3 सेट अपने नाम करेंगे, मैच अपने नाम करेंगे, वो विजेता बनेंगे, जबकि इसके लिए बहुत कुछ निर्भर करेगा किस तरीके से शुरुआत होती है। चलिए मुकाबले की शुरुआत। और आशिका जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास की हैं, 269 की विव में आपको नजर आएंगे, हल्के नीले कलर की पोशाक में, जबकि त्रिशा गोगोई चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की हैं और वो गहरे रंग की पोशाक में, जो नीले रंग की पोशाक है उसमें नजर आएंगे। वुमेन्स टीम बी ग्रुप का ये राउंड 2 है और यहाँ यकीनन जो शुरुआत हुई है दिन की, संपदा ने एक अच्छी शुरुआत दिलाई है अपनी टीम को, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को, और यकीनन उसको आगे बनाए रखने की कोशिश होगी त्रिशा की। और त्रिशा इस समय वही कोशिश कर रही हैं। त्रिशा 3-0 से इस मुकाबले में लीड कर रही हैं। और कुछ नसीहत वहाँ अंपायर जो हैं आज के DVSY शर्मा और आयुष वर्मा, 2 अंपायर इसके मुकाबले के। अच्छा प्रयास था वहां पर, लेकिन वो वाइड जाता हुआ और 3-1 की बढ़त पर इस समय 4-1 एक बार फिर से एक अच्छे पॉइंट के साथ इस मुकाबले में 4-1 की बढ़त पर जा पहुंची हैं त्रिशा। त्रिशा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की हैं, सर्व करती हुई। इस बार खुश नहीं त्रिशा का वो अटैम्प्ट, और उनके हाव भाव देखकर भी लगे कि वो बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं थी। अच्छी डेलिकेट सर्विस, और इस बार फिर से वो गलती जो पिछली बार त्रिशा ने की थी, वो गलती आशिका के द्वारा। देखिए किस तरीके से जो सेंटर प्रयास था उसमें कामयाबी मिली नहीं। बीच ये नेट पे गलती कल भी हमने देखी थी, कई बार मुश्किलों में डालती नजर आई थी अक्षय। और यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है कि आप जितना कम से कम अनफोर्स्ड एरर करेंगे, उतने आपके चांसेस बने रहेंगे मुकाबले में। Absolutely. Just a thought, looking at these two players, very backhand dominated, both of them, Ashika and Trisha Gogoi, and with a good solid lead. I always get a very anxious and keenly interested when it is something around 7 or 8. That is the point, that is the moment when there's a very, very difficult probably position. See that in replay, how it all this really panned out. One more point in Trisha Gogoi's kitty. Oh, look at that forehand. Beautiful response from Ashika there on that occasion. Strong forehand, but unfortunately landing outside the table. This is the mistake. Every time Ashika has looked to charge, she's not been able to control the pace. She's got the shot right. Her selection has been good. But look at that score now. 4-10. Now only great position she is in now, like 6 ball points in this first game. Trisha Gogoi, strong forehand, a great response once again. 5-10. And like the fact that Ashika is not giving up.
University of Madras in light blue jersey. The girl, look at that in replay. Good control of pace and great angle generated. Soft hand. She had done that earlier in the game. Now look at that. It's all over. And as she wraps up at 11-5, Trisha Gogoi seals the game number 1 in this second match between Chandigarh University and Madras University. So that's on your TV screens. I'm glad that the Madras player can still manage to smile. Good that to keep your morale up because no matter what happens, and it is the early stages as far as this second match is concerned between University of Chandigarh and the University of Madras. That's the Chandigarh player in dark blue jersey. The highlights of the game number 1, how it panned out. I mean, she had her moments. There were instances when Ashika compelled Trisha for those unforced errors, but she couldn't control her own errors. So look at that response. Beautiful backhand there. So that tells you the story. And there we go as the game number 2 begins. Straight away faltering, hitting that one into the net. A little overly soft. Trying to control the pace there, Trisha Gogoi, and hitting that one on net. Oh, I really like the intention as far as the Madras player is concerned, Vikas. Ashika, the choice of shots, her selection has not been that bad. It's just that the execution has not been at par, unfortunately. 2 all. और उसी एग्जीक्यूशन की तलाश होती है जब भी आप टेबल टेनिस जैसे पेसफुल गेम पे फोकस करते हैं, अगर ध्यान देते हैं तो वहाँ पे वो एग्जीक्यूशन ज़रूरी हो जाता है. अच्छी सॉफ्ट सर्विस और रिटर्न जब आया तो वो निराश करता हुआ. ध्यान रखना होगा याशिका पहला गेम बड़ी आसानी के साथ गंवा चुकी हैं. उन्हें मोमेंटम बनाने की ज़रूरत है, लेकिन एक अच्छा फोरहैंड क्रॉस कोर्ट यहाँ से लगाया और वो अंक बटोरा. देखिए किस तरीके से जब वो स्पेस मिला क्रॉस कोर्ट में जाने से बिल्कुल घबराई नहीं और अंक बटोरती हुई. यहाँ पर सोच अच्छी थी लेकिन वो थोड़ा सा वाइड जाता हुआ. और यकीनन त्रिशा काफी बेहतर नजर आ रही हैं. अगर उनके रिफ्लेक्सेस देखें, आप उनके बॉडी लैंग्वेज को देखें तो बिल्कुल एक क्वालिटी प्लेयर नजर आती हैं. और उसी का एक नमूना है यहाँ पर पेश किया उन्होंने जब जबरदस्त स्मैश के जरिए ये पॉइंट सेंटर ऑफ द टेबल से हासिल किया. यहाँ रिटर्न अच्छा था लेकिन वो नेट से जो एडवांटेज मिलना चाहिए था इस बार याशिका को मिला नहीं. देखिए किस तरीके से थोड़ा सा एडवांटेज मिला, ब्लॉक अच्छा आया था लेकिन उसके बाद से वो अंक मिलता हुआ. 6-3 से आगे चल रही हैं और यकीनन त्रिशा के लिए बेहतर होती चली जा रही हैं परिस्थितियां. जबकि अब यहाँ से याशिका को संभलने की जरूरत. फिर से एक और गलती और वो जो डायमेंशन है उसको समझने की जरूरत. टेबल की डायमेंशन कहाँ आपका पैडल जाके रुकता है, किस फोर्स के साथ जनरेट करती हैं आप, बहुत अहम हो जाता है. 5-7. एक बार यहाँ पर अच्छा रिटर्न आया, उसका फायदा मिला तो मोमेंटम शिफ्ट होते देर नहीं लगती है. टेबल टेनिस जैसे गेम में जब आप अंक लेते हैं तो लगातार आपको मिलते चले जाते हैं, मोमेंटम मिलता है तो. लेकिन यहाँ मोमेंटम खोती हुई याशिका जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास को रिप्रेजेंट कर रही हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के अंदर. वुमेन्स टीम बी राउंड 2 का ये मुकाबला. और अच्छा रिटर्न आया था और उसके बाद से जब रिस्पॉन्स आया त्रिशा की तरफ से तो वो बिल्कुल टेबल से बाहर गिरता हुआ. और एक अच्छा अंक. क्या मोमेंटम पकड़ेंगी? 9-6. नेट पे ऐसे अनफोर्स्ड एरर से बचने की जरूरत है. अगर वापसी करनी है याशिका को तो ध्यान देना होगा कि ऐसी गलतियां आप नहीं कर सकते. एक अच्छी छोटी सी रैली लेकिन अच्छा स्ट्रोक प्ले हुआ दोनों तरफ से और अंत में फिर से वो अंक मिलता हुआ. बॉल पॉइंट और 4 बॉल पॉइंट्स हैं इस समय और आसानी के साथ इसको दूसरे गेम को भी अपने नाम करेंगी त्रिशा गोगोई. चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने पहला मुकाबला जीता था बेस्ट ऑफ 5 का और उसके बाद से दूसरे मुकाबले में भी इस समय त्रिशा गोगोई याशिका के खिलाफ जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास की हैं
आगे चलती हुई 2-0 से। Check it out in the highlights there, how the game number 2 also panned out. Very similar, almost the scores are also almost identical, 11-5, 11-6, and literally dominating all the way. Trisha Gogoi representing the Chandigarh University. And as the players get back to the table for game number 3, Trisha has got oodles of experience as she is in the university now, but she's got enough experience. She's been a player for a long time, and even though she's representing Chandigarh University, but she's a local girl. She's from Assam only. Her schooling has been done in Guwahati, and our viewers and all of us yesterday had a great talk with the legendary Mona Lisa Barua Mehta yesterday in the commentary box. She's the one who coaches her. So she's been a medalist throughout her school and at this university also. Good experience, and good that Chandigarh University has got talents like that. You know, moving from northeast all the way to north, and getting the exposure and sharing her experience with other players in other sides of the country, and that is the main objective of Khelo India Youth Games, that the talent and the experience gets shuffled and it gets movement throughout the country. Sitting comfortably in this third game as well, Trisha Gogoi with 4-1. 1-5. And now one more point in her kitty. The service is with Ashika Neelakandan, 1-6. representing the University of Madras. But she's been having a tough time, and she's up against a tough competitor. We have to say that. Somebody like Trisha Gogoi, who with years and years of experience, and she's a very, very talented girl, Trisha Gogoi. I'm sure even if Mona Lisa Barua has not made it to the stadium here, but she must be keeping a close eye as we are bringing live action on Doordarshan for our sports lovers, and also streaming live on the YouTube channel Prasar Bharati. 7-2. Oh, look at that. Beautiful serve, sharp angle, and a bit of side spin also. See that in the replay. Beautiful angle, and serving with an open face. She's got all the shots in the armory, Vikas. She's a delight to watch. And the best part about Trisha Gogoi is that she's not really looked overly aggressive. She's not really gone all out. It's almost like she's making it look really, really easy. And that is the hallmark of a real talent. बिल्कुल, और उनके तरकश में वो हर एक शॉट है। और देखिए, किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। नेट पे वो थोड़ी सी गफलत हुई, और उसके बाद से बड़ी आसानी के साथ वो अंक मिला था, और अब मैच पॉइंट पे सर्व करती हुई त्रिशा वाइड। ऐसा लगा कि वो जो पैडल है उससे टकरा कर गई थी, और इस समय अभी भी वो मैच पॉइंट। क्या खत्म होने वाला है मुकाबला? जी हां, बिल्कुल, बड़ी आसानी के साथ वो इस मुकाबले को सील करेंगी। त्रिशा गोगोई ने लगातार 3 गेम्स में 11-5, 11-6, 11-3 से जीत दर्ज करके अपनी प्रतिद्वंदी याशिका को परास्त किया है, और मद्रास यूनिवर्सिटी के लिए अब मुश्किलें दोगुनी हो चुकी हैं। अगर तीसरा मुकाबला जीत नहीं पाई मद्रास यूनिवर्सिटी, तो यहीं पे उनका खेल खत्म हो जाएगा आज का सफर, और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एक अच्छी पोजीशन में अब नजर आ रही है। अब वक्त है एक अगले मुकाबले का, जहां पर अगले मुकाबले के लिए हमारे दोनों साथी कमेंटेटर्स तैयार बैठे हैं। तो स्वागत है श्रीनिवास सिसाद्री और अनिल शर्मा आपके लिए अगले मैच के साथ। वो अब तक 2 मैचेस हो चुके हैं। आज दूसरे दिन 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी के 2023-24 इसका आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं डीडी स्पोर्ट्स पर, तरुणराम फुके इंडोर स्टेडियम, सार्जिबल वर्ल्ड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गुवाहाटी से। टेबल 1 पे अब तीसरा मुकाबला शुरू होने जा रहा है, और यह है जॉन मारिया एंकी और कौशिका दास गुप्ता के बीच में।
कौशिका दासगुप्ता चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की, और दूसरी तरफ जॉन मारिया आंची। आप देख सकते हैं दोनों खिलाड़ी आपने अपने रैकेट्स, और जैसा कि हर मैच के पहले थोड़ा सा वार्म अप किया जाता है। फोरहैंड बहुत बढ़िया दोनों का, ये आप देख सकते हैं। डीप ब्लू के अंदर में है, स्काई ब्लू के अंदर में है जॉन मारिया एंची, और ये है डीप ब्लू के अंदर में कौशिकी दासगुप्ता, और ये देखते हैं स्काई ब्लू में जॉन मारिया आपकी स्क्रीन पे, और अब आपकी स्क्रीन पे है कौशिकी दासगुप्ता। ये तीसरा मुकाबला टेबल 1 पर दूसरे दिन का चौथा संस्करण खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023-24 टेबल टेनिस का मुकाबला इस वक्त डीडी स्पोर्ट्स पर आप लाइव देख रहे हैं, तरुणराम फुकन इंडोर स्टेडियम चार्जीवन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गुवाहाटी से। This is women's team B round 2. The players just warming up there in the court number 1, which comes as a live coverage. And from University of Madras, it is John Maria Ansi taking on from Chandigarh University, Kaushiki Dasgupta. Dasgupta on the dark blue dress, the shirt here, and 257, rather 267, jersey number. John Maria Ansi from Madras University, Tamil Nadu. And the players are just getting ready. The match the third match, Madras University it's, Laval. see the chair that has the Laval, and it is Madras University. John Maria serving. Love 1. One all. That's 1 all now. Dasgupta serving. What a powerful forehand down the line from Dasgupta, picking that point with a stamp of authority. Look at that. Quickly moving into that position. Comes with that deep, powerful forehand winner. Leading 2-1 now. Kaushiki Dasgupta of Chandigarh University. 2-1. 2-1. Good toss. 1-3. I'm trying to go for a top spin return. Rather trying to counter that spin, hitting it long. 1-3. Again, that backhand deep return is picking up that error from John Maria racket. 4-2. Very clear. She knew that the ball was flying over the table. Look at that. Just moved away. Let that serve. That serve again. 4-2. Dasgupta. Powerful backhand from Dasgupta. And there it is. See that power on that. Not in the right position there. Maria. 2-6. Small little rally. Look at that. How quickly she, Dasgupta, moved to her left and made that inside out powerful one, forcing the error. 2-6. This was lovely forehand from Maria, picking up that point with a stamp of authority. Look at the countering that spin, and then see the power.
on the body of Dasgupta. That is where the return going wide. 3-6. Maria serving. That was not going to be easy because there was a lot of spin on that backhand from Maria. There it is. That is why Dasgupta was not able to return it properly. 6-4. Dasgupta. 7-4. Ball just missing the edge of the table there. The return of serve. There it is. 7-4. 3-point lead for Dasgupta of Chandigarh University. Very good serve. That is what is extracting the error. You see that it's curving away. Good serve. And that's 4-8. Maria serving. बिल्कुल सही 8-4 स्कोर है, 4 अंकों की बढ़त। और 5-8. इस पॉइंट के जरिए से अब जॉन मारिया मद्रास यूनिवर्सिटी की, और इस बार गलती हो गई वहां पर कौशिकी दासगुप्ता, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की डीप ब्लू में आप देख सकते स्क्रीन पर। ये देखिए कोशिश जरूर की थी मगर थोड़ी सी चूक हो गई उनसे सर्विस करते हुए, और इसका कोई जवाब नहीं। यहाँ पर जॉन मारिया के पास में अच्छी लो फास्ट टॉप स्पिन सर्विस। टेबल के काफी नजदीक से ये बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल भी समझ भी नहीं पाई और संभल भी नहीं पाई, और एक अंक और आगे जीत के अब 10-6 पर। 4 game points to close out the opening game as Maria is serving 6-10. Oh, look at the way that powerful forehand crosscourts from Dasgupta, picking up the error on the return. With this, the first game in going in favor of Chandigarh University. There, the last point there. So much of power on that forehand. In good position there. And that is Dasgupta and her coach having a word, winning the first game by 11-6. And that is Maria John from Madras University, and of course Dasgupta there. And look at the last point. In fact, it is a highlights of the game number 1. See how nicely slowing down the pace there. That is where the error comes from Maria. जैसा कि हम बता रहे हैं इस वक्त टेबल नंबर 1 पे दूसरे दिन का मैच नंबर 3 और गेम नंबर 1 अभी भी खत्म हुआ है 11-6। Second game. कौशिकी दासगुप्ता चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने ये पहला गेम बेस्ट ऑफ द 5 को जीत लिया है, पहला गेम। और जॉन मारिया जिन्होंने 6-11 से ये मैच खो दिया, और अब थोड़ा सा दबाव जॉन मारिया के ऊपर यूनिवर्सिटी मद्रास सर्विस करते हुए। एक बार फिर से इसको रिटर्न करने में उनको सफलता नहीं मिली, 1-1 की बराबरी पर। और अब सर्विस फॉर कौशिकी दासगुप्ता। दोनों खिलाड़ी टेबल के दोनों तरफ बहुत बढ़िया फुटवर्क वहां पर। जॉन मारिया, कौशिकी दासगुप्ता लगातार कोशिश करते हुए कि नेट से थोड़ा दूर रखा जाए उनको, और ये अपनी ही सर्विस पर रिटर्न नहीं कर पाई और एक अंक गवा दिया। तो 3-1 माफ कीजिएगा। सर्विस फॉर कौशिकी। अब यहाँ पर फिर एक गलती, यहाँ पर जॉन मारिया मद्रास यूनिवर्सिटी की, क्योंकि यह मुकाबला काफी अहम है मद्रास यूनिवर्सिटी के लिए, जॉन मारिया के लिए। उनको ये मैच जीतना ही होगा। दूसरी तरफ कौशिकी दासगुप्ता चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की चाहेगी कि एक गेम में लीड बनाने के बाद दूसरा गेम भी अगर वो जीतती है तो कोशिश तो यही हो रही है। आज का ये टेबल नंबर 1 पर मुकाबला नंबर 3, मैच नंबर 3 वोमेन्स राउंड 2 फोर्थ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023-24 का सीधा प्रसाद डीडी स्पोर्ट्स पर देख रहे हैं। 7
That's a very good service. A lot of spin on that return going into the net. It's down 2-7, or rather 7-2 now. Dasgupta serving. 2, Trying 8. to go for that backhand. Maria putting it into the net. Look at the last point. The backhand chopper is not good enough. Oh, small little rally, but a very nice one. But in the end, not able to close that forehand, hitting it long. Maria serving 2-9. A 9, lot of 3. spin on that serve on the backhand. Return went long. 9-3. Dasgupta. 10, It's the sense 3. of we always say that in the serve, you keep the opponent guessing. That sets up 7 game points. Oh, 11, she closes it 3. out with that forehand error Game coming in from favor of Maria. Chandigarh This University. game in favor of Dasgupta. 11-3, taking the first one at 11-6. Look at the last point there. Error from racket of Maria. Dasgupta really doing well, picking up points and then showing a bit of aggression as well. Not many unforced errors from her racket. That's what the score ultimately tells. On the picture frame, Maria John. And with the colleague there. This is the highlight of this particular game, the game number 2. और अब पहले 2 मैच लगातार जीतने के बाद कोशिश की Third दासगुप्ता game, डेफिनेटली मनोवैज्ञानिक University of Madras to serve. उनको लाभ जरूर मिलेगा, Love मगर all. दूसरी तरफ जॉन मारिया ने भी अभी तक का कुछ इतना खराब प्रदर्शन नहीं किया है. काफी प्रतिभावान खिलाड़ी है. Love 1. अपनी सर्विस पर एक अंक गंवाते हुए है. 0-1 और यहाँ पर 1 फिर से all. पहली बार कौशिकी दासगुप्ता की गेम नंबर 3 में उनसे एक अंक गंवाए. 1-1 की बराबरी पर सर्विस करती हुई डीप ब्लू पे. आप देखिए सर्विस पे कौशिकी दासगुप्ता 2-1. पहले 2 गेम जीत चुकी है. ये मैच नंबर 3, टेबल नंबर 1 दूसरे दिन का. और एक बार 1, फिर से 3. जरूरत से ज्यादा आक्रामक बनने की कोशिश. एक अंक गंवा दिया. 3-1 अभी भी 2 अंकों से आगे कौशिकी दासगुप्ता. टेबल के दोनों तरफ बाएं दाएं आगे पीछे, मगर अंत में I think it's a good work from Maria here, changing the angle perfectly, picking up that error. And now 4, trying to go for that inside 2. out, moving to her left and trying to create that inside out forehand, putting it into the net. There it is. Look at that. She moves in quickly but not able to control that inside out. 4-2 Dasgupta. Oh, that's miscue 1, totally. 2. Was in the right position, but look at that, playing a little bit early. There it is. That is why the ball just flying well over it. 5-2. And again, not closing the face of the racket in time, hitting it long. Will be down 2-6 Maria. 2-6 पर सर्विस करते हुए मारिया. हालांकि उनका जितना भी अनुभव है उनके पास में, उसका पूरा वो भरपूर प्रयोग करती हुई, मगर अभी तक उनको कोई विशेष सफलता नहीं मिली है. अभी तक भी 8, जो 2. दबाव है अभी भी उनको साफ झलक दिखाओ. 8-2 6 अंकों का फासला. ये गैप फिलअप करना काफी मुश्किल होगा. और जिस तरह का खेल का प्रदर्शन वो कर रही है, एक बार फिर 2. थोड़ा सा कैजुअल अप्रोच. और यहाँ पर 9-2 पहली बार 7 अंकों का की बढ़त यहाँ पर सर्विस करती हुई कौशिकी दासगुप्ता. 2 गेम पहले जीत चुके हैं, 11-6 11-3, और अभी 10-2 पर 1 अंक से दूर तीसरे गेम में. 8 game points straight away as Maria serves. Oh, there it is. Not able to control that forehand, and with that it is 11-2.
And it's Kaushiki Dasgupta wrapping up this particular match in straight games. 11-6, 11-3, 11-2. Thorough domination there. She controlled the short rallies very well, served well, and a few unforced errors coming from Maria's racket, and that's what the score line gets that clarified. 11-6, 11-3, 11-2. 3 straight games win for Dasgupta on the picture frame. Customary handshake with the teammates. And have a look at the highlights of the final game. That's the third game here. See, there's a tremendous forehand from Maria. Look at that. But can you imagine that kind of return from Dasgupta? Short little rally here and a bit anxious to close with the point. Maria putting it into the net. A few of those unforced errors trying to close out the point. And that actually should have been put away if you see that one. So this is how this particular match went on, and that is the highlights of the game number 3, which Dasgupta wrapped it up in 11-2. And see that backhand chop. Tremendous forehand here. That is what is picking up there. And thorough domination in this particular game by Dasgupta. That is how the game ended, and the match as well. 11-6, 11-3, 11-2. 3 straight games win for Kaushiki Dasgupta from Chandigarh against Madras University's Maria and C. John. So there she is. And the next match will get underway in the court number 1. As Chandigarh had wrapped it up in 3 straight matches, there is no need to play the reverse singles. The court number 1, we will have the rest of the matches in that will be in Group D for the round 2, and that will get underway a little later because they have got this later time for all those matches on their respective tables. But this match definitely finished off rather earlier than what expected perhaps, and Kaushiki Dasgupta of Chandigarh University getting the better of John Maria NC of University of Madras 11-6, 11-3. 11-2. That is what you are seeing highlights of this particular match. ये वो तीनों मुकाबलों की प्रमुख झलकियाँ जो आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। मद्रास यूनिवर्सिटी बनाम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बीच में ये मुकाबला हुआ अभी जो समाप्त हुआ है, जहां चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने और वहाँ 3-0 की आसान जीत दर्ज की चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। और यकीनन कुछ अच्छे शॉट्स हमने देखे, किस तरीके से त्रिशा गोगोई ने जो प्रदर्शन देखिए आपको नज़र आएगा जो उन्होंने प्रदर्शन किया। और ना सिर्फ त्रिशा ने बल्कि जो उनके साथ ही संपदा की बात करें या कौशिकी की बात करें, तीनों ने ही एक तरफा बना के रख दिया और लगातार 3 गेम में तीनों ने जीत दर्ज करके अपनी टीम को एक अच्छी और बहुत आसान जीत दिलाई। यकीनन इस प्रदर्शन के बाद उनके अगले दौर में पहुंचने की संभावनाएं पुख्त होगी और यहाँ से अब ज़रूर मद्रास यूनिवर्सिटी के लिए थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इसके बाद से जो लाइनअप हैं, उस्मानिया यूनिवर्सिटी बनाम मद्रास यूनिवर्सिटी, ये मुकाबला अब से थोड़ी देर में शुरू होगा और इसका सीधा प्रसारण आप तो डीडी स्पोर्ट्स पर देख सकते हैं। साथ ही साथ प्रसार भारती के यूट्यूब चैनल से भी आप जुड़कर इसका लुत्फ उठा सकते हैं।
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का ये चौथा संस्करण, जहां पर हम सीधा प्रसारण आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और इस मुकाबले के वो प्रमुख पल जो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, देखिए किस तरीके से अच्छे शॉट्स एक्सचेंज हुए, लेकिन जो एडवांटेज मिलना चाहिए था वो मिला नहीं। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास बिल्कुल भी उनके जो पैडलर हैं वो लय में नहीं नज़र आए, और एक तरफा अंदाज में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने इस मुकाबले को अपने नाम किया। कौशिकी दास गुप्ता तीसरे प्रतियोगी के तौर पर उतरी थी और उन्होंने भी जॉन मारिया हेंसी को सीधे सेटों में और बहुत एक तरफा अंदाज में 11-6, 11-3, 11-2 से परास्त किया। एक भी गेम जीतने का मौका नहीं मिल पाया यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास के पैडलर के लिए। एक अच्छे दिन की शुरुआत की है और यकीनन इसको जीत में तब्दील किया चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। अक्षय मेरे साथ मौजूद हैं। अक्षय, पहला मुकाबला ज़रूर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम रहा, लेकिन अब जो मुकाबले आने हैं उस पर ज़रूर हमारी नज़र रहेगी। लेकिन अगर आप देखें पिछले मुकाबले की, तो क्या बेहतर नज़र आया? क्या ज़्यादातर गलतियां हुई यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास की बात करें उनकी तरफ से, या चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो पैडलर थे वो ज़्यादा बेहतर खेल रहे थे, इस वजह से उन्होंने एक तरफा बना दिया इस मुकाबले को? Because we've been talking about the might of Chandigarh University, the best thing about their contingent is that the collection of players is from almost all over the country, and the fact that they have already, by the time they play university, they have enough experience, enough titles under their belt, that they have come into this 4th edition of Khelo India Youth Games as one of the prime contenders. आपको डीडी स्पोर्ट्स के जरिए सीधा प्रसारण देखने को मिल रहा है, जहां पर आप खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का लुत्फ उठा सकते हैं। और यकीनन एक दिलचस्प मुकाबले की उम्मीद हम कर सकते हैं। वरुणी जायसवाल जो कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी से आती हैं, जबकि अदमास यूनिवर्सिटी की तरफ से संचिता चैटर्जी, लाल रंग की पोशाक में नजर आएंगी वरुणी जायसवाल, जबकि संचिता चैटर्जी आपको गहरे नीले रंग की पोशाक में नजर आएंगी। दूसरा दौर का मुकाबला है ग्रुप बी का, और विमेन सेक्शन के अंदर ये मुकाबला खेला जा रहा है। बेस्ट ऑफ 5 के मुकाबले, जहां पर शुरुआती 3 अगर गेम में विजय मिलती है तो वहां से यकीनन कामयाबी उस टीम को जाएगी, उस यूनिवर्सिटी को जाएगी। ये आपकी स्क्रीन पर इस समय वार्म अप कर रही हैं वरुणी, और यकीनन उस्मानिया यूनिवर्सिटी की तरफ से जब आप वो प्रतिनिधित्व करेंगी तो आज कोशिश होगी कि एक अच्छी शुरुआत अपने यूनिवर्सिटी को दिलाई जाए। वरुणी जायसवाल बनाम संचिता चैटर्जी, मेरा नाम है विकास पांडे, और मेरे साथ इस मुकाबले पर नज़दीकी से नज़र रखने के लिए मौजूद हैं अक्षय मौर्य। अक्षय, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका, और यकीनन एक अच्छे मुकाबले की उम्मीद कर सकते हैं हम। Thank you, Vikas. Once again, welcome all the viewers after that tiny break. The Table 1 matches between Chandigarh University and Madras University got over a little quickly because obviously that tornado of
comprising Sampada, Trisha Gogoi and Kaushiki Dasgupta literally stormed through their initial matches and very low scoring matches, straightforward games. So but now in this match number 4 on table number 1, we are all set between Osmania University and Admas University as it's on the way. 1 love. Little mistake there as a Sanchita Chatterjee opened her account. 1 all. Lovely cross court from Sanchita Chatterjee there, Admas University. Brilliant forehand, classic textbook stuff from the girl. Sanchita Chatterjee has looked good in this initial few moments and straight away putting pressure on Varuni Jaiswal, as you can see, making that unforced error with that backhand. Good thing, a nice little spin from serve. Oh, little over-aggression. Little over-aggression there. Score stands at 3-1 as Varuni Jaiswal 5-2. Also in red jersey, it is Varuni Jaiswal from Osmania University serving there. 2-6. Because already it's good to see that Osmania University doing well, because Doordarshan also used to do a tournament called Robocon, in which engineers from engineering colleges used to participate, and Osmania University had its own learning curve. It wasn't one of the prime contenders, but they had their own journey as far as their sporting participation is concerned. And good to see Varuni Jaiswal leading from the front for Osmania University. Oh, look at that brilliant backhand there. Excellent angle. Already at 8-2, almost storming through game number 1, Vikas. बिल्कुल, और शुरुआत से जो दबाव बना के रखा है वो दबाव को मेंटेन करके रखा है. हालांकि कुछ ऐसे अनफोर्स्ड एरर से बचने की जरूरत है उन्हें, और जो दबाव बना के रखा है उसको मेंटेन रखना होगा. अच्छा रिटर्न का प्रयास था, लेकिन वो फोरहैंड रिटर्न जो है वाइड जाता हुआ थोड़ा सा, इसलिए थोड़ी सी वापसी संचिता के लिए भी. अदमास यूनिवर्सिटी की तरफ से संचिता ऐसे सर्व करती हुई. अच्छा लगाया था, लेकिन वो टेबल पे रखने की कोशिश जो थी, सेंटर ऑफ द टेबल, वहां वो जगह नहीं मिली, और इस वजह से वो एक प्रयास बेकार जाता हुआ. अच्छी वापसी संचिता की तरफ से, लेकिन मेरी नजर लगी, कहते हैं ना, कमेंटेटर्स कर्स, हर वहीं देखने को मिला. जैसे ही मैंने बोला कि 2-3 अच्छे अंक उन्होंने हासिल किए, वैसे ही एक अंक गंवाया यहाँ पर संचिता ने. साफ कर रही है. अच्छा किस्मत का साथ, और नेट से डिफ्लेक्ट होने के बाद जो वो स्पिन मिला, उसका पूरा फायदा मिलता हुआ. देखिए, और ऐसा लगा एक पल के लिए कि वो जो साइड स्पिन है वो एक अच्छी क्वालिटी को देखने को मिली, इस वजह से वो अंक मिला था. यहाँ पर नेट पर एक गलती, और फिर से वापसी का मौका मिलता हुआ. 2 अंकों का फासला अब सिर्फ अक्षय. Absolutely, because and what a comeback Sanchita has made, and especially that backhand, that winner in the last rally was not a deflection from the net. It was a heavily loaded spin on that backhand from her. A beautiful execution. I must say that in this game number 1, it was the shot of the game. But such unforced errors hitting into the net there. Now with the 2 game points, Varuni Jaiswal will be breathing a sigh of relief there. Now she has got 2 game points. Varuni Jaiswal serves.
Oh, another unforced red, a rare mistake from the Osmania girl. She wouldn't like that, not letting go that advantage. It's very crucial to hold on to your nerves there, Varuni Jaiswal from Osmania University. Above high line, serve there. And it is 10-all. Those nerves can actually change the game at any moment. The tables have almost turned. Oh, nice soft hands there. But another mistake there from Sanchita Chatterjee gives a little advantage. The deuce has turned into advantage now at 11-10. Oh, that's it. That's it. It is all over in this game number 1 at 12-10. It was Sanchita Chatterjee did show some signs of brilliance. Check it out in the replays, the highlights of game number 1 as she sealed after the deuce. Vikas, I think Sanchita Chatterjee got a little overconscious. Look at that in Team Osmania girl in red jersey having a word with her contingent, and even though she's won the opening game in this match, see the highlights there, how this game panned out with beautiful backhand there from Varuni Jaiswal. But I would like to see that shot, that heavily loaded spin on that backhand from Sanchita Chatterjee. In spite of the fact that she's lost the game, that was the shot of the game in this opening game. That is Sanchita Chatterjee on your TV screen in blue jersey, having a word with her coach. And she shouldn't be too disappointed because, I mean, it's a close call. 12-10 is not that bad a game as far as the opening of this match is concerned between Osmania and Adamdas. बिल्कुल, और यकीनन एक दिलचस्प पहला गेम देखने को मिला, उसके बाद से जरूर कोशिश होगी अब वापसी की जाए। वरुणी जायसवाल हैदराबाद से हैं और इस समय सर्व करती हुई शुरुआती गलती, ऐसी गलती वो बिल्कुल करना नहीं चाहेंगी। शुरुआती लम्हों में आप ऐसी गलती आप अपने विरोधी के लिए एक अवसर देती हैं। फिर से वही गलती, ज्यादा उत्साहित होकर दो गलतियां ऐसी की जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। देखिए किस तरीके से वो जो फोरहैंड लगाने का प्रयास था वो वाइड जाता हुआ, और थोड़ा सा लक का साथ यहाँ पर मिलता हुआ संचिता चैटर्जी को। किस्मत यहाँ पक्ष में, आपको सर्विस करनी पड़ेगी। थोड़ा सा दिए गए हैं यहाँ पर। तीन एक से समय लीड कर रही हैं संचिता इस दूसरे गेम के अंदर। जायसवाल यहाँ पर किस्मत, थोड़ा मिलना चाहिए था किस्मत का साथ वरुणी को, लेकिन किस्मत इस गेम के अंदर कम से कम संचिता चैटर्जी के साथ चल रही है और 4-1 की लीड इस बात को दर्शा भी रही है। टच और फिर से किस्मत का खेल चल रहा है अक्षय। कम से कम इस 5 अंक में से आप 3 अंक ऐसे हैं जिसमें किस्मत ने साथ दिया है और संचिता ने वो अपने नाम किए हैं, लेकिन इस बार किस्मत नहीं, अपनी ताकत दिखाई और फोरहैंड पर क्या जबरदस्त स्मैश लगाया और क्रॉस कोर्ट पर वो अंक हासिल किया अपने लिए। संचिता बेहतर नजर आ रही हैं पहले गेम के बाद, और इधर से दूसरी तरफ से वरुणी जायसवाल लगातार गलतियां कर रही हैं, संभलने की जरूरत। पहला गेम उन्होंने जरूर अपने नाम किया था, लेकिन अब ये गलतियां, ऐसी नेट पे गलतियां आपको भारी पड़ सकती हैं। 2-7. What a comeback in this game number 2, literally dominating Sanchita Chatterjee, and a good contest in the making as far as this match between Osmania and Adamdas University is concerned. Varuni Jaiswal got years and years of experience, so has Sanchita. Varuni Jaiswal, I was just talking about her to her friends and colleagues that she's been called a giant slayer by her coaches from very, very early in her career. Even when she was a sub-junior player at the age of 14, she's been a sub-junior champion, she's been a cadet champion, and now representing here Osmania University at the 4th edition of Khelo India University Games. So she's a big, bright prospect.
But Sanchita Chatterjee, what a comeback she has made in this game, leading this game by 4 points. At 4-8, it will be Varuni who will be serving. 5-8. Anxiousness if she could control Sanchita Chatterjee. She's very, very talented player. She knows that Varuni is a tough fighter. She's renowned. She's known amongst the circuit. And when you realize you acknowledge the strength of your opponents, it's always a good sign. It's just that the fact that she's lost the opening game, so Sanchita is getting a bit jittery there. That's on your TV screen. In red jerseys, Varuni Jaiswal from Osmania University. Very, very experienced player. Her focus and discipline is renowned in her circle. Her coaches, Ajay Kumar Dagra, and people have vouched for her discipline. She's a very, very committed player. Sanchita realizes that she's up against a tough competitor. And look at that, already the margin has narrowed down, and now it is 8-all in no time. So this is what I was talking about, that she's called a giant slayer. Varuni Jaiswal from Osmania University in that red jersey. Always very intimidating to play against a tough competitor. But Sanchita will have to pull her socks. And look at that beautiful forehand, brilliant execution. A classic textbook stuff from Varuni Jaiswal. Check it out in the replay. Oh my God. Even though she was well within the reach, Sanchita Chatterjee, but the force and speed with which it was hit, it was very difficult for her to control that shot. Even if she had got some touch on the ball, it would have deflected off the table because. 8-10. बिल्कुल, और देखिए एक अच्छे खासे अंतर से पिछड़ रही थी दूसरे गेम के अंदर, और अब इस समय गेम पॉइंट पर हैं वो. उनके पास 2 मौके होंगे. थोड़ा सा उत्साह 9-10. ज्यादा दिखाया और इस वजह से वो नेट पे गलती होती हुई. फोरहैंड पे वो रिटर्न जाके नेट से टकराया था, जिसकी वजह से वरुण जायसवाल 9-10. अभी भी एक मौका उनके पास, एक गेम पॉइंट. और 11. क्या कमाल का गेम घटाई. Osmania काफी University. अच्छे खासे मार्जिन से शुरुआत से ही पिछड़ रही थी, लेकिन उसके बाद से देखिए दूसरे गेम को भी अपने नाम किया है 12-10, और उसके बाद से 11-9 से दूसरा गेम अपने नाम किया. संचिता चैटर्जी, कमाल का प्रदर्शन रहा उनका दूसरे गेम के अंदर, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद वो वरुणी जायसवाल की स्पीड को मैच नहीं कर पाई. वैसे मैं सोच रहा हूँ अक्षय, ये क्या मंत्रणा कर रही होंगी. LLB की स्टूडेंट हैं दूसरे ईयर में, और उनको क्या सलाह की जरूरत हो रही होगी कोच से. कानूनी सलाह तो मांग नहीं रही होंगी. That's an interesting tidbit that as a law student, she is very, very judicial as far as her execution of shots and her energy conservation is concerned. She's a big player and she moves out swiftly. So it's a deadly combination, as they say. I remember watching one of the Australian Opens early in 2000 when Martina Hingis was playing against Emilio Morismo, and the commentator described Martina Hingis as a player, a chess player in tennis attire. So this is a future advocate, a lawyer, a barrister, whatever you want to call it, Justice Jaiswal, but currently she is in her table tennis attire and she is doing extremely, extremely well for her university, that is Osmania. It is the first match between these two girls, which will be followed by Bhavitha Nagulpalli and Nilishma Sarkar subsequently for their universities. Adamas But University to serve. after two games, coming into game number 3, this is the do or die situation for Sanchita Chatterjee. She has to win this game if she wants to keep the chances alive of her university. And there will be opening, there will be windows like that if Varuni Jaiswal makes those mistakes. Check it out, going for a forceful backhand there, but the height was a little too much on her upper side. Another beautiful forehand now down the sidelines. Beautiful execution, but just that one not hitting the edge of the table is what's been the problem in the last 2 points. Varuni Jaiswal not being able to control that. Much deeper rallies there,
And that little spin on the ball from Varuni Jaiswal compelled Sanchita Chatterjee to connect it a little early. She was a little early into her backhand and resulting it in dropping off the table. Oh, good moment there, but a great anticipation from Sanchita Chatterjee. Look at that for anticipation, man. Great understanding. She lobbed it high. Check it out in the replay. She lobbed it high. We'll have a look at that replay in a short while from now, but that was a very, very interesting rally. She pushed Varuni Jaiswal away from the table, anticipating that it will be a long, heavy loaded forehand, but instead of that, it was almost like a slash, what they call chopping under the ball and dropping it close by the net. Good execution by Sanchita Chatterjee, even though she's lost 2 games because but she's looked good and she's just been that bit unlucky. Otherwise, she is putting up a good fight up against a champion like Varuni Jaiswal. यकीनन अगर पिछले दोनों गेम की बात करें तो मार्जिन जो रहा है 2 और 3 अंकों का रहा है। इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कड़ी टक्कर दे रही हैं संचिता चैटर्जी और थोड़ी सी किस्मत और चाहिए उन्हें और वो वापसी कर सकती हैं। लीड पर हैं और यकीनन ऐसी गलतियां जब सामने से होगी तो आपका मनोबल और बढ़ेगा और अब जो फासला है एक बार फिर से 4 अंकों का हो गया है। दूसरे गेम के अंदर भी हमने देखा था कि एक समय अच्छी लीड बना के रखी थी संचिता चैटर्जी ने, लेकिन उसके बाद कुछ अच्छे अंक बटोर कर वापसी की थी वरुणी जायसवाल ने। इस बार क्या कमाल का वो रिटर्न था, क्या कमाल का वो चॉप किया और सीधे उस साइड स्पिन होती हुई गई थी। देखिए कोई मौका था नहीं, ऐसा लगा कि स्लाइड किया थोड़ा सा और इस वजह से वो कनेक्ट नहीं कर पाई पैडल को। फिर से एक बार नेट पर किस्मत जरूर साथ दे रही है संचिता चैटर्जी का, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लगातार 2 अच्छे किस्मत का साथ लेकर एक बार फिर से वापसी की है। अब 2 अंक दूर हैं सिर्फ लेट और फिर से दोबारा आपको सर्विस करनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा समय लिया नहीं वापसी करने में और एक बार फिर से एक खराब शॉट और इसकी वजह से अब 8 गेम पॉइंट, यानी पूरा मौका है वापसी करने का। और वापसी जिस लिहाज से की है वैसा लगता है कि एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। 11-2 के अंतर से बड़ी आसानी के साथ तीसरा गेम अपने नाम किया है संचिता चैटर्जी ने। अदमास यूनिवर्सिटी की संचिता चैटर्जी आखिरकार वो डेडलॉक तोड़ने में कामयाब रहीं और 2 नज़दीकी गेम के बाद अब आखिरकार उन्होंने तीसरे में जीत दर्ज की है। बेस्ट ऑफ 5 में जो पहले 3 गेम जीतता है वो विजेता बनता है टेबल टेनिस के अंदर। अगर झलकियों पर नजर डालें तो देखिए किस तरीके से शुरुआत से वो जो गलतियां हुई उस्मानिया यूनिवर्सिटी की वरुणी जायसवाल की तरफ से उसका पूरा फायदा उठाया और जब वो ब्लॉक आया तो वो भी वाइड गिरा था, लेकिन पूरा समय लिया वरुणी जायसवाल। इतना समय ले नहीं सकती आप, इतनी गलतियां जब आपकी तरफ से होंगी। कुछ अच्छी रैलीज देखने को मिली और जब लंबी रैली चली तो वहां वरुणी जायसवाल का अनुभव काम आया। आपकी स्क्रीन पर वरुणी जायसवाल उस्मानिया यूनिवर्सिटी की खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के अंदर टेबल टेनिस में वेमेंस टीम ग्रुप डी का ये मुकाबला दूसरे दौर का मुकाबला है और अब चौथे गेम में हम पहुंचे हैं क्योंकि शुरुआती 2 गेम वरुणी जायसवाल ने अपने नाम किया था, उसके बाद से तीसरे गेम को संचिता चैटर्जी ने करते अंदाज में अपने नाम किया और अब सर्विस करेंगी वरुणी जायसवाल। सर्विस अच्छा था वहां पर और यकीनन दोनों तरफ से अगर मैं देखूं ज़्यादातर गलतियां जो एग्रेशन में की हैं वरुणी जायसवाल ने वो भारी पड़ी हैं और यही वजह है कि तीसरे गेम में काफ़ी पिछड़ गई वरुणी जायसवाल। तो इस बार नेट पर गलती हुई, इस बार रिटर्न जो संचिता चैटर्जी का था वो जाके नेट से टकराया और इस वजह से वापसी का मौका मिलता हुआ वरुणी जायसवाल को।
you know what? I think it's a good strategy as far as Varuni Jaiswal is concerned. That she did not really waste much time on that. She realized somewhere halfway in the third game that it will be too much waste of an energy to make a game out of it, and she just has come out with a much better plan in game number 4. Varuni Jaiswal, look at that. Unfortunately, that forehand hitting the top of the net. That deflection falling off the table is obviously not what she had planned for, but at 2-2 it is still evenly balanced for game number 4. Oh, look at that beautiful spin on that surface. That backhand spin. And she's good with serve also. She's a delightful player, Varuni Jaiswal for Osmania University. Nice on that occasion. Sanchita Chatterjee loads so much of spin on that return and controlling that rally entirely. Sanchita Chatterjee leveling the score immediately after 3-3. And obviously after having won the last game, game number 3, Sanchita Chatterjee is feeling much better and a lot more confident, and she's not afraid of taking her chances now. Good serve. That even though she lost out that point, Sanchita Chatterjee, but I also sense a bit of hesitation as far as Varuni Jaiswal is concerned. She's not literally going all out with her forehand and controlling her intentions a little bit. Look at that, she's trying to load those forehands with spin instead of going all out for a strong drive or a smash across the table like she's done in the earlier 2 games with us. यकीनन और एक बार मोमेंटम शिफ्ट हुआ तो फिर बहुत ज़्यादा देर लगेगी नहीं, जो अनुभव वो रखती हैं और एग्रेशन में तो कोई कमी उनको दिखने को मिली नहीं है, लेकिन हालांकि ये असहज गलतियां जो नेट पर उनकी तरफ से देखने को हमें मिली हैं वो भारी पड़ सकती हैं। देखिए एग्रेशन में स्मैश अच्छे आते हैं, फोरहैंड पे अच्छा खेल रही हैं, लेकिन जब भी वो बैकहैंड पर रिटर्न करने के लिए जाती हैं तो वो जाके नेट से टकराती है। इस बार अच्छा, इस बार जगह मिली और उसका पूरा इस्तेमाल किया, साइड स्पिन से बीट किया और देखिए बिल्कुल रीच में थी नहीं जिस तरीके का वो अटेम्प्ट आया था संचिता चैटर्जी के लिए। Also the fact that she made Sanchita Chatterjee move around the table, creating that space at will. But Sanchita Chatterjee is looking exceptionally good in this game number 4, because after having won that game number 3, she is playing with a lot more freedom. Another strong forehand from Varuni Jaiswal. Even though Sanchita had connected it, look at that, good connection there, but the control wasn't there from Sanchita Chatterjee, and lopping it outside the table at 7-5, that crucial junction of any game, because at 7-5, Varuni Jaiswal has made a little unforced error, popping it a little too high, and that gives one more point to Sanchita Chatterjee. So it's been neck to neck. It's been really neck to neck, and the fact that Sanchita Chatterjee won that game with a solid margin at 11-2 is obviously playing on Varuni's mind, because she won those opening 2 games with a very, very close margin. It was a closely fought 2 games, but in this game number 4 at neck to neck 7-all, it is anybody's game. Varuni Jaiswal and Sanchita Chatterjee as Sanchita serves. Good flat serve there. See that before, and I'm talking, oh beautiful, it's almost like tasting your own medicine. This is what Varuni has been doing to Sanchita, but this time Sanchita opens up the space for herself and creating that angle, playing inside out, beautiful shot across the table, brilliantly executed by Sanchita Chatterjee. Now at that marginal lead for Sanchita Chatterjee, but the good thing is that the service is with her, and if she can hold on to her serve. Beautiful backhand, sharp, almost onto the table. This is what I like about this Osmania player, Varuni Jaiswal, that she's calm as a cucumber. She never loses her cool, and there's not much shouts and shrieks from her also. Very calm customer, Varuni Jaiswal, and nice serve on that occasion. A lot of spin on that serve, cross the table. Deceiving Sanchita on that occasion, and getting one more point in her kitty. At 9-8, it is Varuni's service. Nice
missed on that service as well. Oh, brilliant! Brilliant stuff. Look at that, Varuni Jaiswal. Lot of spin in the initial couple of shots there, but just when she got the length right, she went all out. And now with the two game points here, Varuni Jaiswal, it is Sanchita serve. Let's see, and she goes for that classic forehand and wraps it up, and it is all over for Sanchita Chatterjee in this fourth game. So yes, it was a closely fought match. Went to the fourth game after having lost 2 games from 12-10 and 11-9. Sanchita made a good comeback, a solid comeback in the third game with a solid margin of 11-2. But in the end, it is Varuni Jaiswal. Mind you, what a brilliant talent she is, and how beautifully executed. It was a delight to watch this girl go from game to game, never losing her cool. Check it out in the highlights, how smooth she looks. It's almost like she's effortless, making the entire table tennis look so easy. So almost like the hallmark of a great player, that you make things look really, really easy. And with that, Varuni Jaiswal has opened the account for Osmania University. And now Bhavita Nagalpalli of Osmania University will be taking on Lishima Sarkar in the next match to keep the hopes of Osmania high and flying. And to take you through the proceedings in the commentary box, it will be Anu Sharma along with the classic Shri. धन्यवाद। जैसा कि हमने देखा कि आज अब मैच नंबर 5 डे 2 टेबल 1 पर अभी शुरुआत होने वाली है, और ये भी ओस्मानिया और अदमास यूनिवर्सिटी के बीच में होगा। ओस्मानिया की तरफ से भविता नगुलापाली और दूसरी तरफ नीलिशा शर्कर। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पे एम्पायर 1 केत्री महेंद्र सिंह मणिपुर की, और दूसरी तरफ मिताली दत्ता दास आसाम की एम्पायर नंबर 2 है। और ये देख सकते हैं रेड के अंदर में बबीता नगुलापाली 235 जर्सी नंबर, और ये मैच नंबर 5 है दूसरे दिन का टेबल नंबर 1 पे। और ये वोमेन टीम का ग्रुप डी का राउंड 2। और अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पे नीलिशा सरकार 205 नंबर जर्सी, और डीप ब्लू फिर से एक बार बबीता नगुलापल्ली 235 नंबर जर्सी। फेसिंग द कैमरा इज बबीता, एंड नाउ ऑन स्क्रीन नीलिशा सरकार, दोनों खिलाड़ी। और एम्पायर 1 के महेंद्र सिंह ऑफ मणिपुर। जैसा कि एक औपचारिक होता है दोनों खिलाड़ियों से, जो एम्पायर 1 है कि महेंद्र सिंह मणिपुर के, ऑन द स्क्रीन आप देखिए नीलिशा सरकार अदमास यूनिवर्सिटी वर्सेस ओस्मानिया यूनिवर्सिटी के बबीता नगुलापल्ली डी ब्लू में। और दोनों खिलाड़ी अपने अपने वोमेन टीम डी राउंड 2 और दूसरे दिन का खेल जिसका आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं डीडी स्पोर्ट्स पर। तरुण नामफू स्टेडियम साजिवल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गुवाहाटी से सीधा प्रसारण। और दूसरा दिन चौथा एडिशन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 अष्टलक्ष्मी, जिसमें असम के अलावा बाकी 5 राज्य भी इसको आयोजित कर रहे हैं। और 20 गेम्स इस टूर्नामेंट में स्पोर्ट्स डिसिप्लिन्स हैं। और जैसा कि हर वक्त होता है, स्क्रीन पर आप देखिए बबीता नगुलापल्ली रेड जर्सी पे ओस्मानिया यूनिवर्सिटी की वार्म अप करती हुई। दूसरी तरफ ऑन द स्क्रीन फेसिंग द कैमरा इज नीलिशा सरकार नीले रंग की डीप ब्लू जर्सी पर 205 नंबर जर्सी। और ये होगा 5वां मुकाबला दूसरे दिन का, और दूसरा मुकाबला ग्रुप डी राउंड 2 का वोमेन टीम। पहला अदामास ने जीता, और दूसरा में क्या होगा हमारे साथी कमेंटेटर सीनियर कमेंटेटर श्रीनिवासन अंग्रेजी में आपको बताएंगे। Thank you, Anil. And this is the match number 2. Osmania University taking on Adamas University.
And we have in the red just this is 205. That is from Adamas University, Nishima. Babita. Nagila Palli from Osmania University taking on from Adamas University, Nilishma Sarkar. In the blue is Adamas University's Nilishma Sarkar taking on Babita from Osmania University. In red, there she is, jersey number 235 from Osmania University, that is Babita Nagalapalli, and taking on from Osmania University, jersey number 205, Nishima Sarkar. It's all set ready here. We are covering live on the table number 1 of this lovely indoor stadium. Start. Second match, Osmania University to serve. Love all. I took history. You took history? No, I specifically said the second time. This is the match number 2, the Osmania University taking on Adamas University. Babita Nagalapalli, 235 from Osmania. They're taking on Second match, Nilishma Sarkar of Adamas University. There you are. love all. Nilishma serving. Love all. निलिश्मा ने 1-0 हाथों खोला और फिर से दोनों One खिलाड़ी all. निलिश्मा और भविता, मालूम है कि पहला गेम किसी भी मैच का One, महत्वपूर्ण two. होता है। पहले कुछ अंक काफी महत्वपूर्ण है दोनों ही खिलाड़ियों के लिए। टेबल के काफी नजदीक से दोनों खेलते हुए दोनों तरफ टेबल के बाएं दाएं, और ये फोरहैंड One. ड्राइव मारने की कोशिश करते मारा सीधा नेट पे, और अब स्कोर हो गया है 2-1 अदालत यूनिवर्सिटी की निलिश्मा सरकार। और यहाँ पर फिर उनसे गलती हुई, थोड़ा सा कैजुअल अप्रोच, बिना उनका फुटवर्क बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल टेबल के बीच में से वो खेल रही है और पैरों का इस्तेमाल सर्विस करते हुए 3-2 पे। डिफेंसिव अप्रोच है दोनों खिलाड़ियों का। All. Trying to go for that backhand push. That is what is error there. 3-all opening game. Osmania serving. Lot of spin on that serve. That is why the return going long. 4-3. Babita. 4 all. That is a very good serve. But see that power on the backhand from Nilishma. Trying to close out that rally, going on the forehand, hitting it wide 5-4. from Osmania University. Babita, look at that. She was in the right position but didn't control that forehand. Very nicely changing the angles is Nilishma Sarkar, picking up that error from Babita. 5. Oh, interesting contest, getting pretty close contest. Look at that last point. Look at the return of serve. But that was also well anticipated by Babita. This time thinking was good and trying to go for that forehand down the line. 7. Babita hitting it wide. Good thinking, but execution was not in full control. Now it is Nilishma serving 7-5. 8. Weak return and a lovely forehand from Nilishma, taking it to 8-5 with her own serve.
Good spun serve. Look at back and chop. Going on to the forehand now. Again a good. That is just missing the edge of the table from Nilishma. Have a look at that again. And in fact, it touched the racket of Bhavita, but it was outside the table. 6-8. Actually, this point should have been taken by Osmania University, but not able to control the back and cross score. There it is, just missing the side. 10-6. Good point here again. Both the players a bit anxious to close it out, and that is 4 game points for Nilishma. Just trying to close it out fast, hitting it long. She knows that. 7. That is why feeling of a little bit of a disappointment on her face. Still 3 game points in the opening game. Nilishma Sarkar of Adamas University is serving there. Good backhand serve. Oh, what a powerful inside out from Bhavita there. Still serving, still 2 game points. Now serving 8-10 from Osmania University. Bhavita Nagalapalli as she prepares to serve on the backhand spun serve. Good. That was a tremendous spin on that as she is on the backhand, and the error now coming from Osmania University. That is Bhavita with that 11-8 with that score. Adamas University wrapping up the first game. बिल्कुल सही 3 अंक लेकिन मुफ्त में निलिश्मा सरकार को मिले और उसकी मेहरबानी बबीता नगलापल्ली रेड टी-शर्ट ओस्मानिया की तरफ से आप देख सकते हैं। और जैसा कि आप ये देखिए किस तरह से ये पहला गेम दोनों अच्छी रैली होने के बावजूद फोरहैंड बैकहैंड टेबल के दोनों तरफ, मगर अंत में सफलता निलिश्मा सरकार को। एक बार फिर से मगर ये रिटर्न नहीं करते, अच्छी सर्विस, लेकिन फोरहैंड बबीता नगलापल्ली ओस्मानिया यूनिवर्सिटी का काफ़ी उनकी ताकत है, ये उनका स्ट्रेंथ है ये। और ये स्क्रीन पे आप देखिए अदामस यूनिवर्सिटी की निलिश्मा सरकार जिन्होंने गेम नंबर 1 जीत लिया है 11-8 से, और ज़्यादा फर्क नहीं है, 3 अंकों का फासला है। मगर ये दूसरा मुकाबला काफ़ी रोचक होना भी चाहिए, क्योंकि अब दबाव थोड़ा सा ओस्मानिया यूनिवर्सिटी के बबीता नगलापल्ली के ऊपर है। और स्क्रीन पर आप देखिए निलिश्मा सरकार सर्विस करती हुई बबीता नगलापल्ली। That is a very good return of serve, back and chop. Very nicely changing the angle here. And it's it's absolutely an enforced error on the backhand from Nilishma, conceding that point there. Have a look at that. That is a very good. See here, trying to close out, but not really closing the racket early. Again, because of the spin, heavy top spin, the return going outside the table long. 2-all. Bhavita Nagalapalli from Osmania University getting that slender lead. Because of this point, it is more of an unforced error from Nilishma. Again, just hurrying it up and closing the face of the racket early when she's going on the backhand. There it is. Seeing that opponent was much behind the table, tried to close it out with that angle, putting it into the net. Backhand slice going into the net from Bhavita there. 3-4 Nilishma. Oh, what a return of serve. Very nice countered on the spin serve. That is where the error coming from Nilishma's racket. 5-3 Bhavita. Osmania University. Oh, what a return. That is what was actually setting up that point. Probably Osmania's
Bhavita didn't anticipate that kind of a return. That is where she weakened that short rally. Look at this, and that gave us tremendous time. And also made it a perfect angle. See now, this time Nilishma trying to see an opportunity, trying to go on the backhand, trying to put heavily on the forehand of the opponent, but putting it into the net. Seeing that opportunity as Osmania University girl was very much on the backhand side. Oh, tremendous power from Bhavita on the occasion. And not really anticipating that powerful return. 7. There it is, see the power. That is where Nilishma was not ready to return. 4-7. There is a very deep return, loopy return from Bhavita. Teresa. Just keeping the ball in play. There it is. This is a very crucial point. You look at the last point here. Ah, the net card. Lucky. So it's 5-8. दूसरे गेम में काफ़ी अच्छा जो खेल देखने को मिल रहा है बबीता नगुलापल्ली उस्मानिया यूनिवर्सिटी का नीलिश्मा शर्कर अदामस यूनिवर्सिटी की सर्विस करते हुए। जैसा कि हमने देखा है दोनों खिलाड़ियों के खेलों में जो अंतर है, फोर हैंड ड्राइव जो है वो बबीता का ताकत है, लेकिन बैक हैंड ड्राइव उसमें नीलिश्मा सरकार थोड़ी सी ऊपर है सर्विस करते हुए सरकार। और इस बार अपनी ही सर्विस पर रिटर्न नहीं कर पाई और स्कोर हो गया है 10-6। Full credit on that return of serve. See that bat, the racket angle. That's what made it difficult. Oh, there it is. 11-6 game goes to Osmania. 11-6. So that's a very good give a lot of confidence. पहला मैच हारने के बाद बबीता नगुलापल्ली उस्मानिया यूनिवर्सिटी के बहुत बढ़िया कमबैक किया। दूसरे गेम में 11-6 नीलिश्मा सरकार को अदामस यूनिवर्सिटी को उन्होंने हराया और इस तरह से दोनों खिलाड़ी पहले दो गेम में 1-1 की बराबरी पे। और अब तीसरे मुकाबले में जाने से पहले मैं मेरे सीनियर कमेंटेटर श्रीनिवासन जी से जानना चाहता हूं कि दोनों के खेलों में क्या फर्क है। Yes, you are watching the highlights of this game, which was wrapped up at 11-6 by Bhavita. There you can see a good rally going on. See the relentless attack she is trying to make, but making that unforced error also Bhavita. And good return. See that backhand chop. Powerful forehand there. That is what I was about to tell you, Anil, that between the two, if you see, Osmania University girl, Bhavita was ready to go on the attack. That made a slight difference. That gave her, she was very confident and went through that. And I think that made the difference. एंटिसिपेशन भी नीलिश्मा का बिल्कुल ना के बराबर ही है। काफ़ी खाली जगह छोड़ देती है तो काफ़ी आसान हो जाता है बबीता के लिए फोरहैंड स्मैश करने के लिए। I would say she didn't give that space. The opponent created the door by keeping the placement perfect. बिल्कुल सही। लेकिन फिर भी तारीफ करनी पड़ जो दोनों खिलाड़ियों की कि 1-1 की बराबरी पर तीसरे गेम की शुरुआत होने जा रही है सर्विस फॉर नीलिश्मा शर्मा। Lovely rally. But in the end, who called Nilishma was a bit unlucky there on the net caught. Intention was good, but net caught doesn't help her. Look at that. Good rally it was. And then trying to go for the back and chop into the net. Oh, that was a powerful, in good position there from Osmania University. Bhavita coming with that powerful forehand. We have got 4 tables here in this magnificent indoor stadium. When you hear some cheers, that means it is coming up from the other tables. Good rally. Oh, good position. Perfect placement from Nilishma.
seeing that open part of the forehand side, putting it deep as well. Have a look at that. Tremendous power on that. That is where a desperate attempt from Bhavita is of no use. This one was a bit unforced. Wanted to close up the point early, perhaps Bhavita. Nilishma serving. Let reserve. There was a heavy top spin on that, which is what expecting the error from Bhavita. 4-2. Very good serve. When there is a lot of backspin on the serve, the return going long. 5-2. Yet again, that backhand letting Nilishma down because she's not closing the face of the paddle in time. Have a look at that. Just missing the edge of the table. That was a powerful intention to go for that forehand. But overheating. Down 2-7. Oh, that was a very good thinking. Seeing that open forehand side court. Look at that. Nilishma red card there. And before little shade late, Bhavita to go for the forehand and hitting it long. That backhand push going into the net from Nilishma. 8-3. Look at that backhand push. Oh, that ball. This is what happens when there's a little bit of a backspin. The ball comes a little slow there. And then overheating from the opponent. 4-8. Again, just little bit of a pressure. I think a little bit of nerves for Nilishma there. Serving at 4-9. Missing out some points. And oh, she makes it up. This should give her a lot of confidence. Return was a bit weak and then she was in the right position. Look at that good serve. A weak return and how quickly Nilishma moved and came with that forehand cross-court winner. Lovely rally. Oh, look at that inside out from Bhavita there. That is setting up 5 game points. Anil, there you are. दूसरे मैच में खेल में जो बदलाव देखा और तीसरे मैच में जिस तरह का प्रदर्शन किया है यहाँ पे भविता नगुलापल्ली होशपाने यूनिवर्सिटी की लाजवाब शानदार और बेहतरीन उनका ये जो प्रदर्शन लगातार दूसरा तीसरा गेम जीतने के बाद अपनी कहानी खुद बताता है कि उन्होंने किस तरह का प्रदर्शन किया है। ये मैच नंबर 5 है दूसरे दिन का टेबल नंबर 1 पर। आज दूसरा दिन है चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020-23 जो इस वक्त आप डीडी स्पोर्ट्स पर लाइव देख रहे हैं। तरुण राम सुकेंद्र स्टेडियम साजीबर व स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गुवाहाटी से। मेरे साथ मेरे सीनियर कमेंटेटर श्रीनिवासन जी जिन्होंने काफ़ी अच्छा खासा उनका अनुभव है बहुत सारे खेलों के अंदर में, मगर आज टेबल टेनिस में उन्होंने जिस तरह से टेक्निकलिटीज़ जो बारीकियां खेल की बताई है वो काफ़ी सीखने लायक है और ये मेरा सौभाग्य है कि उनके साथ मेरे को मौका मिला अवसर मिला और I have learned a lot from him. What is important, we are watching a very good close contest between all youngsters from the university level and see the quality of the game. That makes it a great pleasure for us to give the commentary. And for the players, great opportunity to showcase their talents and same time how to fine tune their talents. Winning is good, but if you lose, still you learn something out of it. दोनों खिलाड़ी काफ़ी बेहतरीन काफ़ी उम्दा प्रदर्शन और जैसा कि हमने देखा बेस्ट ऑफ द 5 में अब तक के 3 गेम हो चुके हैं। पहला गेम ओस्मानिया यूनिवर्सिटी माफ कीजिएगा अदम यूनिवर्सिटी ने जीता, मगर दूसरा और तीसरे में बहुत बढ़िया कमबैक किया ओस्मानिया यूनिवर्सिटी की ये भविता नगुलापल्ली सर्विस करते हुए। देखिए रिप्ले के अंदर में एक बार फिर से 2-0 की बढ़त यहाँ पर
उस्मानिया यूनिवर्सिटी की तो 0 सेकंड लगातार 2 अंक आदित्य 3-0 से आगे. Look at the last point here. And she's hurrying it up. In fact, I believe that she's not keeping well. So that is where she's trying to close out the points early and not also quickly moving. See, she's in a hurry to close it out. And the right thinking to do. When you are not all that keeping well, try to close out the point. Don't go for long rallies. इसमें तो गलती तो हो सकता है ना. बिल्कुल सही. आपकी तबीयत पर किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं होता, मगर फिर भी सबसे अच्छी बात है यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में जो पार्टिसिपेशन है खिलाड़ियों का, और सारे खिलाड़ी यहाँ पर ये सारे स्टेट प्लेयर्स अपने अपनी टीम की तरफ से, मगर यूनिवर्सिटी की तरफ से वो अपने अलग अलग रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं. आप देख रहे हैं इस वक्त ओस्मानिया यूनिवर्सिटी का मुकाबला अदालत यूनिवर्सिटी का. टेबल नंबर 1 मैच नंबर 5 दूसरे दिन का चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 गुवाहाटी में. But again trying to close it out on her backhand, going for a bit of a top spin there. This time Bhavita is just trying to go for a powerful forehand, hitting it long. Look at that, wanted to close it out. 6-3 Bhavita, Osmania University. Good rally. Very nicely changing that angle on that. From Osmania University, Bhavita. That is our error coming from Nilisha's racket. Have a look at that. See how nicely she changed the angle onto the forehand. So yet again trying to see that opportunity to put it on the deep on the forehand. Hitting it wide 8-3 or 3-8 down. Yet again a deep return. 9-3. And then on the backhand error, unforced error coming from Lishma. See how nicely this time again on the backhand Bhavita is creating the opening. Look at that. And it's a bit shade late for Nilishma to recover. That's 7 game points and 7 match points as well. There it is. With that, 11-3 is the score in the 4th game. And with that, Bhavita Nagalapalli of Osmania University wrapping up this match for Osmania University. Confirmation of the score there. We'll get it now on your picture frame and have a highlights of this match. You just that backhand push going into the net from the players. In fact, Nilishma is trying to close it out early. She is just avoiding a long rallies there. That is a very good backhand chop. See, that serve was very good. That gave enough time as the ball was sitting up a bit and Bhavita could smash it easily. That is how the match progressed and ended up in favor of Osmania University. Some good rallies we got to see. And Nilishma was good in patches but not consistent enough. That is what she'll see that that's a very good backhand. And trying to smother whatever spin there. And look at the forehand. That is perfect top spin. And Bhavita is very nicely keeps changing the angles as well. Suddenly, look at that. That is how he changes the angle and gets that point. Trying to quickly go onto the forehand cross court. But it was more of a comfortable win in the 4th game in favor of Osmania University, wrapping it up at 11-5. This is what some of the good rallies which are seeing. But a few unforced errors coming from the racket of Nilishma, like one of them. Of course, here the unlucky net card as well. See how nicely changing the angle and changing the pace. Bhavita. That is where the Osmania University could win that. Following up match will be the next match where the commentary position there will be a change as well. And you see Vikas Pandey in Hindi and
and the one and only Akshay Maurya in this. बहुत बहुत धन्यवाद श्रीनी। और यकीनन इस समय बहुत अच्छी स्थिति में है उस्मानिया यूनिवर्सिटी की टीम, और ये मुकाबला अब आ रहा है आपके सामने वुमेन्स टीम डी राउंड 2, और अब आमने सामने होंगी नम्रता साई जो कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी की हैं, और उनके सामने होंगे दीपान्विता बासु। लाल रंग की पोशाक में आपको नजर आएंगी नम्रता साई, और दीपान्विता जो है वो नजर आएंगी ब्लू कलर की जर्सी में। शुरुआती दोनों मुकाबले उस्मानिया यूनिवर्सिटी के हक में गए हैं, और भाविता ने अभी थोड़ी देर पहले एक अच्छे मुकाबले में परास्त किया था, जहां पर पहला गेम उन्होंने गंवाया था भाविता ने। उसके बाद से लास्ट के 3 मुकाबले जो गेम थे वो अपने नाम करके भाविता ने उस्मानिया को एक अच्छी जीत दिलाई थी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी को। नम्रता साई के पास अब वो दारोमदार के उस कड़ी को आगे बढ़ाएं, जबकि दीपान्विता बासु जो कि एडमास यूनिवर्सिटी की हैं वो कोशिश करेंगी कि अपनी टीम को वापसी दिलाई जाए। यहाँ अगर एक और मुकाबला हारी तो यहाँ सफ़र समाप्त हो जाएगा एडमास यूनिवर्सिटी के लिए। जैसा वार्म अप मुकाबले से पहले अपनी तैयारियों को पक्का करते हुए दोनों पैडलर, और यकीनन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के अंदर जब टेबल टेनिस की बात होती है, आज दूसरे दिन का ये एक्शन जारी है। टीवी स्पोर्ट्स के जरिए आप इसका सीधा प्रसारण देख सकते हैं, जबकि प्रसार भारती के यूट्यूब चैनल पर भी आप इसका लुत्फ उठा सकते हैं। Third match, best of 5 games. और यकीनन ये एक अच्छी मुकाबले की आशा के साथ मुकाबले की शुरुआत हो रही है। अक्षय, बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर से। First game, Thank you, Vikas. And Adamas University after to that serve. consecutive Lavon, win from Varuni Jaiswal and Bhavita Nagulpalli in the earlier two One contests. Osmania University sitting quite comfortably in this contest up against Adamas University. And already Dipamvita has opened the account. So Adamas University does look good in the initial stages of the match, but somehow, for some unfortunate 1-2. reasons, they seem to lose the steam as the match progresses. And now Namrata Sai has opened the account in red jersey representing Osmania University, but that unforced error hitting one into the net, sometimes trying to generate that spin, trying to deceive her opponent. And Bhavita was trying to Let be a little cheeky out there. 3-1. Jersey number 238 in red. Namrata Sai representing Osmania University facing Dipamvita Basu. 3-2. Slight margin of 1 point. Good backhand there. Nice side spin as well. Good execution from Dipamvita Basu. Good to see at 4-2 she is looking in control of the situation as of now. Adamas University. 3-4. See what happens. She does well at one rally, and immediately after that she loses that touch. So that fluctuating fortune, that fluctuating form has been a cause of concern for Adamas University. And to help her cause, Namrata Sai makes those unforced error, hitting the one into net, going for that powerful forehand across the table, but she couldn't get the elevation right. 6-3. Dipamvita Basu will be happy with that 6-3 lead. Also got the serve with her.
Nice soft serve off the table. Oh, this is what happens. You know what happens, because when the player goes for a strong forehand into the center of the table, they have to realize that the length, the extra length provided by the diagonal, the cross table, is not going to be there, and that's when they have to control the pace. They have to roll a little bit earlier. The bat, and it's one of the most difficult shots when you go for a winner from the center of the table. 4-7. The umpires raised their hand, but they've called it a let. 7-5. Those two faults have allowed the Panvita with a good lead of 2 points. 8-5. बिल्कुल, और वो इस स्तर पे ऐसी गलतियां बहुत जल्दी देखने को मिलती नहीं है। हालांकि इस समय अच्छी स्थिति में नजर आ रही हैं दीपान्विता, और यहाँ पर देखिए क्या कमाल का रिटर्न। और अब थोड़ी सी परिस्थितियां माकूल होती हुई यहाँ पर दीपान्विता बासु के लिए जरूरत भी है इस चीज की। अच्छा, लेकिन वो से जाकर उलझा, जिसकी वजह से एक और अंक यहाँ पर गंवाया। देखिए अच्छी रैली चली थी, उसके बाद से वो अंक बटोरती हुई एक और। अब गेम पॉइंट पर इस समय सर्व करती हुई दीपान्विता। और थोड़ा सा निराशा लगी होगी जिस तरीके का ये प्रयास था। हालांकि अभी भी 3 गेम पॉइंट है उनके पास। इस बार कन्वर्ट किया गेम पॉइंट को अंक में, और पहला गेम 11-7 से जीता है। वापसी की उम्मीद जगी होगी इस गेम के बाद यकीनन, जिस तरीके का प्रदर्शन आया अक्षय। Absolutely, and how often it has happened as far as Admas University is concerned, that they have won the opening game, brought those hopes alive, and it will be important for Dipanvita Basu of Admas University to carry on the momentum forward. Right now on your TV screens in red jersey is Namrata Sai. Shouldn't be too worried. Her team has already won the opening 2 matches, and this contest between Osmania University and Admas University is obviously, the balance is tilted toward Osmania. They've looked good, and check it out in the heat plays also. These are the highlights of the last game. Very similar looking player, Namrata Sahi, to Varuni Jaiswal, her compatriot from Osmania University. As the players make way back to the table for game number 2, it will be interesting how Namrata looks to change gear for Osmania in this game number 2. Second because game, if she to serve. doesn't win this game number 2, that will put a lot of pressure on her. Good serve, great forehand there, a little deflection from the net. Opening the account for Dipanvita Basu, as she has done so often in this match, putting pressure on Namrata Sai, straight away hitting into. The scores are leveled. Dipanvita Basu with the serve. Oh, look at that excellent forehand. Not overly fast, but the distance and the angle that was created by Dipanvita in blue jersey made it really difficult for Namrata Sai. Good to see such shots of brilliance in between, but that anxiousness, that over-anxiousness is what a player needs to control, because you can get a little high after those couple of good points. But it's a long match, it's a long game. You have to keep your calm for a really, really long time, and this is what happens when you go a little over hard on your forehand. Mind you, I've been telling that when you go for that strong forehand from the center of the table, the distance is definitely decreased as compared to those cross-table forehands. It's the same mistake made by Namrata Sai on that occasion, going for a straight forehand down the table,
and got the elevation a little too much, crossing all the way to the table. बस टेबल का अच्छा इस्तेमाल करना जो वो खिलाड़ी पैडलर अच्छे तरीके से जानता है वो यकीनन हावी रहता है ज़्यादातर समय मुकाबले के अंदर। दीपान्विता एक बार फिर से सर्व के साथ अच्छा सर्व, अच्छा यहाँ पर फोरहैंड लगाया एक बार फिर से, और वो राइट कोर्ट पर दीपान्विता का जो प्रयास था वो रिटर्न जब आया नम्रता का तो वो जाके नेट से टकराया था। टच यहाँ पर देखने को मिला इस बार, वो थोड़ी सी लाइन को जज करने में गलती और उसका फायदा मिलेगा नम्रता को। स्कोर 4-4 की बराबरी पर। देखिए किस तरीके से ज्यादा फोर्स जो जनरेट किया उसके चक्कर में वो अंक गंवाया था, लेकिन एक अच्छा अंक यहाँ अर्जित करती हुई नम्रता साई, उस्मानिया यूनिवर्सिटी की, हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं वो, और यकीनन पहले गेम में, लेकिन यहाँ पर देखिए एक अच्छा क्रॉस कोर्ट जाकर वो अटेम्प्ट आया जो फोरहैंड पर लगाया शॉट, तो कोई जवाब नहीं था दीपान्विता के पास। 6-5. Dipannvita Basu getting into a great position there on that occasion, going for that cross table forehand, and excellent execution of the drive. Look at that, a little bit of side spin on that serve, always moving away, and compelling Namrata Sai committing into that return a little too early, and resulting into a pop out of the table. So Dipannvita has impressed in this game number 2 after having lost the opening game. 5-8. And look at that, a lot of pressure on the Osmania player Namrata Sai now. Again going for that strong drive in from the center of the table, not being able to control it, and now with a margin of 4 points, it is Dipannvita Basu who will be serving. It's in a very good position, the Adama's University player. And now excellent work there, using the spin, heavily loaded spin on that return, controlling the rally all the way, Dipannvita Basu. And now 5 game points she has. She should have gone for a strong forehand. I think it was Namrata who had missed out an opportunity of getting 1 point, and now she has allowed Dipannvita to make a comeback of sorts in this game number 2, as Adama's University has kind of kept the hopes alive in this game number 3, as we will be starting in a little while from here now. And a good margin from her, 11-5, because that would boost her confidence. That would really give her a feeling. दीपान्विता ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, और यही वजह थी कि ये अब एक वापसी की उम्मीद जगा रहा है एडमास यूनिवर्सिटी के लिए। और यकीनन उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने जो शुरुआती 2 मुकाबले में डोमिनेट किया था, वर्णी जायसवाल और भाविता ने, उस डोमिनेशन को कहीं हद तक दीपान्विता बासु ने तोड़ा है। और पहले दोनों गेम में देखिए किस तरीके से, जब ये एक्शन आपको देख के लग रहा होगा कि ज़्यादातर समय किसने डोमिनेट किया, डोमिनेशन दीपान्विता बासु का रहा है। 11-7, 11-5 से शुरुआती दोनों गेम अपने नाम किए हैं, और अब सर्व करती हुई दीपान्विता तीसरे गेम में। तो शुरुआत हुई है पहले अंक की नम्रता साई के साथ। Osmania University player Namrata Sai under tremendous pressure. She has the cushion of 2 games, 2 matches earlier on. Her competitors have sealed 1-0. with comprehensively defeating Sanchita Chatterjee and Rishma Sarkar comprehensively. But now Namrata Sai under a bit of a pressure after having lost the opening 2 games in this match number 3. 2-1. In red jersey on your TV screens, the Osmania player Namrata Sai.
1-3. Basu going for that strong backhand there, couldn't control it. And giving one more point to Namrata Sai. Just get the feeling that Namrata is moving a little too predictably now, and that has allowed Dipanvita Basu to anticipate her returns a little while earlier as compared to Namrata Sai. That has been the point of difference as far as the earlier two games are concerned. And now in this game number 3, the look on her Namrata's face tells you the story that she is feeling the heat. 4-3. Such unforced errors will definitely not help Dipanvita's cause. Nice side spin on that occasion. An excellent, great structuring of that rally from Namrata Sai. She generated that side spin in her serve and forcing Dipanvita into that side of the table and going for the strong forehand. Superb execution. Two back-to-back points there, and not only those points have given her a lot of confidence, but has almost changed the gear in this game number 3 for Namrata Sai, because suddenly Dipanvita is looking a different player. She is not looking as good as she looked in the earlier two games, and if she can hold on to her nerve, Namrata Sai for Osmania University, and win this game, that will give her a lot of confidence, but not that easily. It's not giving up Dipanvita Basu. Very flat and sharp return on that occasion, not allowing the Osmania player to get the elevation above the net and forcing her into that error. So the margin is only of 2 points, but such ferocious return from her are going to make her life really, really difficult as Namrata Sai at this crucial junction of the game at 7-4 will be looking to seal this game. And she does that in style. Another point, another mistake from her opponent, Dipanvita Basu, has allowed her to move on comfortably to 8-4 because. बिल्कुल एक अच्छी स्थिति में शुरुआती 2 गेम गंवाने के बाद इस तरीके की वापसी आपको मुकाबले में बनाए रखता है, और यही कोशिश कर रही है इस समय नम्रता, लेकिन ऐसी गलतियों से बचना होगा और यकीनन थोड़ा सा किस्मत का भी साथ आपको चाहिए होता है। सब में और क्या कमाल का वो स्मैश आया था, साइड स्पिन होता हुआ, अगर डिफ्लेक्शन भी आया तो इतनी तेज गति से वो आया था अटेम्प्ट कि कोई कंट्रोल नहीं था उस पर नम्रता के पास। 2 अंकों का फासला। छोटी रैली, थोड़ा सा एडवांटेज मिला वहां दिपान्विता को, और किस्मत का साथ के साथ उन्होंने ये एक अच्छी रैली में अंक अर्जित किया है। देखिए नेट पे थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुई थी और उसके बाद से वो फ्रंट फोरहैंड के लिए जा रही थी, लेकिन बाद में जब डिफ्लेक्शन आया तो बैकहैंड से रिटर्न किया था। इस बार नेट पर गलती, इस बार नेट पर ये गलती एक बार फिर से वापसी की उम्मीदें लेकर आएगा नम्रता के लिए। फिलहाल सर्व करती हुई दीपान्विता, अच्छा स्मैश लगाया, और इसकी वजह से उस गति के साथ जब रिटर्न ब्लॉक करना चाहती थी नम्रता तो वो वाइड जाता हुआ, जिसकी वजह से एक बार फिर से वो फासला जो है वो बढ़ता हुआ। और साथ मिला, एक अच्छा टैप इन था, सिर्फ आपको पोजीशन करनी थी टेबल के ऊपर, बिल्कुल पोजीशन में नहीं थी नम्रता, लेकिन वो अंक ऐसा लगा परोस के दे दिया। देखिए इतना समय था उनके पास, लेकिन इस आसान से मौके को, इस अंक को गवाया, और यकीनन ऐसे प्रदर्शन से निराशा ही हाथ लगती है अक्षय। Absolutely, really heartening to see such sides because she was in a good position. She had all the time in the world. She had pushed Dipanvita away from the table, and all she had to do was just roll the bat over.
any paddler, it's like a dream situation, especially when you are such a crucial Left. junction. Nevertheless, it is 10-9. still in Namrata's favor at 10-9, and she's got the serve as well. Nice sharp flat serve there, but excellent return from Dipanvita, forcing that drive straight into her body, and the scores are level at 10-10. So at deuce, it is anybody's game now. Game number 3 in this third contest. Lovely spin on that occasion. Beautiful serve. But equally good return from Namrata Sai. What a champion player she is. I really like the way she's responded to the situation. Even after having lost the 2 games, she's not looked less confident at all. Good serve, good nice backhand serve, and nice use of the sides of the table. She'll have to push a little hard. Oh my God, what happened there? She missed it altogether. Really, really unfortunate. She was in a good position. She was within the reach of that. It was almost within her arc. How did she miss that? Obviously, that spin-loaded return from her opponent, Dipanvita Basu, made her commit a little too early, rolling the bat a little too early before the ball reached her. So at 11-11, 11-12. it's even Stevens, as they say. And now a little advantage to Dipanvita Basu. Namrata will be so disappointed if she goes on to lose this. Let's see. Oh, beautiful, lovely, and that's it. 11-13. She wraps it up in straight But games. best Dipanvita to- Basu keeping the hopes of Adamas University Adamas alive, University. and what a comeback for Adamas University, because one has to say that comprehensively defeating the Osmania player. We knew that Osmania University player came into this contest as a favorite, because having 2 of her compatriots sealing the games, but keeping the hopes of Adamas University alive and ticking. Dipanvita Basu come up with a brilliant game, defeating comprehensively to Namrata. Check it out in the highlights there. Look at that one rare mistake from Dipanvita in blue jersey, but otherwise it was all blue jersey throughout his game. See, this is what I'm talking about. Great force, and even if Namrata was able to connect it, she wasn't able to keep it on the table. It was very, very difficult. So as we go into the first reverse single of the day, it will be interesting to see if she goes all the way down to the 5th match, or we'll have a winner by the 4th match. What do you reckon, Vikas? Any predictions you would like to call? As Varuni Jaiswal and Nilishima Sarkar come out in a short while from now for their first reverse singles. प्रेडिक्शन अगर नतीजे के हिसाब से करें तो यकीनन वरुणी ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया था पहले मुकाबले में संचिता के खिलाफ, उन्होंने एक क्लोज कॉन्टेस्ट को जीता था लेकिन बहुत बेहतर नजर आई थी, तो नीलिशिमा के लिए वो कहीं से भी आसान नहीं होने वाला है, जो अपना पहला मुकाबला भाविता के खिलाफ हारी थी। तो यकीनन एक अच्छा मुकाबला आने वाला है, और इस मुकाबले के लिए एक बार फिर से स्वागत करिए श्रीनिवास शेषाद्री और अनिल शर्मा का। अब ये जो रिवर्स सीरीज के अंदर ओस्मानिया यूनिवर्सिटी का मुकाबला होगा आदामास यूनिवर्सिटी डे 2 मैच नंबर 7 टेबल 1 पर वरुणी जायसवाल 239 जर्सी रेड जर्सी पे, दूसरी तरफ इंग्लिश में सरकार 225 डीप ब्लू अगेंस्ट द कैमरा, फेसिंग द कैमरा इज जायसवाल और अपोजिट द कैमरा इज सरकार 205 आप देख सकते हैं। और जो एम्पायर्स हैं इस मैच के, एम्पायर 1 है के महेंद्र सिंह मणिपुर की, और एम्पायर 2 है मिताली दत्ता दास आसाम। जैसा कि हमने देखा आज काफ़ी बहुत शानदार मुकाबले, और जैसा कि वुमेन टीम ग्रुप डी राउंड 2 का ये रिवर्स सिंगल्स थोड़ी देर में शुरू होने वाला है, और ओस्मानिया और अदामस
यूनिवर्सिटी के बीच में। और ये किस तरह का मुकाबला होगा, कैसा होगा, कौन जीतेगा, इन सभी जानकारी को देने के लिए मेरे साथ कमेंटेटर, सीनियर कमेंटेटर श्री दिवाकर जी इंग्लिश में। This is women's Team D round number 2, the reverse singles, where Nilishma Sarkar of Adamas University will be taking on Varuni Jaiswal in red from Osmania University. That is Nilishma on the screen, trying to go and try to get the rhythm on the backhand. And there you are in red, that is Varuni Jaiswal of Osmania University. All getting ready as the players right now warming up on the table number 1, which is coming under live coverage of DD Sports and as well as live streaming on Prasar Bharati YouTube. This is the first of the reverse singles. It happens only when any team is not able to pick up at 3-0, then the question of reverse singles come in, and that is the kind of a scenario we are in here in the match between Osmania University and Adamas University. And in a short while from now, First game. the match will get Osmania underway University to in serve. red. That is Varuni Jaiswal and Nilishma receiving the serve. Lawal. That was just missing the table there from Varuni. Lawan. One all. Varuni Jaiswal from Osmania. And all. Oh, that is a very good thinking to go on a powerful forehand. 2. Have a look at that again. See the power on that. Nilishma serving. Completely 2 all. missing the pace. 2 all. Varuni serving. Good serve. Not a spin on the forehand serve. But the return was even better. Went on the backhand. Sharp return. Superb. The weak return very easily put away by Osmania University. Varuni, look at that. Absolutely no chance. So much of pace on that forehand. Very good serve. Serve was good, but the return, you know how much it smothered that spin. Look at that. That is where it's very difficult to return. So much of spin on that. The ball just missing the edge of the table there from Nilishma. Varuni serving 5-3. Oh, look at that. Right on the wrist. 6-3. Really, virtually ripping backhand from there. 3-7. Too much of power on that backhand from Nilishma. Nilishma trying to close out the points early. Serving at 4-7 down. Good forehand serve. What a return. Good sense of anticipation. Quickly moved into her right. Came with that thumping forehand cross-court winner there. Tremendous pace on that. Because she was in a good position right away. 8-4. Varuni Jaiswal. Trying to go for that relentless attack, trying to change that angle on the forehand. 5. But hitting it long, missing the table there. Look at that. Trying to create so much power, not closing the face of the racket in time, hitting it long. 8-5. Good backhand serve. Oh, that is very disappointing. Obviously, reflects on her face. Nilishma 5. went for the backhand slice to slow down the pace in rally. But the backspin was not good enough. Good serve. 5-10. A quick return
and not giving enough time for Nilishma to get into the position for the backhand push into the net. 5 game points for Osmania University. 10, 6. 1 set. And she closes it out. Yes, she does. 11, 6. Game goes to That is where Varuni Jaiswal closing out the first game 11-6. Nilishma looking a bit tired and exhausted. Look at that. That is the last point. Trying to go for that push on the backhand, putting it into the net. First game in favor of Osmania University. Varuni Jaiswal taking it at 11-6. Nilishma Sarkar just rehydrating herself, looking pretty exhausted and tired, not really keeping well, I believe. And then see the support from her squad there. Look at the highlights of the first game. Yeah, it is good domination by Varuni Jaiswal. Going on the attack when it's needed. Just you saw one of those points like that. Trying to generate a lot of pace. Put that backhand slice. Varying that angle, varying the spin as well. See, look at that again, the last point. That is Varuni Jaiswal from Osmania University. Picking up the first game. 11-6. So there you are. Just the players having a word of consultation from the respective coaches. Yes, they can definitely give a lot of tips if they are doing Second well, game. how to go on Adamas University doing to that serve. and keeping that momentum and how to improve it Love further. on. But when you are down, just to give them that kind of an encouragement to assess on what is going wrong and what should be done, as the players are just getting back for game number 2. पहला गेम जीतने के बाद उस्मानिया यूनिवर्सिटी Love 1. वरुण जायसवाल का लाजवाब प्रदर्शन 11-6 से उन्होंने जीता। और अब सर्विस करते हुए दिनेश सरकार अदालत यूनिवर्सिटी की 205 जैसे नंबर। All. आप देख सकते हैं शायद थोड़ी सी उनकी तबीयत नरम है। सर्विस करते हुए जायसवाल सबसे बड़ी ताकत उनकी फोरहैंड बैकहैंड दोनों पे लाजवाब प्रदर्शन उनका पहले गेम में और दबदबा अभी भी बनाए हुए। सर्विस फॉर जायसवाल। फोरहैंड तो लाजवाब है ही, 2. क्योंकि जब भी उनको अवसर या मौका मिलता है उसका पूरा पूरा वो फायदा उठा रही है और 2-2 की बराबरी। सर्विस को अवसर का और इस बार एक अंक जीत किया काफी देर बाद। 2. तो अब 3-2। सरकार 3-2 पर सर्विस करते हुए अच्छी सर्विस, All. लेकिन रिटर्न काफी खराब। 3-3 पॉइंट दोनों अंक दोनों खिलाड़ियों का। 3 पर सर्विस करते हुए अच्छी सर्विस मगर और इसका कोई जवाब नहीं है यहाँ पर नीलिमा सरकार को। तेज तर्रार 4, के 3. अलावा जिसमें भी स्पिन उनको मिल रही है फोरहैंड बैकहैंड एक बार फिर से काफी नजदीकी और थोड़ा सा बदलाव है सर्विस के अंदर में। एक बार फिर से कोई जवाब नहीं यहाँ पर नीलिमा सरकार के पास। अब अंक हो गया 5-3। लगातार दबाव बनाए हुए वरुणी जायसवाल पहला गेम जीतने के बाद दूसरे मैच में अपने प्रदर्शन में लगातार और ये पहली बार 5. 5-3 5-4 माफ कीजिएगा एक अंक का अंतर। A bit like unlucky there, 6, 4. trying to go on to the forehand court, hitting it wide. 6-4 Varuni. See, change in the angle, change in the pace, change in the depth in that serve. That is where the opponent was deceived. 7-4 lead for Varuni Jaiswal from Osmania as she serves. See how nicely suddenly he is picking up a pace on that rally, short rally. Jaiswal on her backhand, extracting the error from Nilishma. There it is. See, sudden just pace in that. That is where the return is going long. She could have gone for a block. Oh, that's lovely. Thorough command on the short rally.
For a moment, it looked like a good return of serve, but then there she is. Oh, look at that! Quick reaction, moving to her right, coming with that forehand cross-court win. 4-9. It was not going to be easy. So much from outside the table 9-5. for Varuni. Hitting it wide. 5-9. Can Nilishma make a comeback here? Trying to close out the point early, trying to go for that backhand top spin. 5 game points for Varuni. And Nilishma is saving one of them. 10. And it is 6-10 for her to serve now. Can she quickly pick up 2 points on her serve now? Good backhand serve. But see, she's not able to control that backhand return, hitting it long. 11-6 with that this game goes in favor of Varuni Jaiswal. So with the 2 games with Osmania University, when the players come back for the 3rd game, the pressure will be obviously on Nilishma Sarkar. She's feeling definitely pretty exhausted and not in the best of health at the moment, not able to move quickly. Look at that last game, the highlights of it, and just clearly she's just given it up in the last point. Oh, this is a good one. Quick reflex from Nilishma. That she's just trying to go for that forehand block, not closing the face of the paddle. That is what she knows, that is exactly the error happening. Need to close the face of the paddle in time, like what she does now, and it again. That is what is picking up the error. बिल्कुल सही, क्योंकि आपको अपने जो अपोजिट खिलाड़ी है 3rd game. उसकी कमजोरियों को जानना बहुत जरूरी है। वरुणी जायसवाल उस्मानिया जिस प्रदर्शन यूनिवर्सिटी उन्होंने to 2 serve. गेम में किया, 11-6 Love all. बिल्कुल अपना दबाव बनाए हुए, और कहीं पे भी जब भी मौका या अवसर मिला उसका पूरा भरपूर फायदा उठाया। गेम नंबर 3 सर्विस फॉर वरुणी जायसवाल, और इस बार थोड़ा जरूरत से ज्यादा उत्तेजना और एक मुफ्त में अंक खाता खोला नीलिश्मा सरकार का अदामास यूनिवर्सिटी की। सर्विस करते हुए जायसवाल, और ये लकी 2. और एक पॉइंट, लकी पॉइंट कहेंगे। नीलिश्मा सरकार लगातार 2 अंक जीत कर सर्विस फॉर सरकार, और लगातार 3 अंक, 3. Love. 3-0 से आगे। 2 बोनस पॉइंट मैं कहूंगा, मुफ्त में 2 अंक दे दिए। अभी भी सर्विस करते हुए नीलिमा सरकार अदामास यूनिवर्सिटी की, काफी नेट के तक, और ये पहली बार उन्होंने भी एक मुफ्त में जायसवाल को रिटर्न गिफ्ट दिया। Return the compliments. 1-3. Oh, the intention was good 3. on the backhand. Wanted to create a bit of a top spin into the forehand court. Well, look at that. Just not able to get past the net. Again, a good serve. Lot of more space on that serve. Return into the net. 3-all. Look at that serve. Good serve. ऐसा बहुत कम देखने को मिला है कि जायसवाल की सर्विस पे अंक गंवाए हैं, लेकिन तीसरे गेम में 1 अंक, और ये लगातार दूसरी बार ऐसा हुआ कि वो नेट बॉल क्रॉस नहीं कर सकी, थोड़ी सी ज्यादा, मगर ये पार्ट एंड पार्शल ऑफ द गेम है। Trying to go for the forehand, the top spin, hitting it. Look at that, how nicely she is able to change the angle, change the depth in the short rally. Varuni Jaiswal as she serves here. 4-all. ये लाजवाब सर्विस, कोई जवाब नहीं है अपन नीलिश्मा सरकार अदामास यूनिवर्सिटी का पास, और इस तरह से स्कोर पहुंचा 4-5 पर सर्विस करते हुए जायसवाल उस्मानिया यूनिवर्सिटी की, और एक बार फिर से लगातार 2 अंक, और अब 5-5 की बराबरी। दोनों खिलाड़ी, खास करके नीलिश्मा सरकार के लिए मुकाबला बहुत
जरूरी है जीतने के लिए, अगर वो इस गेम में बने रहना चाहते हैं तो। मगर जिस तरह का प्रयत्न या प्रयास वो कर रही है, वैसा तो कहीं पे भी लगता नहीं है कि वो वापसी कर पाएगी। I think she hurried up that point. Look at that again. So much close to the table. Wanted to close it out fast and wanted to give a perfect angle. Didn't get it. Oh, that's a good serve. All. दोनों खिलाड़ियों के खेलने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग। वरुणी जायसवाल अटैक और डिफेंस दोनों में माहिर, सर्विस में लाजवाब, और ज्यादातर और इस बार एक बार फिर 6, फोरहैंड 7. सही तरीके से वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाई और एक अंक उन्होंने मुफ्त में दे दिया है नीलिश्मा सरकार को। Look at that. Trying to go for that heavy top spin return on the forehand, hitting it long. 6-7. 7. All. Went for that little bit of back spin, but that went against her for Nilishma. 7-all. Important third game. मनोवैज्ञानिक दबाव आदमस यूनिवर्सिटी की नीलिश्मा सरकार के ऊपर है, साफ जाहिर हो रहा है। मगर जिस तरह का कमबैक वो कर रही है, हालांकि उनकी तबीयत थोड़ी सी अच्छी नहीं है, मगर उसके बावजूद अगर वो तीसरे गेम में क्लोज कंटेस्ट अगर थोड़ा मुकाबला भी कर रही है, ये भी काफी काबिले तारीफ है। By far the best rally of the match, I guess. But in the end, what happens is who is trying to close it out. Nilishma did a good job there, kept her position in the rally well. Look at that rally, superb it is. Changing the flanks and then trying to go for that forehand push, hitting it long. 8-all. आप देख सकते हैं आदमस यूनिवर्सिटी की नीलिश्मा सरकार का कोई ज्यादा फुटवर्क नहीं है, वो एक ही जगह से खड़े खड़े खेल रही है, दाएं दाएं, और ज्यादा डिफेंसिव, जस्ट पुश, और कुछ ज्यादा कोशिश नहीं कर रही है। हालांकि 9-8 और एक अंक गवा दिया, 10-8 हो गया है। अब 2 अंकों का फासला, अब 1 अंक से दूर, ये तीसरा लगातार गेम जीतने से दूर वरुणी जायसवाल और उस्मानिया यूनिवर्सिटी। There it is, Nilishma serving to stay in this match. Look at that, powerful forehand from Varuni Jaiswal, picking up that error and return from Nilishma. With that score at 11-8, she is able to wrap up this game in straight. They wrap up this game at 11-8 and also wrap up the match in straight games. बिल्कुल, 3 लगातार 3 गेम अगर कोई भी खिलाड़ी जीतता है, 11-6, 11-6, और तीसरा मैच 11-8 है, तो अपने आप में सारी कहानी बयान हो जाती है। जिस तरह का दबदबा वरुणी जायसवाल और उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने शुरुआत से जो बना के रखा और बिल्कुल भी मौका या अवसर नहीं दिया नीलिमा सरकार आदमस यूनिवर्सिटी की, और अंत में जो निर्णय हमने देखा है 11-6, 11-6 और 11-8 से लगातार 3 गेम जीत गए हैं। मैच नंबर 7 डे 2 टेबल नंबर 1 पे। वोमेन टीम्स ग्रुप डी राउंड 2। As the next match will get underway now, there's a change in the commentary position. Joining Akshay Maurya is Vikas Pandey in. Thank you, Sri. And what a match we just witnessed between the champion Varuni Jaiswal after Namrata Sai for Osmania University missed out on ceiling for Osmania up against Dipanvita in the third contest. It was up to Varuni Jaiswal once again, who was taking on Nilishma Sarkar. Nilishma Sarkar, even though she had already lost against Bhavita Nagalpalli, she was under a lot of pressure to save it for Admas University. But the work done by Dipanvita Basu for Admas University went down the drain, because Nilishma Sarkar was up against a daunting and a formidable competitor like a Varuni Jaiswal, and she sealed it for Osmania University in straight comfortable games with 11-6, 11-6 and 11-8. So
It will be Osmania University who is moving from round number 2. Mind you, this was Group D's round number 2 match. Oh, we are in the day 2, bringing you live action on TV Sports of this Khelo India University Games 4th edition from the beautiful city, the capital city of Guwahati. And Vikas and I, we were just having a break a little while ago and enjoying the delicacies in this amazing northeastern state. And last evening also, because when we had the opening ceremony, we heard the message from the Honorable Prime Minister as well through a video conference, and it was literally a delight to listen to the Honorable Prime Minister, how dearly and how affectionately he talked about the northeastern states, and especially when he explained the meaning of the official mascot, which is the Ashtalakshmi, and he referred to all the 8 northeastern states that they are collectively they comprise Ashtalakshmi, and all of these northeastern states coming together, hosting this beautiful Khelo India University Games latest edition. So yes, we're having a great time in this wonderful scenario of our northeastern states. A great climate, very hospitable people, and what a way to go through the day 2 as we witness the first reverse singles between Varuni Jaiswal, who sealed it for Osmania University, as we are lined up for the next matches. Having fun, Vikas? बिल्कुल, एक अच्छी शाम होने की उम्मीद यहाँ पर एक खूबसूरत से स्टेडियम के अंदर, एक एरिना के अंदर हम इस समय आपके लिए सीधा प्रसारण लेकर आ रहे हैं डीडी स्पोर्ट्स के ज़रिए, जहाँ पर अब एक और बड़े मुकाबले की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। अदमास यूनिवर्सिटी बनाम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बॉयज सेक्शन में ये मुकाबला, और ग्रुप बी के दूसरे दौर के इस मुकाबले पर हमारी नज़र रहेगी, जिसके लिए टीमें तैयार हैं और यकीनन जिस तरीके का प्रदर्शन देखा है खासतौर से अदमास यूनिवर्सिटी की तरफ से, उस प्रदर्शन को पीछे छोड़ के मेन सेक्शन में ये टीम आगे बढ़ना चाहेगी, क्योंकि बॉयज सेक्शन में कुछ ज़्यादा वो मिला नहीं। आज के अंपायर की बात करें, निर्दोष कुमार दिल्ली से आते हैं, जबकि सुजीत कुमार राय ओडिशा के दूसरे अंपायर की भूमिका में होंगे। ये दोनों अंपायर के दारोमदार इस मुकाबले को सही तरीके से संचालित करने का और दोनों ऑफिशियल्स पे नजर रहेगी किस तरीके से आज शुरुआत होती है। पहला मुकाबला अनिकेत सेन चौधरी, जो कि अदमास यूनिवर्सिटी के हैं, वो भिड़ेंगे दिव्यांश श्रीवास्तव, जो कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के हैं, उनके खिलाफ। और यकीनन 107 नंबर की जर्सी में आपको गहरे नीली जर्सी में नजर आएंगे दिव्यांश श्रीवास्तव, जो कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से आते हैं, जबकि 103 नंबर की डिव में नजर आएंगे अनिकेत सिंह चौधरी, जो अदमास यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, और वो लाल रंग की पोशाक में नजर आएंगे। गेम बेस्ट ऑफ 5 गेम का ये पहला गेम आपके लिए जल्द आने वाला है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के अंदर। और एक अच्छे मुकाबले का इंतज़ार हम कर रहे हैं। वार्म अप सेशन चलता हुआ इस समय, और यूजुअली वार्म अप के समय हम अक्षय कभी किसी खिलाड़ी को या किसी पैडलर को ड्रॉप शॉट या स्टॉप शॉट की प्रैक्टिस करते हुए नहीं देखते हैं, यानी कि इरादे जाहिर करते हैं कि देखिए भैया हम तो तैयार हैं स्मैश लगाने के लिए, हम वो ज़्यादातर शॉट जो हैं आपको स्मैश के ज़रिए ही देने वाले हैं, तो क्या आप तैयार हैं इस चीज़ के लिए, यही कुछ बताते हैं शायद। Also the fact that when you
when you practice with the fast and speedy returns, it kind of opens up your eyes. How often we have seen when players go for the field games which are played outdoors, they look upon the sky, especially towards the sun, to open up their pupils. Similarly, with what happens with table games, it is a lot about the reflexes, and if they can get their eyes set on those sharp returns, it kind of not only gives them a confidence, but their body also gets warmed up to the sharp reflexes as the Admas University and Chandigarh University get on the way for their first match between Aniket Sen Chaudhary and Divyansh Srivastav, and excellent drive there on that occasion, opening the account. That was a bye. Oh, missed an opportunity there. Missed an opportunity there. Aniket Sen Chaudhary, he had the ball in his arch. He had the opportunity to go for that all-out drive, but couldn't keep it on the table. Nevertheless, it's 1-1, and get the chance very early after that. Goes for a cross-table forehand. Great drive towards the sidelines of the table with Aniket Sen. 2-1. So that's what we were talking about, Vikas, during the warm-up, that how they would like to get attuned with those fast reflexes. And within no time, in the early few minutes, Aniket Sen has showed his intentions quite loud and clear. Goes for another forehand. Really unfortunate, couldn't keep it on the table. Would have been perhaps one of a very, very good looking shot had it made it to the edge or the line of the table. Down the line, strong forehand, but a little long. Oh, that's cheeky. The Chandigarh University player Divyansh Srivastav missing out on that occasion. So within no time, with the 4-2 lead, Aniket Sen will be facing the service from Divyansh Srivastav. मोमेंटम हासिल कर लिया है और उस मोमेंटम को तोड़ने की कोशिश दिव्यांश की तरफ से। ये जो फोरहैंड रिटर्न आया बहुत शार्प था और क्रॉस टेबल से वो टक्कर गया था। इस बार जोरदार स्मैश और बिल्कुल पोजीशन में नहीं थे, गति से बीट खाए वहां पर और बिल्कुल संभलने का मौका नहीं था। दिव्यांश अच्छी वापसी करते हुए अब 4 ऑल पर इस समय। लेट दोबारा सर्विस कीजिए, अच्छा डेलिकेट टच और नेट पर एक बार फिर से वो गलती और वापसी जो दिव्यांश ने लगातार 2 अंक के साथ की है, वो मोमेंटम जरूर अहम होगा। लेकिन इस बार नेट पर दूसरी तरफ से भी गलती आती हुई दिव्यांश इस बार नेट पर वो फोरहैंड पर रिटर्न मार बैठे, जिसकी वजह से फिर से स्कोर जो है 5 ऑल। देखिए किस तरीके से जब वो रिटर्न आया, अच्छी रैली चल रही थी दोनों के बीच में। यहाँ पर बड़े आसानी के साथ वो अंक गंवाया। एक समय ऐसा लगा कि पूरा मौका था उनके पास, अनिकेत के पास, लेकिन वो मौका हाथ से जाता हुआ। इस बार नेट का एडवांटेज मिला नहीं। दिव्यांश ऐसा सोच रहे जरूर होंगे कि वो एडवांटेज उनको मिलना चाहिए था, लेकिन वो मिला नहीं। अच्छी सर्विस, स्पेस बनाया है और स्पेस बनाया तो उस बात को भूल गए कि वो बहुत वाइड चले गए थे टेबल से दिव्यांश, और उसका पूरा फायदा उठाते हुए देखिए कैसे वो मौका बनाते चले गए। जैसे ही एंगल नैरो हुआ तो अपने फोरहैंड पे एक सीधा स्मैश लगाया और वो पीछे गया था। अच्छा अंक और अच्छी वापसी अनिकेत सेन चौधरी, अदमास यूनिवर्सिटी की तरफ से अच्छी वापसी की है और बिल्कुल दिव्यांश श्रीवास्तव के लिए अब थोड़ा कुछ बेहतर करने की जरूरत। Because the reflexes of Aniket Sen have been absolutely sensational, and time to time he's come up with those strong drives down the grind, so making life difficult for Divyansh Srivastav here in blue jersey as he serves. Oh, look at that! Look at that! Firstly, it was a good forehand from Divyansh Srivastav, but what a response from Aniket Sen straight away down the ground. Beautiful drive, cross the table. On that occasion, it was slightly difficult to keep it on the table. Gives 1 more point to Divyansh Srivastav, but still 3 game points for Aniket Sen. He's getting a little over anxious here. Pull it on, boy. Have to stay steady. Still with 2
game points. Aniket Sen for Admas University. Mind you, the girls from Admas University have not been able to secure a place in round number 2, so it's all up to the boys to keep the colors of the university up and flying. But not like that, not like that. The red jersey boys feeling the nose as the scores are leveled at 10-10, so at deuce. Aniket Sen serving. Nice serving, but look at that angle. A little lucky break there, but advantage to Divyan Srivastava now. He'll let it go. He'll let it go. Aniket Sen, he was in such a good position there to seal the opening game. But those back-to-back unforced errors from Aniket Sen Chaudhary has allowed the Chandigarh University player Divyan Srivastava seal the game with 12-10. Because one must say that after having come to such a strong position, when you were 10-8, 10-7, and from there on getting down to the deuce at 10-10 and letting that game slip out of your hand can be really, really nerve-breaking and heart-wrenching. बिल्कुल, क्योंकि देखिए ज़्यादातर गलतियां ऐसे मौकों पर आप जब करेंगे तो आपको उसका हर्जाना भी भरना पड़ेगा, और यही कुछ देखने को मिला। एक अच्छी कमांडिंग पोजीशन में थे अनिकेत सिंह चौधरी, लेकिन उसके बाद से मैं कहूँगा दूसरी तरफ से दिव्यांश ने भी कुछ अच्छे रिफ्लेक्सेस दिखाए, लेकिन देखिए नेट पे उनकी तरफ से भी गलतियां आप देखें तो देखने को मिली, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने नाम पे कंट्रोल किया, और जो अनफोर्स्ड एरर आए अनिकेत सिंह चौधरी की तरफ से, उसकी वजह से उन्होंने उस गेम को जीता। दूसरे गेम की शुरुआत हो चुकी है और फिलहाल इस गेम में दोनों जो शुरुआती अंक हैं वो गए हैं दिव्यांश श्रीवास्तव के पास। मोमेंटम शिफ्ट नहीं होने दिया है बिल्कुल, लेकिन इस मौके पर जरूर अनिकेत सिंह चौधरी का ये रिटर्न उनको वापसी कराएगा, उनका मनोबल बढ़ाएगा। बैकहैंड पर वो रिटर्न एक अंक दिलाता हुआ। एक बार फिर से वो गलती जिसकी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि इस पे ध्यान देने की जरूरत, गति के साथ आपको सही प्लेसमेंट की भी जरूरत होती है। यहाँ पर नेट पर भी गलतियां आप कर रहे हैं अनिकेत सिंह चौधरी, और इस वजह से अब 4-1 से लीड कर रहे हैं दिव्यांश श्रीवास्तव। देखिए ये जो रिटर्न बैकहैंड से आया था वो नेट पर लगा था, और 5-1 की बढ़त। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के अंदर डीडी स्पोर्ट्स के जरिए ये सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं। इसके अलावा और प्रसार भारती के यूट्यूब चैनल पर भी इस टेबल टेनिस के खूबसूरत मुकाबले का लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ पर ये निराश करेगा जिस तरीके का प्रदर्शन अभी तक हमने अक्सर देखा है दोनों खिलाड़ियों की तरफ से। एक बार मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है तो वो फिर मुश्किलें खड़ी कर रहा है एक दूसरे के लिए, लेकिन ये रिटर्न क्या कमाल का रिटर्न था बैकहैंड पे। Oh, that is the neatest sideline backhand return that we have seen throughout the day. As a matter of fact, in the last 2 days, Divyan Srivastava is looking absolutely sensational. As even in this game number 2, he is sitting comfortably at 7-3. Just a little bit of signs of worry. Never mind. Aniket Sen Chaudhary. But yes, going back to Divyan Srivastava and in general, Chandigarh University comes to this tournament as one of the favorites, and they've been performing impeccably well throughout the year. The Chandigarh University players, they have done so well at state level, at national levels, and also at Asian Games. Some of their players have participated, so the university has given some of the brightest of table tennis players as far as the current circuit of Indian contingent is concerned. And even in this tournament, they are one of the favorites, and the likes of Divyan Srivastava are the reason why Chandigarh University is such a favorite. But good to see Aniket Sen putting up a good fight. But look at that brilliant forehand across the table from Divyan Srivastava as he gets back the serve at 9-7. This is not going to help. Oh, good work there.
Aniket Sen Chaudhary. He was a little bit slow, but I like the fact that he controlled the pace of the rally. He used that time to generate that angle and create that moment for his backhand crosscourt. One of the very difficult shots to execute, and straight away you can see Divyansh Srivastava under a bit of a pressure there. The margin has now narrowed down. It is 9-9. Let's see. Oh, that unforced error from Aniket Chaudhary will be just the moment that Divyansh was looking for. Let's see. Oh, goes for a strong forehand there. Positioned himself superbly well and seals the game comfortably. Now, one has to say that even though it was a close match, it did not look that difficult for Divyansh Srivastava, looking very, very good. Impeccable, as you would expect players from Chandigarh University. And because after the girls have done the job for Chandigarh University, it's up to the boys also. So they're looking very, very strong and right on the cause. We'll be looking at the highlights in a few moments from now. We'll give you some idea how this game number 2 panned out and how comfortably Divyansh Srivastava, even though he was challenged well, both the games have been really close, 12-10 and 11-9. Aniket Sen Chaudhary did have his moments in both the games, but Divyansh Srivastava never ever looked out of the contest in the last 2 games as far as those 2 games are concerned. Now, game number 3. Oh, I like the fact, keeping it down, keeping it close, and really, really long and deep into the table, making it very difficult for Aniket Sen to represent. Oh, strong forehand. He was stranded in the corner. He was trying to do the same thing, the leaf out of Divyansh's book. But those 2 unforced errors into the nets have allowed Divyansh Srivastava a good solid lead of 3-0. Into the body, couldn't control it. He was trying for a soft backhand on that occasion. 4-0. Really, really good. Such atrocious forehand. It was a short ball. He should have closed the bat, but unfortunately he went for a strong forehand. It's a very, very difficult shot when you're right up on the top of the table. Perhaps if it was a little deep in the court, could have been a different story. But now with 5-0, Divyansh Srivastava, I don't think he will allow Aniket Sen Chaudhary any chance to make a comeback in this game number 3. Look at that forehand, strong, sharp and flat. Compelling there, Aniket Chaudhary hitting into the net with 6-1. Oh, it was a little too wide. His body was a little away from the ball, so very difficult shot to execute. Happens sometimes, Divyansh Srivastava. 3-6. उम्मीदों के बिल्कुल मुताबिक प्रदर्शन करते हुए दिव्यांश उत्तर प्रदेश के लखनऊ के रहने वाले हैं और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की तरफ से इस समय खेल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का उनके पास अनुभव है और बीए के स्टूडेंट हैं इस समय वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, और अंडर 19 कैटेगरी में साउथ एशियन यूथ गेम्स के अंदर इन्होंने डबल्स में स्वर्ण पदक जीता था और यकीनन उनके पास वो एक्सपोजर है, अनुभव भी है। यूनिवर्सिटी गेम्स में इससे पहले भी वो हिस्सा ले चुके हैं। 2022 के यूनिवर्सिटी गेम्स जो हुए थे, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, उसका भी वो हिस्सा थे और इस समय अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए देखिए किस तरीके से गेम को अपने तरफ मोड़ा है उन्होंने। पहले गेम के अंदर वो पिछड़ रहे थे, उसके बाद से लगातार वो गलतियां अनिकेत की तरफ से जो हुई उसका भी फायदा मिला और इस समय देखिए दूसरे गेम को भी एक तरफा एक तरीके से बना के रखा है और अब वो सर्व करेंगे दूसरे गेम को जीतने के बाद। अब मैच पॉइंट पे सर्व करते हुए बड़े आराम के साथ थोड़ा सा ओवर एग्रेसिव हुए और बैकहैंड पे वो जो शॉट था वो थोड़ा सा वाइड गया। मौका दोबारा सर्विस करनी पड़ेगी।
इस बार लगातार 3 अंक ऐसा लगा कि परोस कर दे दिए, और हालांकि अभी भी 4 मैच पॉइंट है उनके पास। इस बार एडवांटेज मिला नेट का और मुकाबला खत्म। थोड़ा सा वहां लक का साथ मिलता हुआ, लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है, वही कुछ देखने को मिला। लगातार 3 गेम में 12-10, 11-9, 11-6 से जीतकर इस मुकाबले को अपने नाम किया है अनिकेत सिंह चौधरी के खिलाफ दिवांश श्रीवास्तव ने। देखिए किस तरीके से अगर हाईलाइट्स पे अगर नजर डालें तो इस गेम को शेप अप किया। पहले पिछड़ रहे थे पहले गेम के अंदर, उसके बाद से दूसरी गेम में एक जबरदस्त मुकाबले के बाद अपने नाम किया, फिर तीसरे गेम को तो लगभग एक तरफा सा बना दिया उन्होंने। अच्छे फोरहैंड रिटर्न दिखाए, बैकहैंड पे भी अच्छा कुछ शॉट उन्होंने अपने पर्पस से दिखाए। तो बिल्कुल थोड़ी बहुत गलतियां भी जो अनिकेत सिंह चौधरी की तरफ से हुई वो भी उनके लिए काफी कारगर रही। जो अनुभव था उनके पास, उस अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया, और जब भी मौका मिला तो वहां पर चूके नहीं। तो चलिए, ये पहला मुकाबला गया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम। अब दूसरे मुकाबले की तरफ बढ़ते हैं, और इस मुकाबले के लिए एक बार फिर से आपके सामने होंगे, आपके साथ होंगे इस मैच का सीधा प्रसारण के साथ कमेंट्री बॉक्स में श्रीनाथ शेषाद्री और अनिल शर्मा। धन्यवाद। जैसा कि हम ये मेंस टीम्स ग्रुप डी राउंड 2 मैच नंबर 2 डे 2 फोर्थ एडिशन ऑफ दिस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020-23 का प्रसारण देख रहे हैं डीडी स्पोर्ट्स पर लाइव इंडोर स्टेडियम सारकी वर्मा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गुवाहाटी से। और हम बता दें कि इस दूसरे मैच का मेंस टीम ग्रुप डी राउंड 2 का एम्पायर है निर्दोष कुमार दिल्ली के, और एम्पायर 2 है सुजीत कुमार रे उड़ीसा के। और जैसा कि हर वक्त होता है, थोड़ा सा वार्म अप दोनों खिलाड़ी। अंकित बोच अदामस यूनिवर्सिटी के 104, आप देख सकते हैं रेड टी शर्ट में फेसिंग द कैमरा, माफ कीजिएगा, ये है जस मोदी। ये है 104 जो है ये है अंकित बॉस, और 106 है जस मोदी डीप ब्लू जर्सी में। Facing the camera is Ankit Bose, against the camera is Just Modi. ये मुकाबला मैच टीम का ग्रुप डी राउंड 2 मैच नंबर 2 दूसरे दिन का टेबल नंबर 1 पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चौथा संस्करण खेलो इंडिया की शुरुआत 2020 में उड़ीसा में हुई थी, उसके बाद बैंगलोर, और तीसरा जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स वो हुआ था उत्तर प्रदेश में, और इस वक्त नॉर्थ ईस्ट में असम के अलावा 5 और राज्य इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 2023 अलग अलग जगहों पर अन्य 20 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन खेली जा रही है। आज दूसरा दिन है, और कुछ ही देर में मेंस टीम ग्रुप डी राउंड 2 मैच नंबर 2 अदामस यूनिवर्सिटी अंकित बॉस 104 जर्सी नंबर, आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जस मोदी 106 जर्सी नंबर डीप ब्लू जर्सी में। फेसिंग द कैमरा इज अंकित बॉस। सो बेस्ट ऑफ द 5 पहला गेम, सर्विस फॉर अंकित बॉस 104 रेड जर्सी पे। अच्छी सर्व, और उतना ही सुंदर टेबल के बाहर जाते हुए बिल्कुल एक कोने से काफी एंगल करके इसको अपना एक अंक खाता खोला 1-0 से आगे अंकित बॉस पहला गेम। और ये देखिए काफी रोचक और संघर्षपूर्ण मुकाबला, दोनों ही खिलाड़ी फोरहैंड बैकहैंड पे लाजवाब प्रदर्शन। और बाकी का हाल मेरे साथी कमेंटेटर सीनियर श्रीधरन जी आपको अंग्रेजी में सुनाएंगे। That's a good point here in favor of red jersey, that is Adamas University's Ankit Bose. This time not able to get that backhand. Right. 2-all.
Ankit was preparing to serve. A lot of power on that forehand cross court top spin from Chandigarh University's Josh Modi there. Look at that. That is where the error coming from the opponent. Good little rally, but then Chandigarh University's Josh Modi trying to close it out, but closing the face of the racket early, putting it into the net. 3-all. This is the men's Team B event, round number 2. Oh, perfect angle. 3-4. Look at that good effort on the backhand, down the line. There it is. Superb effort there. 4-all. Both the players trying to go for some attacking table tennis. Trying to close at the point early. Taking that initiative, not waiting for the opponent to make that error. 4-all. Ankit Bose serving. 4-5. There again that backhand letting him down. Playing it very close to the table. Not able to control that. That is why. 4-5. 5-all. That's a very good serve. A hurried return by Josh Modi, making it a 5-all. Josh Modi serving. That was actually a good serve and trying to hurry up on that forehand cross court. There it is, Ankit Bose trying to go for that powerful smash. That's a good serve. Lot of spin on that serve. That is why the error on the backhand return from Ankit Bose. Both the players just wiping their face. In fact, it's not all that, it's an indoor stadium, but more out of tension and pressure. You sweat it out. So that's a very powerful backhand from Ankit Bose. So just a slender 1 point difference between the two as Ankit prepares to serve. Good thinking from Chandigarh University's Josh Modi to suddenly change that angle, going on the forehand, but not controlling and hitting it wide. 7-all. As now Josh Modi prepares to serve. 7-all opening game. 8-7. Again, this time his backhand from Ankit is also letting him down. Wanted to go for deep return. 8-7. 7-9. First time the net card was lucky for Ankit, not on the second time. There it is. So he's going to serve there. Down 7-9. Oh, lovely forehand inside. Absolutely down the line on the forehand. Look at the power on that. That is where even Josh Modi tried to move to his right, but shade late. 8-9. Good rally. See that change in the angle. Continuing on the backhand, but then definitely changing that angle in the last. How he is closing out that point, Ankit Bose. Look at that. Catching up opposition by real surprise. 9-all. Good comeback by Ankit Bose. Now it is just Amit Modi to serve. 9-all in the opening game. Very well anticipating that service on the forehand, punching it with a powerful smash. And it is 9-10, facing a game point. Oh, that is gone down. Ankit Bose was in a hurry to close it out. He thought he had the game in his pocket, but the backhand push going long. 10-all. Good contest. This is what the spectators are looking forward to as Bose serves.
11-10. Powerful return of serve on the forehand. That is what picked up the error. Look at that power on that. Well 10. Ah, look at that. How the game is finishing. 12-10. And in red jersey, Ankit Bose just trying to go for the back and cross court, trying to get that angle which is not there. So losing the first game, 10-12. So the first game in favor of Chandigarh University as Judge Amit Modi picking it up. That is the highlight of the first game. Some of the good points here. We saw some good rallies. Look at that. Yes. The ball was just sitting up. That is where he had a chance for Judge Modi to pick up that point. As the players will be getting back onto the table number 1. The first set going in favor of Chandigarh University as Judge Amit Modi picking that first game at 12-10. All set ready here. Game number 2. Chandigarh to serve. जिस तरह की धमाकेदार शुरुआत की है जस मोदी ने, पहले तो ऐसा लग रहा था कि वो शायद पिछड़ जाएंगे, मगर जिस तरह की अंतिम 2 पॉइंट में उन्होंने जिस तरह से वापसी की वो लाजवाब और काफी बेहतरीन और कांटे का मुकाबला दोनों खिलाड़ियों के बीच में। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के जस मोदी फेसिंग द कैमरा सर्विस करते हुए एक बार फिर लगातार 2 अंक, माफ कीजिएगा 1-1 के बराबरी, एक मुफ्त में और एक अर्जित किया। अब सर्विस फॉर अंकित बॉल आगामास यूनिवर्सिटी के 1-2. और दूसरा दिन टेबल नंबर 1 पर मेंस टीम्स का ग्रुप डी राउंड 2 मैच नंबर 2 इन प्रोग्रेस। सर्विस फॉर अंकित पहले पीछे धकेला मगर दूसरे अटेम्प्ट में खुद ही सफल नहीं हुए और अब बैक सर्विस फॉर जस्ट मोदी। बहुत बढ़िया लाजवाब रैली देखिए, काफी देर बाद दोनों खिलाड़ियों एक दूसरे की ताकत को आजमाते हुए काफी लंबी रैली और दर्शक यहां पर उपस्थित बहुत खुश क्योंकि टेबल के दोनों साइड बाएं दाएं और फोरहैंड ड्राइव और इतनी सुंदर रैली काफी देर बाद देखने को मिली। 3-2 और काफी आक्रामक खेल का प्रदर्शन यहां पर करते हुए खास करके जस मोदी। पहला मैच में ऐसा लग रहा था कि गेम के अंदर में तो शायद पिछड़ जाएगी, मगर जिस तरह से उन्होंने वापसी की उनका आत्मविश्वास काफी बढ़ा हुआ और दूसरे मैच में 2-4 से पिछड़ते हुए अंकित बोस। Ankit Bose. Good rally. Oh, unlucky. Net forward. But then the rally was one of the best we have seen. Look at that. 2-5. Ankit Bose, Adamas University. Good back and serve. Righting it quickly, moved his left to go for that inside out forehand. But hitting it into the net. Now it's a 6-2. Judge Modi. That should be put away, yes. 6-3. There is so much of time and they had enough time to look at where to go. That an overkill. 6-3. Oh, superb. 3-7. What a control. Well in position there. Judge Modi. Come with that powerful forehand. See, that is a good toss, good serve. And how quickly he got into the position. Moved his left, came with the forehand. Oh, lovely rally. 3-8. Ankit was over anxious to close at the point. There it is. Quickly, when he moved to the backhand from forehand, the grip control became a bit of a problem there.
3-8. 8-4. This is a good point. More of an unforced error from Josh Modi racket. Look at that. He was in the right position, maybe caught in 2 minds where to go for. Put it into the net. Still 8-4. Josh Modi. Fantastic work here from Ankit Bose. Got into the position, came with that. See that small little good rally. And there the point comes. Went with that inside out. Here it's absolutely unforced because just Amit Modi wanted to close it out. That short rally making an unforced error there. Ankit Bose, good serve. 6-9. Oh, see that change in the angle. Now, then see here. That is where suddenly put it on the deep on the forehand. And the error on the return there. 6-9. Very deceptive serve. But not able to capitalize on that. And just शुरुआत बहुत लाजवाब की थी इन्होंने पहले गेम में, मगर जो उनका एंडिंग था वो कहीं थोड़ी सी चूक हो गई और उसका पूरा फायदा जस मोदी ने उठाया पहले गेम में. उसके बाद दूसरे गेम में तो उन्होंने बिल्कुल भी मौका या अवसर नहीं दिया अंकित बॉस को यूनिवर्सिटी के. और पहले 2 गेम अगर कोई भी खिलाड़ी जीत लेता है तो तीसरा गेम जब शुरू होती है तो उसको हावी होना काफ़ी स्वाभाविक है. अपनी पहचान जस मोदी ने अपने खेल के द्वारा यहाँ पर दिखलाया कि इस तरह का उच्च श्रेणी का खेल हमारे को यहाँ देखने को मिला है. दोनों ही खिलाड़ी अंकित बॉस अदमास यूनिवर्सिटी के और जस मोदी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के. सर्विस फॉर अंकित बॉस और यहाँ पर अच्छे सर्विस मगर रिटर्न उतना अच्छा नहीं और इस तरह से अपना खाता खोला अंकित बॉस फेसिंग द कैमरा. सर्विस लगातार अपनी सर्विस में बदलाव करते हुए बाएं दाएं, लेकिन सफलता भी उनको मिली है. कोई भी खिलाड़ी अगर सर्विस पर अंक बटोरता है या अर्जित करता है तो उस खिलाड़ी की तारीफ जरूर करनी पड़ेगी. अब इस तरह से 2-1 अब पहली बार खाता खोला जस मोदी ने. अब सर्विस फॉर जस मोदी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के. 3-1. फॉरहैंड टॉप स्पिन मगर सफलता उनको नहीं मिली. जस मोदी आप देख सकते हैं डीप ब्लू जर्सी में. अब सर्विस फॉर अंकित बॉस. can he make a good comeback? 4-1. That is a pretty good deceptive serve. 4-1. And again showing that aggression right on the forehand down the line. Going up 5. 4 अंकों का फासला है तो ये इतना आसान नहीं होगा अंकित बॉस के लिए भरपाई करने के लिए, क्योंकि पहले 2 गेम जीतने के बाद जस मोदी का जिस तरह का प्रदर्शन रहा है अंकित बॉस के लिए इतना आसान नहीं होगा इस मैच में वापसी करना. Obviously he is down love 2 in game score, so definitely the pressure on him, but nothing you can say till the last point is played. See, this is an unforced error on the backhand from Josh Modi. Look at that. Ankit Sabe. Beautifully changed the angle, but then couldn't continue that momentum. There it is, change of angle. But then this time just trying to go for the forehand down the line, hitting it wide. 7-2, Ankit Bose. Losing the first 2 games. Superb work here. It was a good serve right on the backhand. And then had found that opening there. Quickly moved in with that forehand winner. There it is. इसी तरह का प्रदर्शन लगातार करना पड़ेगा अंकित बोस को, क्योंकि एक
अंक से कुछ नहीं होने वाला, फासला काफ़ी लंबा है 5 अंकों का, तो मगर उनमें काबिलियत है, इसमें कोई शक नहीं है। और टेक्निकली काफ़ी साउंड है, टेम्परामेंट भी उनका काफ़ी अच्छा है। मगर यहाँ पर दोनों टैलेंटेड खिलाड़ियों की यह परीक्षा एक बार आप देखिए फिर से, पहले बाएं दाएं ज़बरदस्त मुकाबला, और जिस तरह से वो कम्पीट कर रहे हैं, कंटेस्ट कर रहे हैं, जस मोदी को इतना आसानी से वो तीसरे गेम में जीतने नहीं देंगे। Absolutely, the last point was pretty interesting. Hurrying up that backhand, hitting it long. It is still 9-4. Just 2 points away from wrapping up this game. Can he come with a good serve and follow up on the rally? 5-9. I think the returners have made all the difference here in this last point. Have a look at that. And that is where the rhythm was lost for Ankit Bose. 5-9, just Modi serving. Oh, lovely rally, but then you for this, both the players going with some powerful returns. And this is a perfect placement. The backhand powerful shot there. 6-9. This again a powerful forehand down the line from Ankit Bose. That is setting up 4 game points. Look at that power on that forehand. And that is where the error from Just Modi racket. 10-6. 10-7. This is a bit unlucky for Just Modi. Have a look at that. Net card can go in anybody's favor. Now it is 10-7. Still a 3 game points in favor of Ankit Bose. Can he wrap it up? He does it. 11-7. Perfect change in the angle on the backhand. Taking it at 11-7. What a comeback. Look at the last point there. जबरदस्त प्रदर्शन, कोई तारीफ करनी पड़ेगी इस खिलाड़ी की, जिस तरह से उन्होंने तीसरे जीते हैं। वो चाहेंगे कि वो जीते, लेकिन पलड़ा अभी भी उनका भारी है। मगर दूसरी तरफ अंकित बोस के पास एक सुनहरा मौका है, सुनहरा अवसर है। जिस तरह से उन्होंने तीसरे गेम में वापसी की है, चौथे गेम में भी अगर वो अपना प्रदर्शन इसी तरह बनाए रखे और कड़ा मुकाबला करें तो सब कुछ संभव हो सकता है। सर्विस फॉर जस्ट मोदी, और पहली गलती जैसा कि हमने देखा, फोरहैंड और बैकहैंड स्मैश रिटर्न उतनी कंफर्टेबल नहीं है जस्ट मोदी। Late. फिर से नेट, दोनों खिलाड़ी Late. Love one. लगातार दूसरी बार सर्विस फॉर जस्ट मोदी, और एक बार फिर से थोड़ा सा कंट्रोल, 2-0 से बढ़त अंकित बोस अदामस यूनिवर्सिटी के चौथे गेम में। पहले 2 गेम हारने के बाद तीसरे में शानदार वापसी, और अब चौथे गेम में भी अद्भुत प्रदर्शन उनका। ये चौथा गेम 3-0 से आगे, तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह का फाउंडेशन नींव रखी है उन्होंने इस चौथे गेम में। और जो मुकाबला काफी संघर्षपूर्ण, प्रयत्न और कोशिश लगातार जारी है यहाँ पर। और ये बहुत खूबसूरत फोरहैंड ड्राइव, कोई जवाब नहीं यहाँ पर जस्ट मोदी का। इसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद उनसे की जा सकती है। और अब सर्विस फॉर जस्ट मोदी 4-0-0-4, और ये पहली बार सर्विस को रिटर्न नहीं कर पाए और अपना खाता खोला चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के जस्ट मोदी ने 1-4 को सर्विस करते हुए। एक बार फिर से दूसरी गलती यहाँ पर, और अब 2-4। दोनों खिलाड़ी 3 गेम खेल चुके हैं, तो काफी एक दूसरे के बारे में थोड़ा बहुत उनका एक अपना अनुभव है। दोनों खिलाड़ी, जस्ट मोदी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के 106 नंबर जर्सी, और यहाँ पे देखिए 104 अंकित बॉस अदामत यूनिवर्सिटी के। आपके स्क्रीन पर जस्ट मोदी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के पहले 2 गेम जीते और तीसरा उन्होंने हार गए।
मगर वापसी आप देखिए यहाँ पर अंकित बॉस की तीसरे गेम में और चौथे गेम में भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन उनका। Oh, that is a powerful forehand from Jash Modi. Look at that. So much of power on that. And reacting to it, the base spectacle. Ankit was a little late on that and taken a time out now. And this is understandable. दोनों खिलाड़ी 3-4 के लिए काफी महत्वपूर्ण मुकाबला है, खास करके अंकित बॉस के लिए, क्योंकि पहले 2 गेम वो हार चुके हैं और तीसरे में अच्छी वापसी की है। चौथे में वो जरूर चाहेंगे कि वो अपनी इस बढ़त को बनाए रखे और तब 2-2 बराबरी पे रहेंगे दोनों खिलाड़ी। मगर दूसरी तरफ जस मोदी 3 में से 2 मैच जीतने के बाद चौथा मैच, हालांकि अंकों का फासला दोनों खिलाड़ी के बीच में ज्यादा नहीं है, 3-4 से पिछड़ रहे हैं, लेकिन जिस तरह का लाजवाब खास करके फोरहैंड ड्राइव, बैकहैंड ड्राइव, टॉप स्पिन, बैक स्पिन, फोरहैंड पुश, बैकहैंड और तेज तर्रार और जो अपनी सर्विस में बदलाव जो किया है अंकित बोस ने समय समय पे, लाजवाब प्रदर्शन उनका तीसरे और चौथे गेम में। और जस मोदी जैसा कि वो जानते हैं कि कहीं न कहीं कुछ चूक हो रही है उनसे, उसकी भरपाई उनको जरूर करना। सर्विस फॉर अंकित बॉस अदामस यूनिवर्सिटी, अच्छी सर्विस लेकिन नेट पे। एम्पायर नंबर 1 निर्दोष कुमार दिल्ली के और एम्पायर नंबर 2 क्षितिज कुमार रे उड़ीसा के। इस मैच का संचालन करते हुए मेंस टीम्स ग्रुप डी राउंड 2 मैच नंबर 2 इस वक्त चल रहा है टेबल नंबर 1 पर। आज दूसरा दिन है चौथे संस्करण खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023, जिसका सीधा प्रसारण आप डीडी स्पोर्ट्स पर तमिलनाडु फुके इंडोर स्टेडियम चार्जिगल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गुवाहाटी से देख रहे हैं। और अब जस मोदी के सर्विस अपनी ही सर्विस पर रिटर्न नहीं कर पाए और अंक गवा दिया। 7-3 पर सर्विस करेंगे अब अंकित बॉस अदामस यूनिवर्सिटी के। बढ़िया वापसी तीसरे गेम और चौथे गेम में भी अद्भुत प्रदर्शन उनका, मगर कहीं कहीं ये चूक कर जाते हैं और उसके काफी 7-4 अभी भी 3 अंकों का फासला दोनों खिलाड़ियों के बीच में। काफी बदलाव उनके खेल में हमने देखा है, खास करके सर्विस पे बैक हैंड पर ढकेलने की कोशिश और उनको सफलता भी मिली। और इस तरह से अब ये टाइम आउट लिया है जस मोदी। जैसा कि हमने कहा है कि बेस्ट ऑफ द 5 में पहले 3 मुकाबले, 2 मुकाबले जस मोदी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने आसानी से जीता, मगर तीसरे मुकाबले में बहुत बढ़िया वापसी की अंकित मोदी अदामस यूनिवर्सिटी के। और अब चौथे मुकाबले में लगभग लीड बनाए हुए अंकित बॉस 8-4 से आगे, मगर सर्विस यहाँ पर जस मोदी की। एक बार फिर से जरूरत से ज्यादा आक्रामक खेलने की कोशिश, एक अंक गवाटे 9-4, 4-9 पर सर्विस करते हुए 5 अंक से पिछड़ते हुए थोड़े से दबाव में और बहुत बढ़िया यहाँ पर पीछे ढकेला और ये मुफ्त में एक अंक मिल गया यहाँ पर अंकित बॉस को। Yes, but he immediately apologized because the ball hit the edge of the table and went off. But that sets up 6 game points as well as Ankit prepares to serve 10-4. In a hurry to close it out on a forehand crosscourt, putting it into the net. Still 5 game points in his pocket. Can he convert them early? That is what his team should be looking forward to as he prepares to serve 10-5. Good serve the forehand. Oh, there it is. 11-5. With that return from Jash Modi going long. Ankit Bose is wrapping it up in 11-5. Look at the last point here. Deep return and then this backhand from Jash Modi going long. What a match it has been, taking on to the decider. खेल में जो पैनापन जो हमने को देखने को मिला दोनों खिलाड़ियों के, पहले 4 गेम में पहले 2 गेम जस मोदी ने जीते, हालांकि काफी क्लोज मुकाबला था 12-10, 11-6, लेकिन उसके बाद जो कमबैक की है अंकित मोदी अदामस यूनिवर्सिटी के 11-7 और 11-5,
तो जस्ट मोदी को सोचना पड़ गया है कि अब क्या किया जाए 5वें और अंतिम मुकाबले में, क्योंकि यह निर्णय करेगा कि कौन विजेता होगा। 5 में से दोनों खिलाड़ियों ने 2-2 गेम जीत लिए हैं। पहले 2 चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने और उसके बाद 2 आदमास यूनिवर्सिटी ने। तो अब ये 5वां और अंतिम निर्णय, और जैसा कि हम बता दें कि एम्पायर्स इस मेंस टीम्स का ग्रुप डी राउंड 2 मैच नंबर 2 इस वक्त जो चल रहा है टेबल नंबर 1 में। आज दूसरा दिन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 जिसका सीधा प्रसारण आप डीडी स्पोर्ट्स टर्मिनल ऑफ इंडोर स्टेडियम्स और जी वर्मा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गुवाहाटी से आप देख रहे हैं। और अब ये 5वां गेम की शुरुआत अंकित बोस सर्व कर रहे हैं आदमास यूनिवर्सिटी के। What a rally. But in the end, Ankit was not able to control that forehand, not closing the face of the racket in time, hitting it long. There is preparing to serve. This is what we call it as a swift game of table tennis. Both the players showing some aggression. Look at this. Trying to close it out. Very good serve there. A lot of spin. And going up 3-love in the decider game. Love 4. I think yet again going on the backhand cross court, probably he would have been better off going for the backhand down the line. Ankit Bose, look at that last point. I think he just, went for it. That was a relentless attack from Jas Modi. In complete command of that short rally, picking up that point comfortably. Have a look at that last rally. Tremendous power on that. And that is where the forehand going well beyond the table. 5-love. Good 5-point formidable lead. जबरदस्त शुरुआत जस मोदी की, 5-0 से आगे और धमाकेदार खेल का प्रदर्शन इस वक्त। और उन्होंने दर्शा दिया है कि उनमें से ये 5वां मुकाबला बिल्कुल अलग होगा। 6 love. और अब तक का जो प्रदर्शन जस मोदी ने किया है पहले 4 गेम में और अब 5वें में, बिल्कुल पूरा चेंज आप देखने को मिलेगा। कोई कहीं भी कोई अवसर या मौका वो नहीं दे रहे हैं अंकित बॉस को, चाहे फोरहैंड हो, बैकहैंड हो, सर्विस हो। सर्विस फॉर जस मोदी। एक बार लगातार पहली बार 6-0 से आगे, इतना लंबा फासला एक तरफा 6-0 से आगे सर्विस करते हुए जस मोदी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के एक बार फिर से। और ये पहली बार आप खाता खोला है अंकित बॉस का आदमास यूनिवर्सिटी के एक साथ। Very big lead here. 7-1 for Jas Modi. And as Ankit serves at 1-7. There's a slight movement behind. So the umpire just telling him to stop this serve. Now he's ready to serve Ankit Bose. This time the backhand not getting that luck on the net court. 2-7. That fortune, that luck definitely Ankit Bose needs at this point. Oh, lovely forehand from Ankit. Quickly changing the pace in that short rally. And that is where, look at that pace. That is where Josh is putting it beyond the table. Still 7-3 lead. Completely not actually anticipating that. Possibly he thought that the ball will miss the edge of the table. There it is. That's a little short, slow to react. 3-9. Quickly picking up points, racing to win this particular match. Look at that, so much of time and power behind that forehand. 3-9. 4-9. This time good comeback point here for Ankit
Bose was fully prepared for the backhand slice return. Good backhand serve. 10-4. Return was, see, so much control when you're smothering the spin of that serve. He didn't anticipate. Ankit Bose put it into the net. Still 6 game points or match points as well. And he didn't need so much of them. Wrapping it up at 11-4. What a match it has been. Stretching to the decider set. And in the decider set, winning it at, that is the last point here. Winning it at 11-4. Fantastic contest it is. And the customary shake of hands happening with the squad, with umpires. And definitely a lovely match here when it is extended to so much. But on the 5th game, there is a lot of domination on one side. That is also we had seen. But in the end, overall a good match to watch. And as the players just leaving the court after the customary handshake, let's have a look at the highlights of this particular match. जस मोदी ने इस पांचों गेम में दिखा दिया कि लीड कैसे ली जाती है और दूसरी तरफ अंकित बॉस ने ये दिखा दिया कि कमबैक कैसे किया जाता है। मगर दोनों ही खिलाड़ियों का लाजवाब प्रदर्शन, काफी प्रभावशाली और प्रतिभावान खिलाड़ी अपने अपने यूनिवर्सिटी के, आदामास यूनिवर्सिटी के अंकित बॉस और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के जस मोदी। और अब हम चलते हैं, ये देखिए हाइलाइट्स। पहले 2 मुकाबले जस मोदी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीते और उसके बाद अंकित बोस ने बहुत बढ़िया कमबैक किया। मगर तीसरे मुकाबले की जिस तरह की फाउंडेशन जस मोदी ने रखी, उनको बिल्कुल भी अवसर या मौका नहीं दिया अंकित बोस को कि वो कमबैक कर सके। हालांकि प्रयास भरपूर किया था उन्होंने, मगर तब तक काफी देर हो चुकी थी और अंतिम लड़ाई जो जीतता है वही विजेता होता है। तो बेस्ट ऑफ द 5 में ये पहले 2 मैच चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, दूसरे 2 मैच आदामास यूनिवर्सिटी, लेकिन अंतिम और जो निर्णायक गेम था वो जस मोदी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीता। तो अब कमेंट्री बॉक्स में हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बदलाव। मेरे साथी कमेंटेटर मौर्य जी और पांडे जी, हिंदी के अंदर में उनका स्वागत है। Thank you, Anil ji. It's quite endearing to share box with you. And what a match, Vikas. Watching it from the stands, it was a delight to be in this witnessing, playing these top athletes live. And we watched just the first 5-gamer of the day between Ankit Bose of Admas University and Jash Modi. It was a toughly fought between Admas University and Chandigarh University, but Chandigarh University living up to its reputation and keeping its winning trot undefeated so far, and only 1 match away from sealing their berth in the next round. Mind you, we are bringing you live action on Doordarshan of these Group B round 2 matches. This is day 2 of Khelo India University Games here in Guwahati, and table tennis is only getting better and better with every passing shot, I must say that, because it's so exciting. Even outside the commentary box, we don't feel like taking a break because the action is absolutely breathtaking. What a score that was. Obviously Jash Modi looked quite a favorite, but hats off to Ankit Bose also winning that second, third and fourth game with 11-7 and 11-5. Check it out in the highlights now. That's in blue jerseys, Jash Modi. He's got a game to envy, frankly speaking. The way he charges the net, the way he charges the table, then he goes backwards, creates that space for those sharp cross. And now it's time that we quickly get back to the live action on table number 1, in which Abhi Roy and Chinmay Somaya are taking on to each other at table number 1. After the highlights, we'll be straight away taking you to the action. There you see, already at 1-1. That is Abhi Roy from Admas University in red, and Chinmay Somaya in blue jersey representing CU. Because
Very good afternoon to you, and what a match we saw. But now it's up to Abhi Roy to keep the hopes of Admas alive, because Chandigarh University beat the women's event, and now in the men's event they've been absolutely unstoppable. बिल्कुल, और अभी भी बहुत कुछ बिगड़ा नहीं है. बेस्ट ऑफ 5 का ये मुकाबला है, और अगर शुरुआती 2 मुकाबले हारने के बाद भी अगर अगले 2 मुकाबले जीतने में कामयाब रही, तो फिर डिसाइडर में ये मुकाबला जाएगा रिवर्स सिंगल्स के अंदर. फिलहाल एक बार फिर से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जिस तरीके से पिछले दोनों मुकाबले में प्रदर्शन किया है, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चिन्मया आपको लाल रंग की पोशाक में नजर आएंगे. अभी रॉय जो कि एडवांस यूनिवर्सिटी के हैं, जबकि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के चिन्मया वो नीली रंग की जर्सी में 109 नंबर की बिब. और ये लेफ्ट हैंड वर्सेस राइट हैंड का कॉम्बिनेशन इस मुकाबले के अंदर. यहाँ पर बहुत ट्रिकी और क्या खूबसूरती के साथ वो क्रॉस कोर्ट पर प्रयास था जिससे अंक मिला. 3-7 की सर्विस और वाइड गिरेगी, इससे निराश होंगे अभी रॉय. एक अच्छे अंक के साथ वापसी जरूर की थी, लेकिन एक बार फिर से एक गिफ्ट किया अंक. सर्विस अभी रॉय की, अच्छा स्मैश, और बिल्कुल कंट्रोल में नहीं दिखे रिटर्न के लिए अभी रॉय. ताकत और गति के साथ जब वो स्मैश आया तो बैकहैंड पर रिटर्न सही नहीं हुआ. गेम पॉइंट पर सर्व कर रहे थे, और अभी भी हालांकि गेम पॉइंट है. 6 गेम पॉइंट है चिन्मया के पास, और लेट दोबारा सर्विस करनी पड़ेगी अभी रॉय की. थोड़ा सा ज्यादा उत्साहित, और वो बैकहैंड से रिटर्न जो है वो वाइड गिरता हुआ. इस बार गलती हुई अभी रॉय से, और जिसने पहले गेम में उनकी हार सुनिश्चित कर दी. 11-5 से पहला गेम जीता है चिन्मया ने, जो कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के हैं. और यहाँ पर बहुत कुछ करने की जरूरत होगी अभी रॉय को. अभी रॉय एडवांस यूनिवर्सिटी के, और याद रखना होगा कि शुरुआती दोनों मुकाबले जो थे वो बड़ी आसानी के साथ जीते हैं. खासतौर से पहले मुकाबले की बात करें तो एक तरफा रहा था, 3 गेम में ही जीत हासिल की थी. उसके बाद से पिछला मुकाबला अनिकेत बॉस ने एक अच्छा लड़ा, लेकिन उसके बाद जश मोदी वहां भी 3-2 से विजयी रहे थे. और उसके बाद से यहाँ दूसरे गेम की शुरुआत हो चुकी है, तभी चिन्मया आगे चल रहे हैं, और कुछ अलग करने की ज़रूरत है अभी रॉय को. यहाँ पर देखिए ये रिटर्न, ऐसे रिटर्न जब टेबल से बाहर गिरेंगी तो आपका दिन ही खराब माना जा सकता है. 2-1 से इस गेम के अंदर भी लीड कर रहे हैं. यहाँ रिटर्न जाके नेट से टकराया है, ये बिल्कुल गंवारा नहीं होगा अभी रॉय के लिए. सर्विस कर रहे हैं फिलहाल, और अंक दिया गया वहां पर चिन्मया को. नेट का एडवांटेज मिलता हुआ, थोड़ी सी गफलत वहां नेट पे हलचल हुई और उसका फायदा मिला. और रिटर्न, एक बार फिर से रिटर्न पे लगातार अंक गंवा रहे हैं अभी रॉय. इस चीज का ध्यान रखना होगा, इस बात का ध्यान रखना होगा. इतना स्पेस उनके पास है, फिर भी वो रिटर्न सही जगह प्लेस नहीं कर पा रहे हैं. यहाँ इस बार देखिए किस तरीके से वो जो फोरहैंड लगाया वो बाहर गिरा था टेबल के. 3-6. Chinmay Somaya, obviously, after having won that opening game at 11-5, has just showed his intentions loud and clear. Mind you, he is another very, very bright prospect. We've been talking about all day long about Chandigarh University and how talented and deep their pool is. So Chinmay Somaya is also one of the brightest prospects as far as the overall Indian table tennis circuit is concerned. Chinmay comes from Mumbai, and last year also he won the gold medal at
men's single in Maharashtra State Olympics. Now studying in this university. 4, 8. Is representing Chandigarh University and comes in as a favorite. He had a superb run at the National Games also last year in Goa, and 4, 9. we were there because we've seen this guy doing really well, and he's been impeccably consistent. Ten, That is four. one of the most endearing thing about this bright talent, Chinmay Somaya. And even in this game number 2 at 10-4, he's serving. And also the fact that he's a left-hander, it makes his game even more attractive. It really don't understand what is with southpaws, even be it in cricket, be it in table tennis, be it in lawn tennis. The kind of I believe Rafael Nadal is also a southpaw. So the kind of swing, the arm swing they get, it makes it really unpredictable and almost cuts down on the time to react for your opponent. 2, 1. Now with the 1-1 in game number 3, it is now or never for Abhi Roy if he wants to 1, 3. keep the possibility or chances of Admas University alive in this men's event. Mind you, we are bringing you live action of round 2 in Group 4. B between Chandigarh University and Admas University. Admas University already having lost their matches in straight games in women's event. So all hopes are on the boys. Let's see how he fares. As of now, in game number 3, Abhi Roy is looking 4, good. 3. यकीनन पहले 2 गेम को जिस तरीके से उन्होंने गंवाया है उसके बाद बेहतर नज़र आ रहे हैं, और एक मजे हुए खिलाड़ी की यही पहचान होती है। इस बार ये रिटर्न देखिए, खूबसूरती से वो प्लेस किया था, लेकिन वो नेट पे जो एडवांटेज मिलना चाहिए था वो मिला नहीं अभी रॉय को। एक बार फिर से रिटर्न में गड़बड़ी होती हुई और वापसी ही नहीं, अब बढ़त पर जा पहुंचे हैं चिन्मया। जिस कलर से वापसी की उन्होंने वो काबिल तारीफ है। 2 अंकों की बढ़त इस समय, और दोनों गेम शुरुआती जीत के बाद अब वो धीरे धीरे इस मुकाबले को और इस टाई को सील करने के तरफ बढ़ रहे हैं। इस बार उनका ये बैकहैंड रिटर्न प्लेस नहीं कर पाए सही जगह पे। क्रॉस कोर्ट के लिए गए थे, लेकिन वो क्रॉस कोर्ट से थोड़ा सा वाइड मार बैठे। 7, 5. इस बार थोड़ी सी निराशा, हालांकि अभी भी 2 अंकों का जो फासला है वो बना हुआ है। चिन्मया जानते हैं कि उन्हें सिर्फ अब इस मुकाबले को जीतने के लिए कुछ अतिरिक्त करने की ज़रूरत नहीं है। जिस गति से वो खेल रहे हैं उस गति से अगर खेलते रहें और कुछ बड़ी गलतियां नहीं की तो आसान होगा उनके लिए मुकाबले को अपने नाम करने में। एक और अंक और एक और अनफोर्स्ड एरर यहाँ पर आता हुआ अभी रॉय की तरफ से। अदमास यूनिवर्सिटी अब धीरे धीरे हार की तरफ बढ़ रही है। वहीं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो कि प्रबल दावेदार है इस इवेंट के अंदर, वो एक आसान जीत की तरफ अग्रसर। एक बार और बाहर जाके टकराई और अब मैच पॉइंट और यहीं से सफर समाप्त होगा। क्या थोड़ा इंतजार किया, हल्के से सॉफ्ट टचेस देखने को मिल रहे हैं, समय ले रहे हैं दोनों, और अच्छी रैली चलती हुई टचेस, और बिल्कुल देखिए नेट पर पहुंचे, एक अच्छी रैली देखने को मिली। यकीनन काफी पिछड़े हुए नजर आए हैं, लेकिन ये गलती इस बात का सबूत कि अब इस मुकाबले में एडमास यूनिवर्सिटी के लिए कुछ बचा नहीं है। तीसरा लगातार मुकाबला जीतते हुए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने इस टाई को अपने नाम किया है। दिव्यांश श्रीवास्तव और जश मोदी के बाद अब चिन्मया सोमैया ने इस मुकाबले को अपने नाम किया है, और अभी रॉय को 3 गेम तक चले सीधे मुकाबले में 11-5, 11-4 और 11-6 से परास्त किया है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए एक आसान जीत अक्षय। Absolutely, and as we had predicted, as things had looked,
You can see it in the highlights of this last match between Abir Roy and Chinmay Somaya, that how single-handedly it was dominated by Chinmay Somaya winning this contest. Look at that response in that backhand, almost on his chest, almost towards his neck, but good control for him. Such a lanky player, but I really like the way he moves, very grounded and very smooth transfer of weights from left to right, right to left, and using the corners of the table also beautifully. On that occasion, Abir Roy, look at that serve, but great control from Chinmay Roy with that heavily loaded spin from his backhand. So, as a southpaw, makes it even more attractive. Chinmay Somaya sealing it for CU there in this round number 2. Quite evident from the highlights that it's almost toying with Abir Roy on certain occasions. See, this is what I was talking about. Even in the last shot, when there was opportunity, Abir Roy resisted himself from going all out. And such opportunities you cannot let go if you really want to stay in the contest. It becomes almost impossible for you because you're playing at such a high level. There's a lot on stake there. And if you let go such wide opportunities, so it becomes very, very difficult for you to make any sort of comeback. And Abir Roy on that occasion was totally outclassed by Chinmay Somaya. 11-5, 11-4, 11-6. Simple straight games victory for Chandigarh University as they win their straightforward 3 matches to claim this contest at round number 2 on day 2. In a short while, we will be starting Group D matches of second round, in which University of Madras will be up against University of Calcutta, in which Tharun Shanmugam will be taking on Ronak Mazumdar of Calcutta. We're just still waiting for the players to make their way to table number 1. But it's just the fact that, you know, tennis, table tennis, talking about the overall evolution of table tennis as a sport. It's an Olympic sport, and India is doing exceedingly well, especially in the recent years. The kind of support the players are getting, the response is also getting even better. And just a little while ago, we were talking about, you know, last year also, somewhere around October, 15 table tennis players were sent to China for training by Sports Authority of India. And obviously the kind of exposure you get into these Southeast Asian regions, the facilities, the kind of exposure they get there, and you come back as a better player. And now with the infrastructure at par with the global level, it's only getting better and better with every passing day. बिल्कुल, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि टेबल टेनिस में भारत पिछले कुछ वर्षों से अच्छा कर रहा है और ऐतिहासिक प्रदर्शन भी किया जब ग्वांगझू में एशियन गेम्स के दौरान विमेंस डबल्स में भारत ने कांस्य पदक जीता था। आयिका मुखर्जी एक युवा प्रतिभा और यकीनन उनका वो प्रदर्शन लाजवाब रहा था। और बड़े नाम देश में जनता शरद कमल, भारतीय पैडलर की अगर बात करें, यकीनन ऐसी घड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं ये सितारे। और यूनिवर्सिटी in yellow, University of Madras, and will be taking on Ronak Mazumdar in jersey blue for University of Calcutta.
as Tarun in yellow jersey, as you can see. Matches here in the men's event as Madras University take on the Calcutta University. Will be interesting to shift focus from CU and other cities down to Calcutta and city of Madras. Good response there. Nice opening the account straight away. Ronak Mazumdar looking good. With 1 love. Oh, nice response there on that occasion from Tarun. So it's going to be an evenly contested bout, if we can call it. The tough opponent, but that unforced error from Tarun, giving another opportunity to Ronak Mazumdar in a blue jersey from University of Calcutta. जबरदस्त वो स्मैश लगाया. देखिए तरुण का अब स्मैश बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आया जिस गति के साथ वो निकला था. 4 के लीड पर है. 6 रिटर्न तो कर रहे हैं लेकिन इस बार रिटर्न जाके नेट से टकराती हुई रौनक मजूमदार की. रौनक मजूमदार के लिए थोड़ा सा ये है कि आप 5-1 से रौनक मजूमदार इस समय लीड कर रहे हैं और उनके पेस के खिलाफ थोड़ा सा संभल के खेलने की जरूरत है तरुण शानमुगम को. और इस बात का ध्यान रखने की जरूरत क्योंकि 6-1 की बढ़त हाफवे तक बहुत बड़ी होती है अक्षर. Oh, totally. And if we look at that first 5-6 minutes of this game, already 7-1 up in this opening game. Ronak Mazumdar looking really, really dangerous. The sharp 4 drives and the forehand. Look at that cross table inside out. Look at that placement. Even if Tarun was able to connect it, but never slowing down. Ronak Mazumdar at 8-1. He's only looking better and better with every passing shot. Just a rare mistake on that last occasion. Couldn't keep it onto the table. Allows a little margin for S. Tarun. As the applause around the stadium tells you the story of great forehand. His hallmark is the trademark shot, Ronak Mazumdar. It's almost like watching it in replay. What a beautiful size it is. Look at that in replay there. Brilliant forehand, inside out, across the table. 9-2, another strong drive down the table. 9-3. What a delightful player he is, turned out to be. At 9-3, he is only a couple of points away from sealing this game in no time. It's almost like you're just watching the warm-up of these two players and suddenly he's got 7 game points now. Ronak Mazumdar at 10-3. I'm sure he will go for history. Oh, brilliant response on that occasion from Tarun as well. At 4-10, Tarun is looking good, but Ronak Mazumdar has been too good. A rare mistake hitting that one into the net, Ronak Mazumdar. Let's see. Oh, beautiful change of the pace. Also a bit of a side spin on it. And good response from Tarun as well. At 10-6. 11-6. So best of that, he seals it comfortably in no time. At 11-6, look at the applause all around the stadium. At 11-6, Ronak Mazumdar has looked absolutely sensational. Because look at that in the highlights, how ferociously fast he has been. And changing the pace with those soft, delicate backhands also at will. So that tells you how dominant he was throughout the game. बिल्कुल. और एक पल के लिए आपको देखकर लगेगा कि ये हाईलाइट जो है वो आपकी फुटेज को निकाल के बनाई गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. ये हर एक पॉइंट है जो आपको दिखाया जा रहा है और कितनी खूबसूरती के साथ और कितने कामयाबी के साथ उस अंक को हासिल किया है वो दिखा रहा है, दर्शा रहा है. जो उनके स्मैशेस थे, जो फोरहैंड पे जो उन्होंने स्मैश लगाए वो काबिल तारीफ. और उस गति को मैच करना तरुण शानमुगम के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है. और इसी बात को समझाते हुए उनके कोच देशभक्त तनु राम फुकाम
इंडोर स्टेडियम में इस समय ये मुकाबला खेला जा रहा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के अंदर मेंस टीम डी राउंड 2 का ये मुकाबला, Second जहां game. पर आप डीडी स्पोर्ट्स के University of जरिए Maharashtra, ये सीधा प्रसारण देख रहे हैं, जबकि यूट्यूब पर भी आप प्रसार भारती के चैनल पर इस मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। चलिए दूसरे गेम की शुरुआत हो चुकी है और दूसरे गेम की शुरुआत इस बार हुई है थरुण शानमुगम के 1 अंक के साथ। Looking at that last open-faced forehand from brilliant cross-court there, using the full length of the diagonal on the table, and solid forehand from Ronak Mazumdar as he levels the score at 1-1. Nice tender looking soft service. Now the southpaw getting into the gear. Tharun Shanmugam showing that it's not going to be that easy for you, Ronak. I am here to play as well. Net. 1-2. Straight away appeal and the hand goes up. It will be a let and have to be served again. Tharun is trying to do, which is not a bad idea. He's trying to slow down the rally and create that right angle. But what happens is that Ronak Mazumdar is so fast that he gets into a very, very strong position and goes for those fast, cautious drives that it becomes very difficult for Tharun, because even if he's able to connect, those back-to-back ferocious drives from Ronak makes it life difficult. Another one popping out of the table as Ronak levels the score at 3-3. अच्छी वापसी की है जरूर थरुण शानमुगम ने, लेकिन वो गति को कैसे मैच करेंगे जिस गति पे खेल रहे हैं। और देखिए उसी की बात कर रहे थे हम, जब वो रिटर्न आता है उस गति पर मैच करना बहुत ज़रूरी। जब ब्लॉक आता है उस पे किस तरीके से आप चॉक करते हैं ये भी अहम हो जाता है। इस मौके पर थोड़ा सा वो एंटीसिपेशन में गलती, और रौनक मजुमदार इस बार एक अंक कंसीड करते हुए 4-4 पर मुकाबला। इस बार नेट पर गलती, बैकहैंड रिटर्न जाके सीधे नेट से टकराई, और यकीनन थरुण शानमुगम ने जो वापसी की है उनको इस पर कायम रखना होगा और इस मोमेंटम को शिफ्ट नहीं होने देना होगा। That's right, very important. Tharun keeps his momentum and he does so in style. Look at that ferocious forehand right into the center of the table. And even though Ronak was in good position there, but that return hitting the net, look at that, not afraid to take his chances, and that wide angle just getting the hold of the top of the net. Another hunt post error from Ronak Mazumdar, and the service is also with Tharun Shanmugam. Oh, nicely done, but not on the table. Not on the table. Is this the moment? Is this the opening Tharun Shanmugam was looking for as he leads for the first time in this game, in this contest, in fact, between Ronak Mazumdar and himself. Now, with that, look at that beautiful change of pace there. Lot of spin loaded into that forehand, and committing Tharun Shanmugam on that occasion a little too early in his shot. He'll be disappointed. He'll be disappointed, Tharun. Not like that. It's almost like Ronak is toying with him at will. Sometimes coming up with these ferocious drives. And oh, look at that! Look at that! Beautiful forehand down the sideline. What a delight it is to watch this young man, Ronak Mazumdar, because that was a shot I can watch all day long on a replay. 7-9. बिल्कुल, और खोल के रख दिया एकदम से, और यही खूबसूरती होती है साउथ पॉ खिलाड़ी की। और देखिए कितनी जल्दी वापसी करते हुए रौनक मजुमदार अपनी ख्याति और अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से समय प्रदर्शन करते हुए, क्या जबरदस्त स्मैश आया था, उसके बाद से रिटर्न जाके नेट से टकराती हुई, यानी फिर से एक बार वही कहानी। और अब फिर से गेम पॉइंट पर सर्व करेंगे। 3 गेम पॉइंट है मजुमदार के पास से, और पहला गेम पॉइंट तो जैसे तैसे बच गया है। और थरुण शानमुगम
अभी भी हालांकि 2 अंक उन्हें कैसे भी बचाने होंगे। नेट पर फिर से वही गफलत, फिर से वही गलती और दूसरा गेम भी नाम जाता हुआ रौनक मजुमदार के। अच्छी वापसी की थरुण शानमुगम ने, लेकिन इसके बावजूद उन्हें इस गेम को भी गंवाना पड़ा। Because I cannot believe that. I cannot believe that Tharun let it slip out of his hand. He was looking so good. Just when I said that for the first time he was leading in this contest, he was up by 2 points and he let that advantage slip out of his hand so comfortably. We understand that Ronak is looking in top form. It's very difficult. He's almost unstoppable. But there were touches of brilliance from Tharun as well. If he's not made those unforced errors, see that how it planned out in this game number 2. Nice cheeky serve from Tharun as well. He's got a good serve. It's not that he's a bad player, but you know, leaning too much, not being able to judge that top spin from Ronak Mazumdar has been his weakness, and he's almost like made it like he's toying with him. That spin basically is the most deceptive part of Ronak's game, and that's what been the thorn in his heel, if I may call it, Tharun Shanmugam. Well, what had happened in the past, he's down 2 games, but he can still make a comeback. It's never too late in the day as Ronak serves for game number 3. अच्छा रिटर्न, लेकिन इस बार नेट पर फंसी वो गेंद और इस बार एडवांटेज मिलता हुआ तरुण को। काफी अच्छी रैली देखने को मिली, पूरा फोर्स जनरेट किया, उसके बाद से वो अंक हाथ लगा था, लेकिन इस बार फिर से एक बार नेट के साथ थोड़ा सा उलझे यहाँ पर रौनक। अग्रेशन, जब भी अग्रेशन दिखाया है उसका थोड़ा सा खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा है, और इस बार मिसटाइम किया, बिल्कुल भी समझ नहीं पाए गेंद की लाइन को, और बिल्कुल वो जो पेस था उससे बीट खाते हुए थरुण शानमुगम। फिर से एक बार नेट से उलझी, बार बार वही गलतियां हो रही हैं, ध्यान देने की जरूरत, प्लेसमेंट सही जा नहीं रही है अभी तक इस गेम के अंदर रौनक मजुमदार के लिए, और इस बार थोड़ा सा फायदा मिलता हुआ। अच्छा रिटर्न का प्रयास था, लेकिन वो टेबल पे जो बाउंस था वो नहीं मिल पाया तरुण का। फिर से एक बार वही जजमेंट में एरर आई और इसकी वजह से वो जो था वो बाहर जाके गिरता हुआ। टेबल का जो डायमेंशन है उसका भरपूर इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। 9 फीट और 5 फीट लंबाई और चौड़ाई का ये टेबल, जिसका पूरा इस्तेमाल करने की जरूरत। और देखिए क्या जबरदस्त स्मैश लगाया फोरहैंड पे, और उसके बाद से वो अंक मिलता हुआ। स्किड करती हुई जब गेंद गई थी वहां संभालना मुश्किल हुआ तरुण के लिए। 4-3 से लीड कर रहे हैं रौनक। प्लेस करना चाहते थे सही जगह पे उसको, लेकिन वो प्लेसमेंट थोड़ी सी वाइड जाके गिरी और इस वजह से वो एक अंक मिलते मिलते रह गया। 4 ऑल। 4-5. Tharun should not let it get to his head as he leads by a slight margin, even though the service is with Ronak, but at 4-5 and that unforced error from Ronak Mazumdar also adds on to the misery. Now it's Tharun's service, and good serve, very close to his body, a lot of spin as well on it, and that's when it was always moving away from Ronak, as you can see. That's why it made it very difficult, even though Ronak tried to play it around the net, but then keeping it onto the table was a bit of a challenge. At 7-4 for the first time in this contest, he's raised the finger, and obviously he's been called net by the umpire. Another
good serve. Oh, brilliant, brilliant. He created that spin, always moving away from it. He pushed Ronak into that forehand, and good response from Tarun as well. No, not like that. You cannot do this all over again. Tarun, you have done the hard work. You did it in the game number 2 as well. Don't let it slip out of your hand in game number 3. Oh, brilliant, brilliant. This has been a hallmark. This has been a trademark shot for Ronak Mazumdar. Inside out, he moves and makes such a good use of his forehand. Very deep into the table. Almost no chance whatsoever for Tarun to give any response whatsoever. वो कहते हैं ना स्टॉक डिलीवरी क्रिकेट की भाषा में, वो स्टॉक इनका ये शॉट है और जिसको अक्सर इस्तेमाल करते हैं। और इस बार हालांकि रिटर्न उनका जाके थोड़ा सा निराश करता हुआ, थोड़ा मुश्किलों में, और लीज संभवतः थोड़ी सी वहाँ पर खुलती नज़र आई थी। अगर मैच ऑफिशियल्स की बात करें तो आज महेंद्र सिंह मणिपुर के हैं और संजना राज ये हैं दूसरे अंपायर की भूमिका में। तो यकीनन आज मुकाबले में अच्छी स्थिति में शुरुआत की है पिछले 2 गेम जीत के रौनक मजदार ने, लेकिन उसके बाद से तरुण शानमुगम ने इस गेम के अंदर जरूर वापसी कराई है अपनी टीम को सर्व करते हुए। एक और गलती और अब तीसरे गेम के अंदर गेम पॉइंट पर पहुंच गए हैं। सर्विस फिलहाल तरुण के पास और आसानी के साथ ये गेम अपने नाम करेंगे। उम्मीदों के विपरीत ये तीसरा गेम गया। देखिए किस तरीके से वो जो पिछला हिस्सा है टेबल से उससे टकराई थी, उनको वो निराशा जरूर हाथ लगी होगी। अच्छा मौका था उनके पास सीधे गेम में इस मुकाबले को अपने नाम करने का, लेकिन फिलहाल इस मुकाबले की अगर हाइलाइट्स देखें तो अक्षय बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से अपने खेल को संभाला है तरुण शानमुगम ने। और यकीनन एक 2 गेम में शुरुआत जिस तरीके से उनका प्रदर्शन रहा था, उसके बाद जो वापसी की है चौथे गेम में, इससे उनका मनोबल बढ़ेगा। That's right. Even in the highlights in slow-mo, we can see that how swiftly and smoothly Tarun Shanmugam was moving onto the sides of the table, whereas Ronak Mazumdar looked a tad bit stranded on one corner, and that is the window, that is the opening. A player is always looking to create that space where he can play shots according to his strength. And you were talking about the stock delivery, his hallmark shot as far as Ronak is concerned, but even his hallmark shots were also not onto the table in the last game. So obviously a clear margin, a clear difference in their performance as far as game number 3 is concerned, and a good comeback from Tarun. We must give credit to him. Representing the University of Madras, Tarun Shanmugam has made a comeback of sorts in this game number 3, winning it comprehensively with 11-6 as he gets ready to serve in game number 4. Tarun Shanmugam. Nice serve and a strong return. Very sharp, right into his body from Ronak Mazumdar. Look at that. He was in no position. He keeps his bat very close to his ribs. So that makes it very difficult for him to swing those arms when there is a fast, ferocious return from Ronak. One more point. Unlucky Ronak on that occasion. The ball taking the head of the net and falling off the table. So scores are leveled at 2-2. इस गेम को कैसे भी अपने नाम करना होगा तरुण को, अन्यथा अगर ये गेम भी उनके हाथ से निकला तो फिर यही सफर उनका समाप्त हो जाएगा इस मुकाबले के अंदर। अन्यथा 5वें गेम में जाएंगे, बेस्ट ऑफ 5 का ये मुकाबला। और थोड़ा सा डिफेंस पर जब से गए हैं रौनक मजूमदार, ऐसा लग रहा है कि उनके लिए सब कुछ सही साबित नहीं हो रहा है। 2-4 से पिछड़ रहे हैं इस चौथे गेम के अंदर इस समय। अब धीरे धीरे अपनी गति पकड़ रहे हैं तरुण शानमुगम।
और देखिए सब कुछ सही घटित होता हुआ तरुण शानमुगम के लिए। नेट पर वो जब रिटर्न आया तो बिल्कुल जाके चिपक से गया उस नेट से अक्षय, और यही कहानी रही है। नेट पे लगातार गलतियां जिसकी हम चर्चा करते रहे हैं। पिछला गेम भी अगर रौनक ने गंवाया था तो तरुण के खिलाफ, तो यकीनन इसका भी क्रेडिट देना चाहिए कि बहुत सारी असहज गलतियां हुई रौनक के तरफ से। That's right. And even on that occasion, that forehand on the sideline wasn't onto the table, but one must say that his stock shot, that inside-out cross table that Ronak goes, is going into the net, and he's not looking the flare he looked in the earlier two games. But the margin is narrowing with 4-6. The serve is with Ronak. Let's see if he can change gear and he can raise the level of his game in this fourth number. No, it's the same story, not being able to control the pace, hitting that backhand a little too hard, popping it away from the table edge. He's become overly conscious there. And look at that last point, my God. That backhand from Tarun was loaded so heavily with turn and spin that Ronak was only a sitting spectator there on the other end of the table. Brilliantly executed. The southpaw has found his form now in this game number 4 at 9-4 and now at 10-4 with 6 game points there. 6 game points. Tarun Shanmugam has really turned the tables around, and I think not that far away, that backhand coming from him. Unfortunately, that one popped out of the table. Oh, ferocious, absolutely ferocious stuff from Ronak Mazumdar. He's not giving up. He's a champion. Look at that. Back-to-back forehands straight into the body, and Tarun was in no position whatsoever. एक बार फिर से जबरदस्त वही पिछले 2 अंक जो उन्होंने जिस तरीके से बटोरे, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए देखिए फोरहैंड पर ये कमाल का स्मैश और बिल्कुल अंक दिलाता हुआ। एक समय 6 गेम पॉइंट थे, लेकिन इस समय सिर्फ 3 गेम पॉइंट रह गए हैं। हालांकि 1 अंक चाहिए इस समय। बहुत अच्छा रिटर्न आया नहीं, और यकीनन अंक पर अंक दिए जा रहे हैं। क्या एक बड़ी वापसी यहां देखने को मिलने वाली है। रौनक मजूमदार जिस स्तर पर खेल रहे हैं, यकीनन इनको हमने शुरुआती 2 गेम में इसी स्तर पर खेलते हुए देखा था। इस बार इसी मौके का इंतजार था, इसी मौके का इंतजार कर रहे थे। 11-8 से अब चौथे गेम को अपने नाम किया है तरुण शानमुगम ने यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास के, और अब डिसाइडर में पहुंचा दिया है इस मुकाबले को। 5वें गेम के अंदर इसका फैसला आना है, और क्या कमाल की वापसी है ये। 6-11, 8-11 से शुरुआती 2 गेम हारे, उसके बाद से 11-6, 11-8 से, यानी बिल्कुल बराबर अंक। दोनों खिलाड़ियों ने अगर अंकों का लेखा जोखा देखें तो दोनों खिलाड़ियों ने बिल्कुल एक जैसे अंक हासिल किए हैं पिछले 4 गेम के अंदर। That's right, identical scorecard, and in a very evenly balanced this opening contest between the University of Madras and University of Calcutta. Tarun and Ronak fighting it out there neck to neck, and it's been a delight to watch these 2 champions. Especially you'll see in the highlights also, barring those 1 or 2 unforced errors from Tarun, it was Ronak Mazumdar who kind of lost his form. Not only his trademark shot inside out across the table was not really finding that kind of accuracy, but the fact that Tarun raised the level of his game and compelled Ronak to make those mistakes. See, on that occasion, opening the face of the bat a little too early and popping it out of the table. As the players make their way back on the table for the decider, it will be Ronak Mazumdar with the serve. और फिर से वही कहानी, उत्साह में ज्यादा, उम्मीद में कम, और वही गलती होती हुई।
एक बार फिर से नेट का, हालांकि इस बार थोड़ा सा लाभ मिला है रौनक को और 1 ऑल पर स्कोर इस समय। देखिए नेट पे वो लुढ़की थी, बॉल रोल होकर गई थी, लेकिन इस बार अच्छे एक 4 हैंड रिटर्न के साथ वापसी की है रौनक ने। 2-1 पर इस समय ये मुकाबला, और यकीनन रौनक ने जो प्रदर्शन किया था शुरुआती 2 गेम के अंदर उसी को मैच करने की कोशिश होगी उनकी। बहुत खूबसूरत रैली एक्सचेंज हुई पूरी गति के साथ दोनों तरफ से, लेकिन क्या जबरदस्त वो स्मैश आया था जब 4 हैंड पर, और उसके बाद से वो रिटर्न बाहर गिरता हुआ तरुण का। इस बार खूबसूरत, इस बार पूरा जगह का इस्तेमाल किया और बिल्कुल सही पोजीशन पे। अगर रिप्ले पर देखें तो क्या सही जगह पे प्लेस किया, देखते जगह थी उनके पास और उसका पूरा इस्तेमाल किया। And good anticipation on Tarun's part as well. He knew that Ronak is stranded on the other end of the table and making good use of the open space there. So just what we've been talking about. Look at that response from Tarun. And compelling Ronak Mazumdar making into those unforced errors. The scores level at 3-3. Nice serve. Good angle. Another unforced error. Couldn't keep it onto the table. Right into his body. Good forehand from Tarun there. Very deep and long into the table. Very close to his body. Around the net, this shot has not been successful. Ronak has tried to play around the net for a couple of times, and this is not the junction where he should be taking those chances, because this is the decider. This is the 5th game. Mind you, it is the best of the 5, and it will be, there you see, rightly so, is going for a timeout, and it will be a good moment to get his nerves back. He's looking overly exhausted. Obviously, nerves can get to you after having won the 2 games in this opening contest between Calcutta and Madras universities. He's lost the next 2 games, and that has put under a lot of pressure. See how this game panned out in the highlights of the last 2 games. Another ferocious cross table from Ronak Mazumdar. He's challenged Tarun from time to time, but just there is a marked difference between Tarun's game. Is you can clearly feel it even from the commentary box that he is looking a lot more compact, and his response to those ferocious drives from Ronak has also been a lot more accurate. Time. टाइम आउट के बाद अब थोड़ा सा मोमेंटम क्या शिफ्ट होगा इस टाइम आउट के बाद, और जो टाइम आउट लिया गया उस पर कई बार हमने देखा है कि मोमेंटम अचानक से शिफ्ट हो जाता है, लेकिन फिलहाल क्या तरुण शानमुगम शुरुआती 2 गेम हारने के बाद अगले 3 गेम जीतकर इस मुकाबले को अपने नाम करेंगे, बढ़त पे हैं इस समय। इस बार टाइम आउट के बाद पहला अंक मिलता हुआ रौनक मजुमदार को। इस बार गलती हुई, देखिए वो रिटर्न जाके टेबल से जरा सी बाहर, और उसका एडवांटेज मिलता हुआ। इस बार फिर से वो इन्फोर्स्ड एरर, सर्विस के बाद आपका रिटर्न सही जगह प्लेस नहीं हुआ तो फिर आपका नुकसान उसका उठाना पड़ेगा। और देखिए किस तरीके से नेट पर वो लगातार जो गलतियां की हैं, और लगातार दूसरी बार उसी गलती को दोहराते हुए रौनक मजुमदार। ऐसी गलतियों से आप मुकाबले में बने नहीं रह सकते, जीतना तो दूर की बात है। और इस बार जब मौका मिला तो ये कहां चूकने वाले थे। तरुण शानमुगम एक ऐसे मुकाबले में जीत की तरफ बढ़ रहे हैं जहां से ऐसा लग रहा था कि रौनक मजुमदार एक तरफा बना के रखेंगे इस मुकाबले को, लेकिन आखिरी के 2 गेम जीता और अब डिसाइडर में इस समय 8-4 से लीड पर। What a turn of events around for Tarun Shanmugam, and he deserves that to be in that commanding position after winning those 2 games, 3rd and 4th. And this decider also, he's looking absolutely solid, and
Look at that. It's been called late. No, it's been given a point. The point has been given to Ronak Mazumdar. Yes, it was off the table. Oh, unforced error, a very, very crucial junction. Tarun Shanmugam hits that one into the net. A soft backhand. He was trying to put some spin onto it, trying to move it away from Ronak. But another timeout, and rightly so. You can feel the tension in the commentary box also, because at 8-7, it is that crucial junction of the game. It is the decider. It is the fifth game, the opening match between University of Madras and University of Kolkata. The first contest between Tarun and Ronak has been absolutely enthralling, and look at that. Beautiful response. Nice forehand from the southpaw. You know, it's all about, as they say, fortune favors the brave. The one who's taking his chances is trying to generate those shots, create those moments, and push his opponent away from the table in pursuit of creating that space. So it's a very, very enthralling display of top-class tennis out there, as the players make their way back to the table after the second time out in this decider fifth game in this opening contest between Madras University and Kolkata University. It will be the southpaw who will be serving. That is Tarun Shanmugam to Ronak Mazumdar. Back-to-back ferocious forehands. Ronak Mazumdar, he's so renowned for those. And it's very, very difficult when it comes into your bodies back-to-back. You can connect it once, but having that luck on your side on two consecutive occasions is rarely. But letting go that advantage at 8-8 is given that point away to Tarun Shanmugam at 8-9. It still not that far away from Ronak's range. और वही कुछ फायदा पहुंचने की जरूरत है इस समय, लेकिन ऐसा लग रहा है नेट से उतना साथ मिल नहीं रहा है। यहां पर रौनक मजुमदार का वो रिटर्न देखिए निराश करता हुआ, और यकीनन अब इस समय मैच पॉइंट पर एक ऐसे मुकाम पर जहां के बारे में शायद अब से 2 गेम के बाद किसी ने सोचा नहीं होगा, लेकिन फिलहाल एक गेम पॉइंट बचा लिया है। इस अनफोर्स एरर की वजह से वो एक गेम पॉइंट जरूर बच गया, लेकिन अभी भी मौका है। तरुण शानमुगम का ये रिटर्न देखिए जाके गिरा था वाइड टेबल के, बफे से साफ करते हुए गेम पॉइंट और मैच पॉइंट भी, और मैच बिल्कुल झोली में आता हुआ। कमाल का प्रदर्शन तरुण शानमुगम, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास के शुरुआती 2 गेम हारे, उसके बाद से जब निर्णायक गेम की बारी आई तो 11-9 से उन्होंने उसे अपने नाम किया और एक मैराथन मुकाबले में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता के रौनक मजुमदार को परास्त किया है। एक जबरदस्त मुकाबला इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में मेंस टीम डी के ग्रुप में ये राउंड 2 का मुकाबला समाप्त हुआ है, और उसकी झलकियां अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस कदर इस मुकाबले में करवट ली है। शुरुआती 2 गेम के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद रौनक मजुमदार हावी नजर आएंगे और बहुत हद तक अपने पक्ष में करने में कामयाब रहेंगे, लेकिन उसके बाद से एक जबरदस्त वापसी तरुण शानमुगम की, और उसके बाद से उस मुकाबले को डिसाइडर में जाके 11-9 से अपने नाम किया, 3-2 से इस मुकाबले को अपने नाम किया, और उसके लिए बहुत कुछ क्रेडिट देना चाहिए। बहुत शांत और कुशलता के साथ अपने शॉट्स का सिलेक्शन किया। कुछ गलतियां हुई उनसे जरूर शुरुआती लम्हों में, लेकिन दूसरी तरफ से जब तरुण मजुमदार की तरफ से गलतियां आई तो फिर वो काफी थी वापसी दिलाने के लिए तरुण शानमुगम के लिए। शुरुआती लम्हों में हमने कई ऐसी गलतियां तरुण की तरफ से देखी, लेकिन उसके बाद से जैसे जैसे गेम आगे बढ़ा वो गलतियां हमने रौनक की तरफ से देखी। अच्छी सर्विस, कुछ अच्छे रिटर्न्स और वो चॉप
देखने को मिला, लेकिन इस मौके पर भी आप देखें तो थोड़ा सा कमिट कर गए थे अपने उस शॉट पे। डेलिकेट तरीके से कई बार इसको दूसरे खेल में पहुंचाने की कोशिश हुई, लेकिन ज्यादातर मौके पर आपको स्मैशेस देखने को मिले और यकीनन वो सब कुछ था इस मुकाबले में जिसका हम इंतजार करते हैं, और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मुकाबला हमने आज इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के अंदर देखा है। कमाल का ये मुकाबला, और इस मुकाबले में यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास के तरुण शानमुगम विजेता रहे। अंत तक समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा खिलाड़ी विजयी होगा इस मुकाबले से, लेकिन अंत में अपने इमोशंस पे और अपने नाव पे कंट्रोल करते हुए तरुण शानमुगम ने जीत हासिल की और एक मैराथन मुकाबले को अपने नाम किया। कुछ अच्छे लॉब शॉट भी देखने को मिले हमें, और यकीनन 5 गेम तक चलने वाले मुकाबले में आपका स्टेमिना भी परखा जाता है, आप में कितनी क्षमता है, आपके तरकश में कितने बाण हैं, वो सब आजमाने होते हैं, और वो सब कुछ इस मुकाबले में था। और बिल्कुल जिस तरीके से 2 गेम हारने के बाद वापसी की, वो काबिले तारीफ। तरुण शानमुगम बेहद प्रभावशाली रहा उनका इस मुकाबले में प्रदर्शन। रौनक मजूमदार की तारीफ बनती है, उन्होंने जिस तरीके से शुरुआत की, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट पे उनकी तरफ से गलतियां हुई, अनफोर्स्ड एरर हुए, उनका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा, और अंत में ये मुकाबला गया तरुण शानमुगम के लिए। चलिए अब इस मैराथन मुकाबले के बाद अगले मुकाबले की तरफ बढ़ते हैं, और उस मुकाबले से पहले एक बार फिर से स्वागत करते हैं Men's Team A round 3. Yashaswini Guwahati of Jain University, Karnataka, taking on Calcutta University, Mahek Das. In a short while from now, we will see the players coming on to commence this match. And you can see there players from Calcutta University. That is Mahek Das. There she is, and she'll be taking on Yashaswini Guwahati of Jain University, Karnataka. There she is, the bespectacled player from Kolkata, 18 years of age. And taking on, there you see on the picture frame in red, that is the Yashaswini Guwahati of Jain University, Karnataka. There are the players here. This is court number 1, which comes live to you on DD Sports as well as live streaming on Prasar Bharati YouTube. Here we go for the toss, coin toss. And the umpires for this match, Atur Satish from Kerala and Sujit Kumar Ray from Odisha. Women team, Group A, round 3. Jain University Karnataka versus University of Calcutta. और ये मुकाबला होगा यशस्विनी गोरपाड़े वर्सेस महक दास। महक दास जैसा कि आप देख रहे हैं 255 और इसमें क्रीम कलर की टी शर्ट में, और दूसरी तरफ यशस्विनी लाल रंग की जर्सी के अंदर में।
There it is to the back of the camera. Is Mahek Das from Calcutta University. There she is. Trying to get into their rhythm. Both are just going for some powerful forehand cross-court smashes. This is women's Team A round 3. Day 2 of this event here in Guwahati. दोनों खिलाड़ियों का थोड़ा सा परिचय करवा दें हम आपको। महक दास जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा की तरफ से खेल रही है, पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020-23 में भाग ले रही है। 18 वर्ष की आप ये देख सकते हैं यहाँ पे। फर्स्ट एम्पायर अतुर साथी फ्रॉम कर्नाटका, केरला, आई एम सॉरी, एंड एम्पायर नंबर 2 इज सुजीत कुमार रे ऑफ उड़ीसा। तो यहाँ पर दोनों खिलाड़ी वार्म अप होते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा को रिप्रेजेंट कर रही है। महक दास 18 वर्ष की इंग्लिश ऑनर्स की स्टूडेंट है और 50वें सीनियर नेशनल्स में वो भाग ली थी। उसके बाद 83rd जूनियर एंड यूथ नेशनल्स में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। 83rd सीनियर नेशनल्स में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन इंडिया को उन्होंने रिप्रेजेंट किया था 10वें एशियन पैसिफिक गेम्स के अंदर में। तब एज ए टीम गोल्ड मेडल उन्होंने जीता था। ये उनकी उपलब्धि है और काफी अच्छा खासा अनुभव है उनके पास। और जैसा कि हमने पिछले कई मैचों में उनका जो प्रदर्शन देखा है वो उनकी कहानी बतलाता है। सर्विस करते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा के महक दास। 1 love getting the first point and a good backhand slice, getting that point for her. Love 2. Sort of just missing the table there, edge of the table. Oh, trying 1, to force 2. that point. That is Yashaswini Gorpade. Weak return, just waiting for the ball sitting up a bit and a good opportunity for Yashaswini to go with that terrific overkill. 2-all, opening game. Left. 2 Let. all. Going for serve again, Mahek Das, Calcutta. A terrific effort 2, there 3. from Yashaswini. Going for that lot of look at the lot of side spin on that. The ball picking up the edge of the table on the sidelines. Oh, powerful forehand smash there 4-2. from Yashaswini. 4-2. Look at that. Quickly in position. And not really difficult. Don't kill. Sujit. That is Yashaswini. Jain University, Karnataka. 4-2. Preparing to serve. 4-2. Early lead. Good backhand serve. 5-2. Oh, that forehand from Das. Just going long. 5-2. 3, Good 5. thinking here. Trying to roll the wrist and come with that forehand. Yashaswini trying to create a side spin on that, putting it into the net. Fault. 3-6. Down 3-5. Mahek Das serving. A lot of pace on that backhand from Mahek Das. A shade late to react is Yashaswini there. And not in the right position as well. 4-6. Rather 6-4. 6-5. That is an unforced error from the racket of Yashaswini. Serving at 6-5. All. Fault service, losing that point. This is always avoidable, not to drop the serve.
Probably caught in two minds which way to go with the serve. Scores leveled 6-all in the opening game as Mahik Das serving now. Trying to quickly 7, generate 6. pace and then trying to come with that side spin. Yashaswini, there she is trying to go for that. Oh, 7-all. completely miscued. 7-all. Yashaswini. Good backhand serve. A terrific 8, forehand 7. cross-court. A lot of power, perfect angle. Look at that. No chance whatsoever for Mahik Das. 8-7. Yashaswini of Jain University. 7-9. Again, there is not much space, a short serve. And a weak return nicely put away there. 7-9, Mahik Das down. Calcutta University. Trying to change the 8, angle. 9. Yashaswini. There she is. Not able to control the backhand. Hitting it long. 8-9. Mahik Das. A lot of spin on that serve. 10-8. But the return was very controlled. That is where Mahik Das was not able to manage that. That sets up 2 game points in favor of Jain University. Yashaswini Ghorpade preparing to serve. Oh, look at that perfect 11-8. backhand down the Game line. to Jain With that, University. it's 11-8. Look at the last point there. She knows that it was looked like a little lucky on that, but nevertheless, it was a good down the line. 11-8 was the score in the first game. And 8-11, Mahik Das losing it and getting some advice from the coach. And you are seeing the highlights of this particular game, opening game. Good rally there. Look at that powerful forehand. On red jersey is from Jain University, Yashaswini. That ball bounced earlier on our own court. Look at that change in the pace. Change. So the first game in favor of Jain University, Karnataka. Yashaswini Ghorpade taking it. And as the players just get back on to the table. Little bit of rehydration there. And a minute of discussion with the coaches to get a word of advice, and feeling a bit sultry out here. Second game. That is Yashaswini from Jain University as she University prepares to to serve. serve. Game number 2. First Love. set in her favor for her university as she prepares to serve. 1 love. Back and cross court letting her down. Mahik Das. 1 love. Yashaswini. Love. Again the net card not going in our favor. 2 love lead. And it is love to Mahik Das. पहला मैच जेन यूनिवर्सिटी ने आसानी से जीत 1-2. लिया 11-8। उसके बाद दूसरे गेम में 1 अंक से बढ़त बनाते हुए 1-1 की बराबरी पर सर्विस फॉर महक दास कलकत्ता यूनिवर्सिटी। क्रीम कलर की टी शर्ट में 255 नंबर जर्सी, और आप देखिए तैयार है। बैक एंड सर्विस, धीमी सर्विस, नेट की बिल्कुल नजदीक 3-1. और 1 अंक 3-1 पर सर्विस करते हुए यहाँ पर यशस्विनी 4-1. और पाडे। और जैसा कि हम देख रहे हैं, ये डे 2 का टेबल 1 पर वुमेन्स टीम्स का ग्रुप ए राउंड 2। Ball had just gone on to the table number 2 as it tossed up from her racket. Mahik Das. 1-4. सर्विस फॉर महक दास। अच्छी सर्विस, लेकिन उतना ही सुंदर 5-1.
उतनी ही खूबसूरत रिटर्न यहाँ पर यशस्विनी गोरपाड़े की। बिल्कुल भी संभलने का मौका नहीं दिया महक दास को, अपनी ही सर्विस पर अंक गंवाते हुए 5-1 से आगे। लाजवाब शानदार शुरुआत यहाँ पर यशस्विनी गोरपाड़े, जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटका में। थोड़ी सी बदलाव करते हुए अपनी सर्विस और ये जबरदस्त फोरहैंड ड्राइव देखिए, बिल्कुल मौका नहीं दिया महक दास को। Absolutely. Look at that good serve, weak return and nicely put away there. 6-1. Pretty deceptive service, but the return was even better. और अब महक दास ने भी थोड़ा सा अपनी हुनर का, प्रतिभा का थोड़ी सी झलक दिखलाई, काउंटर अटैक किया और अब 6-2, 4 अंकों से पीछे 2-6 पर सर्विस करती हुई। अच्छी सर्विस मगर 7. उसका फायदा नहीं उठा सकी वो। और 7-2 ये मुफ्त में एक अंक यशस्विनी को मिल गया। और यही जो कुछ एक बोनस अंक जब आपको मिलते हैं, 8-2. काफी अच्छी शुरुआत मगर 6 अंकों की बढ़त गोरपाड़े के बीच में। 9-2. और ये दोनों खिलाड़ी काफी प्रतिभाशान, काफी अनुभवी खिलाड़ी है। That return on the forehand and the side spin going long. 3-9. This is the last point there. 3-9. Mahak Das is serving. A lot of job to do here, trailing quite a bit. Good serve. Lovely 4-9. forehand. ये महक दास की जो लय है वो धीरे धीरे वापसी में आती हुई, 1-2 स्ट्रोक जो देखने के बाद लगता है कि इनमें काफी प्रतिभा है, मगर सही समय पर उसका एग्जीक्यूट करना बहुत जरूरी है। और आज वो दिन है कि 10-4. Just trying to go for that counter chops, gets up 6 game points for Jain University, dropping the serve. 10-5. Sometimes you tend to get over anxious when you are serving with the game points. ये बहुत कम होता है मगर कभी कभी हो जाता है। Happens. But 11, the 5 backhand game letting to her down. Mahak Jain Das with this game rather easily going in favor of Jain University. Look at the last point here. And that backhand letting her down for Mahak Das. Intention was good, losing it at 11-5. पहले 2 गेम का प्रदर्शन को अगर हम देखें तो बिल्कुल इसमें साफ है कि जैन यूनिवर्सिटी की यशस्विनी गोरपाड़े का दबदबा बना हुआ है। 11-8, 11-5 ये अपने आप में बता रहा है कि किस तरह से उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है यहाँ पर। और दूसरी तरफ महक दास जो कि काफी अनुभवी खिलाड़ी है और इंडिया टीम वो खेल चुकी है और 10वां एशियन पैसिफिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था टीम इंडिया का। ये देखिए यशस्विनी गोरपाड़े रेड टी शर्ट में 220 नंबर की जर्सी और दूसरी तरफ महक दास 255 अपने कोच के साथ थोड़ा सा सलाह मशवरा। 2 गेम हारने के बाद भी तीसरे में वापसी करना बहुत ही जरूरी है महक दास के लिए। Third game. Game number 3. Calcutta to serve. After losing the first 2 games, Now it is Mahak Das serving. She has to do well to win this game, to stay in this match. 1 love. That was that push on the forehand. Going into the net. 1 love. One all. Deep and powerful return on that serve. That is where he is extracting the error from Mahak Das. 1 all. Yashaswini is serving. Superb serve. Perfect 1. angle. But then it had just probably clipped the top of the net. Let it was. 2 all. Putting pressure on Yashaswini. Mahak Das just see that push. And Yashaswini not able to control that return, hitting it long. 2 all. Das. 2-3. ये बैकहैंड पुश पे इनका कंट्रोल थोड़ा सा कमजोर है, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है।
Very 4-2. nicely countered that spin serve. Yashaswini of Jain University. That is what set up that point here. There you can see. And it's a 4-2 lead. The game number 3 as Yashaswini prepares to serve 4-2. The intention was good. She wanted to deceive the opponent with a backhand cross court, hitting it wide there. 4-3. Yashaswini preparing to serve. Taking the first 2 games. 3-5. That's a very good serve. A hurried return going long from Mahik Das. Down 3-5. Now she's serving. Oh, that's absolutely lucky there. The ball just hitting the edge. That is always a point in favor. And you should not hit the side. If it is an edge, it's a point. 3-6. They are serving. That is a very good deceptive serve. Hurried return from Yashaswini going into the net. Serving 6-4 now. सर्विस फॉर यशस्वी गोरपाड़े. उनकी बहुत बढ़िया सर्विस मगर नेट को छूती हुई और एक बार रीसर्विस फिर से एक बार काफी नजदीक है नेट के बिल्कुल बराबर है और यहाँ पर काफी देर बाद है उनसे गलत स्ट्रोक. See, the return was coming so slow. That is where there is no control on Yashwini's racket. Going wide. 5-7. Just missing the table bit. Unlucky there. Mahik Das went for the backhand push. There it is. Just missing the table. 7-5 2 अंकों से पिछड़ रही है यहाँ पर महक दास. उनका जितना भी अनुभव है जो भी उपलब्धियां हैं उन सबको क्योंकि यही वो अवसर है जब उनका भरपूर प्रयोग करना होगा आज क्योंकि उनके सामने जो खिलाड़ी है यशस्वी गोरपाड़े वो भी काफी अनुभवी है काफी टैलेंटेड खिलाड़ी है. और आप देखिए एक बार फिर से खूबसूरत सर्विस. इनकी सबसे बड़ी ताकत है महक दास की इनके सर्विस मगर आज थोड़ा सा कोशिश पूरी कर रही है मगर अपनी ही सर्विस पर नेट पे दे मारा. So there is a good spun serve, but the return was perfectly counter-attack. That is where the error from Mahik Das. 8-6. Yashaswini. 8-7. So a hurried return on the backhand from Yashaswini into the net there. 8-7. Still a slender lead. Good serve, backhand serve. 9. Pretty much of a deception there. थोड़ा पेशेंटली खेलना पड़ेगा कुछ एटलीस्ट 2-3 मतलब इमीडिएट उनको रिजल्ट चाहिए वो थोड़ा उसी के चक्कर में उनको पॉइंट लूज कर रही है वो लगातार. फिर से वापस 7-10. Such a good serve, but she could not capitalize on that. Mahik Das. Look at that. That is she could have kept the ball in play. 3 game points. 11-7. Game 2. Jain University. With that, it's 11-7 and wrapping up the match in straight games. तो लगातार 3 गेम 11-8, 11-5, 11-7 straight games. Yashaswini Gorpade of Jain University getting the better of Mahik Das of Calcutta University in the first match. We got to see the highlights of the match. So much of you see how nicely rolling the wrist and getting into that forehand down the line, and see the quick move, quickly getting into the position, low pickup there, and a lovely rally, and see changing the pace there, changing the depth in the return, changing the angle, all kind of a combination. That is where Mahik Das is put into trouble, not able to retrieve. And you are just watching the highlights of this match where Yashaswini Gorpade of Jain University got the better of the opponent in straight games. 11-8, 11-5 and 11-7. That was the game number 1 in the day 2 table 1. Women's teams group A round 2. Yashaswini Gorpade of Jain University convincingly defeating 3 straightaway games to University of Calcutta Mahik Das. आप देख सकते हैं कितने शानदार प्रदर्शन, उनकी हर सवाल का बेहतरीन जवाब, मगर आज इतना अनुभव होने के बाद भी महक दास शायद कहीं कुछ कमी रह गई हो.
तो अब it's time to join the other two commentators in Hindi and English. Moria ji in English and Pandey ji in Hindi. Thank you, Anil ji. It's so sweet and endearing. And yeah, thank you very much. And welcome back to Vikas Pandey ji. Vikas ji, what a pleasure to have you. It's a very formal way of addressing each other. And after that scintillating, sensational, one-sided match between Yashashwini Ghorpade and Mahik Das, to take the baton forward is Anaragya Manjunath, who will be taking on Sucheta Prasad of University of Calcutta in red. This time it is Anaragya Manjunath in red jersey, who will be taking on Sucheta Prasad with the yellow jersey. So yes, all the momentum that has been generated by Yashashwini Ghorpade is being handed over to Anaragya Manjunath. Anaragya, you can see on your TV screen in red jersey, will be taking on in yellow jersey, that is Sucheta Prasad. Because we just witnessed that really a one-sided match between the two peddlers from Karnataka and Kolkata. Yashashwini Ghorpade with 11-8, 11-5, 11-7. What a strong exhibition of top-class tennis. And obviously, along with Chandigarh University, Jain University is, especially as far as the women's event are concerned, we are looking one of the most formidable sides to take on the overall championship as far as the 4th edition of University Games is concerned. बिल्कुल एक अच्छे मुकाबले की आशा, और यहाँ पर जो दर्शक मौजूद हैं इस इंडोर स्टेडियम के अंदर, वो भी यही आशा कर रहे होंगे कि वन साइडेड गेम देखने को ना मिले, एक रोचक मुकाबला उन्हें देखने को मिले। अनर्घ्या के सामने होंगी सुचिता जो सर्व कर रही हैं, और लेट दोबारा सर्विस करनी पड़ेगी। फीमेल सेक्शन में ये ग्रुप ए का तीसरे दौर का मुकाबला है। अच्छा वन लव, अच्छा फोरहैंड और अच्छा अंक मिलता हुआ स्ट्रेट अवे सुचिता प्रसाद ने दिखा दिया कि वो जब जब मौका मिलेगा ऐसे ही प्रहार करने वाली हैं। और बिल्कुल वन लव, ये दो वक्त पे ऐसा हुआ जब शुरुआत हुई, जब सर्विस की तो लेट का इशारा आया दोनों अंपायर की तरफ से। अच्छा स्मैश, लेकिन खूबसूरत रिटर्न, अनुभव का पूरा परिचय देती हुई अनर्घ्या अपने प्रतिद्वंदी सुचिता से थोड़ा सा अनुभवी नजर आ रही हैं, जहां तक अगर अभी तक के खेल को देख कर कहें। और यकीनन एक जबरदस्त जो खेल देखने को हमें मिला है अभी तक, उसका एक झलक दिखाते हुए इस समय ये दोनों पैडलर। सर्विस सुचिता की, और ये आशाजनक, क्या जबरदस्त वो रिटर्न आया था। यकीनन शुरुआती लम्हों में सुचिता बेहतर नजर आ रही हैं, अनर्घ्या के खिलाफ 3-1 से समय लीड कर रही हैं। सब अच्छा स्मैश, और क्या ये अंक गंवाया है? ऐसा लगा कि एक पल के लिए बिल्कुल अटेम्प्ट किया नहीं, उनको ऐसा लगा कि शायद वो पोजीशन में है नहीं, इसलिए छोड़ पर दिया, उंगली उठाई, तो ये तो आउट का इशारा होता है क्रिकेट की भाषा में। डेफिनेटली बॉल भी आउट गई थी विकास वहां पर। सो यस, ऑब्वियसली द ओपोनेंट इफ ही डज नॉट कमिट इनटू द शॉट, इट कैन बी लेट, एंड राइटली सो दैट वाज द डिसीजन बाय द अंपायर। बट just going back to that playing style of these two paddlers from Karnataka and Kolkata respectively, as far as Anaragya Manjunath is concerned, she's looked a tad bit rusty, because even during serve, when she was trying to generate that spin, she not only took the pace out of the service totally, which allowed Sucheta Prasad to go for that strong winner on the sidelines.
So, and that is the result in this first little break. Manjunath is looking a bit of a bother here with 4-2. Sucheta Prasad leading as she will be facing the serve from Manjunath. Once again, slow and wide serve. Oh, excellent work. Good rally. Letting go of the advantage there, Manjunath. That's what I'm saying. She's looking a tad bit rusty. And she'll be hoping that she doesn't really spoil the hard work that has been done by her compatriot Yashashwini Ghorpade in the earlier game against Mahik Das. Applause, not so. It's not gonna be that bad. Look at that in the replay. Great shot. She was right in the position into the middle of the court and successfully transferring that weight right into her shot. Great pace, great angle. Nice pace. You know, this is what I would suggest if she could hear me from the commentary box. If Manjunath can really go for flatter and faster returns, it will be much better off, because when she goes for the stop spin, she takes off the pace from the ball, and that allows Sucheta Prasad to make a strong return. Sometimes becomes very difficult. A little luck from the net, but not so on the second occasion as she hits one right into the middle of the net. The good thing is that she still has the serve. Manjunath from Jain University, Karnataka. 5-6. One more point for her as she narrows down the margin. Now down to 5-6. Quick comeback of sorts, because she was looking a little rusty earlier on in this game number 1. But oh, look at that! Look at that! What's happening with Sucheta Prasad? I really don't understand. The cheeky-looking girl, she was looking so good in great nick and great touch, but suddenly when she's trying to go for that open backhand, she's not being able to get that touch right. बिल्कुल, और यही वजह है. अब देखिए स्कोर जो है 6 ऑल पे है और सुचिता एक बार फिर से सर्व करेंगी. लेकिन अच्छी सर्विस, और फिर देखिए जगह बनाई, क्रॉस कोर्ट के लिए गई और बिल्कुल भी मौका नहीं था वहां पर अनुरज्ञा के पास, और अच्छा अंक हासिल करते हुए फिर से एक बार बढ़त पर इस समय सुचिता. और इस बार रिटर्न जाके नेट से टकराया है अनुरज्ञा का. वापसी अच्छी हुई थी, लेकिन उसके बाद 2 अंक के साथ अब बढ़त पर पहुंच गई हैं सुचिता. इस बार सुचिता की तरफ से गलती, थोड़ा सा संभलने की जरूरत. जो पेस है उसके हिसाब से आपको रिटर्न करने होते हैं, और कई बार ऐसी प्रयास में आप निराशा हाथ लगती है, लेकिन इस बार उस पेस को संभाल नहीं पाई बिल्कुल भी अनुरज्ञा. देखिए जब वो फोरहैंड आया तो तमाम कोशिशों के बाद जो वो कनेक्शन था वो सही डायरेक्शन में नहीं गया, जिसकी वजह से वो अंक मिलता हुआ. और एक बार फिर से 2 अंकों की बढ़त पर जा पहुंची हैं सुचिता प्रसाद, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता की सुचिता. Quite a calm customer, Sucheta Prasad. She went to pick that book from ball from outside the boundary. 10-7. Not allowing. And now with the 3 game points, Sucheta Prasad is in game number 1 in the second contest between Jain University of Karnataka and University of Calcutta. She will be serving for the game. Nice serve, a little slower on that side, but yes, that's it. She seals it with an unforced error from Anuragya Manjunath's part. She'll be disappointed that she let go of that advantage, Anuragya Manjunath, after displaying a good comeback in somewhere in the middle stages of the opening game. But with 11-7, Sucheta Prasad has sealed the game number 1. और इन झलकियों पर देख के, इन हाइलाइट्स को देख के आपको लगेगा कि देखिए कितना बेहतर कंट्रोल रहा है इस गेम के अंदर सुचिता प्रसाद का. और ना सिर्फ गति पर कंट्रोल रखा, बल्कि पोजीशनिंग भी सही रही, और मूवमेंट देखिए, रिफ्लेक्सेस देखिए कमाल के रहे, और इस वजह से बेहतर नजर आई, और इसलिए उनके नाम गया
पहला गेम। कुछ एक एडवांटेजेस मिले जरूर वहां नेट पर अनरज्ञा को, लेकिन इसके बाद एक आसान गेम बना दिया इसको। 11-7 से पहला गेम अपने नाम किया है। ऐसे में दूसरे गेम में वापसी करनी होगी अनरज्ञा को। याद रहे पहला गेम यशस्विनी घोरपोड़े ने जीता था जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटका की, और अब दूसरे गेम में इस समय यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता की सुचेता प्रसाद आगे चल रही हैं। और इसी बीच अब दूसरे गेम की शुरुआत हुई है और पहला अंक गया है अनरज्ञा का नाम। Sucheta Prasad will have to be wary of that very common mistake that paddlers make after winning the opening game, because that they go a little too over anxious in the following games and they let go of that advantage, and we saw that happening in the last 2 points which Sucheta literally gave away to Anuragya Manjunath. Getting ready with the serve, Sucheta Prasad, the paddler from University of Calcutta. Nice little flat serve. Trying to create that moment. Lucky that she didn't get any touch on that ball. Otherwise, it would have been 4-love. But it is 1-3 now. I think a bit of a problem as far as there was a case of classic misjudgment. It was almost going away from her without bouncing on her side of the table. There was no need for her to go for that shot. Lucky that she missed it. तीन दो से इस समय लीड कर रही हैं अनरज्ञा, और ये आशाजनक सर्विस जिस लिहाज से बाउंस हुई उसको देखकर लगा कि कितना कंट्रोल उनके हाथों से निकला है इस मुकाबले के अंदर। हालांकि थोड़ा सा बेहतर अभी तक के खेल की अगर बात करें तो अनरज्ञा नजर आई हैं इस गेम के अंदर। 3-3 के स्कोर पर सर्विस सुचिता की तरफ से। इस बार नेट पर वही गलती। नेट पर तमाम तरीके की गलतियां आपको परेशान करती हैं। कभी कभी आप ओवर एग्रेसिव होके शॉट्स लेते हैं तब नेट पे गलती होगी है, और कभी आप लॉब करना चाहते हैं तब होती है। लेकिन इसी बीच एक अच्छी रैली चलती हुई और उस रैली में इस बार कामयाबी मिली अनरज्ञा को। देखिए वो जो राइट कॉर्नर है वहां से उसको साइड लाइन से निकालना चाह रही थी सुचिता, लेकिन कामयाबी मिली नहीं। बहुत बढ़िया स्मैश, लेकिन उससे भी खूबसूरत रिटर्न। लेकिन इस बार वो वेरिएशन, वो स्विंग संभाल नहीं पाई। अच्छा रिटर्न संभाला था, लेकिन उसके बाद जो वो स्विंग देखिए साइड स्पिन, और उसमें बिल्कुल चकमा खा गई सुचिता प्रसाद। 6-3 स्कोर है अनरज्ञा के पक्ष में इस दूसरे गेम के अंदर। अच्छी वापसी, इस बार ज्यादा अति उत्साहित होकर लगाया हुआ है ये स्मैश, बिल्कुल बाहर गिरता हुआ। Anuragya Manjunath leading this game number 2 by 6-4 as Sucheta Prasad serves. It's a very slow serve, but a good stroke down the line, right into the center of the table from Sucheta Prasad. Literally snatching that point away from Manjunath at 5-6. Another good serve. Nice that she's challenging. It's good to see that she's challenging Manjunath, literally playing the driving right into her body as she levels the score at 6-6. That's been the classic case of letting go of that advantage as far as Anuragya Manjunath is concerned. But good to see Sucheta Prasad making that comeback of sorts. It's just that she's a tad bit slow with her backhand. She's keeping that bat almost predictable, making it a little easy for Manjunath to vary her game. And that's been the problem with Sucheta Prasad. At times she's been too predictable, too easy to pick as far as her backhand game is concerned.
It's not a bad option, but we have to realize that Sucheta Prasad lacks the pace as far as her backhand game is concerned. She's got a nice serve, but that is when she's better off when she goes for a forehand, not with a backhand serve. I know that she tries to rely more on the top spin that she tries to generate, but what she does is she shortens the length too much, which allows the time to Anuragya Manjunath. Rarely when she tries to charge, she cannot control it and keep it on the table. As the scores are level at 7-7, with Anuragya getting one more point at 7-8 at Sucheta's serve. There you see all the time in the world. It was only unforced error on part of Anuragya's Manjunath's part. Otherwise, she would have gone for a strong drive. She had all the time in the world. It's got a much shorter return from Sucheta Prasad. 8 ऑल पर सर्विस इस समय, और अनुराग्या तैयार हो रही हैं। जो गलतियां पिछले गेम के अंदर हुई थी उसको भुलाकर आगे बढ़ने की जरूरत है। अच्छी शॉट रैली, लेकिन अच्छा रिटर्न इस बार आया नहीं जिस तरीके का इंतजार था, और सुचिता बेहतर नजर आ रही हैं अब पिछले कुछ पॉइंट से। जिस तरीके का प्रदर्शन उनका आया, ऐसा लगा कि अच्छी वापसी उन्होंने की है और इस मोमेंटम को शिफ्ट नहीं होना देना चाहेंगी। इस बार नेट पर वो लगी जरूर बॉल, लेकिन उसके बाद से वो जो बाउंस है वो टेबल के ऊपर आया नहीं, इस वजह से वो अंक मिलेगा सुचिता को। तो 2 गेम पॉइंट उनके पास और दूसरा गेम वो अपने नाम कर सकती हैं। पहला गेम बड़ी आसानी से जीता था, लेकिन इसमें मशक्कत करनी पड़ी है। अच्छा रिटर्न, लेकिन उससे भी बढ़िया वो जो एंटीसिपेशन था, वो देखिए कितनी कमाल की पोजीशनिंग, और बिल्कुल वो चॉप किया, और जब रिटर्न आया अनुराग्या की तरफ से तो वो काफी दूर गिरता हुआ। इस वजह से ये दूसरा गेम भी अपने नाम किया है। 11-8 से दूसरे गेम को अपने नाम किया है सुचिता प्रसाद ने यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता की, जबकि अनुराग्या अब इस मुकाबले में 0-2 से पिछड़ रही हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के अंदर इस समय टेबल टेनिस के मुकाबले खेले जा रहे हैं। आज दूसरा दिन है। याद रखिए 200 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ इस आयोजन का हिस्सा हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के अंदर, जिसमें से 16 यूनिवर्सिटीज़ इस टेबल टेनिस के इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं। विमेंस टीम इवेंट्स हो रही हैं, इसके अलावा मेंस टीम इवेंट्स भी हमने सुबह के सत्र में देखा था, और पैरेलल भी चल रही हैं कुछ इवेंट्स दूसरी टेबल्स पे। तो यकीनन एक्शन पैक्ड है दूसरा दिन आज, फिर तीसरे दिन भी कई सारे मुकाबले लाइन अप हैं। इसके बाद फाइनल जब होगा तो वहां पर भी हमारी नजर रहेगी। तो डीडी स्पोर्ट्स से लगातार आप जुड़े रहिए, और प्रसार भारती यूट्यूब चैनल पर भी आप इनका लुत्फ उठा सकते हैं। चलिए तीसरे गेम की फिलहाल शुरुआत होती हुई, और एक अच्छा रिटर्न लगाने का प्रयास था, लेकिन वाइड जाता हुआ वो रिटर्न, और एक बार फिर से अच्छी शुरुआत सुचिता प्रसाद की। देखिए जब जगह मिली और वो जो लूप बना उस पर अच्छा फोर्स जनरेट किया था सुचिता ने, इसी वजह से वो रिटर्न कमजोर साबित हुआ। Sucheta Prasad carrying on the momentum which she has generated. Look at that. It's frustrating Anuragya Manjunath now, after having lost 2 games in this second match between a striking contest between Jain University of Karnataka and University of Calcutta. Mind you, we are watching Group A women's event in round 3 here. Love 3. So earlier we were watching round 2 of boys event, but this is round 3. Quick discussions from the sidelines with the contingent. Sucheta Prasad, she's calm as a cucumber. She doesn't show any signs of frustration, any signs of excitement. I like such characters who can control of their emotions, because they are the most dangerous one as far as my understanding of sports psychology goes, because we have seen how that often it happens that a player who can control his or her emotion can actually control the game. I understand that Anuragya Manjunath is coming into this second match of her university after Yashashwini Gorfode comprehensively defeated Mahek Das with straight games 11-8, 11-5, 11-7.
So there was a bit of undue pressure on Ragya Manjunath to carry forward the momentum. And after having lost the 2 games, she is down to 0-3 now, as she will be serving in this game number 3. So, and Ragya Manjunath in red jersey. Here you see the way the last game panned out in the highlights as she serves. Another soft serve, but it was nice and flat, so making it a little more difficult on that occasion. Sucheta Prasad playing it away from her body, making it real difficult for her. Hitting one into the net. Sucheta Prasad will be disappointed with that. She controlled the rally beautifully. She was in a good position, but her over-reliance on her backhand may cost her, even though she has won the opening 2 games, because I'm still not sure that such over-reliance on her backhand can help her cause. Mind you, this is the early stages of the tournament. We are only in the day 2, and we have still 2 good days to go to win the overall trophy as far as table tennis is concerned. And if someone like Sucheta Prasad wants to go all the way down the wire, she'll have to bring more dynamism and more versatility to her game. Here you see Ragya Manjunath leveling the score, but giving away last point on her serve will be quite hurtful and must have pinched her. Oh, beautiful backhand there. See, when she gets it right, Sucheta Prasad looks really good. It's just the problem with her is that she's becoming a little more predictable. So, on Ragya Manjunath, I can say that, see on your TV screens, she's not been able to capitalize on that quite open weakness that Sucheta Prasad is relying on, that backhand. And there you see, on that occasion, she did capitalize. A great forehand cross table there for Ragya Manjunath as she moves on to 4-5 now. अपनी पहुंच का अच्छे से इस्तेमाल करना जरूरी है यहाँ पर, और उस का एडवांटेज अभी तक ले नहीं पाई हैं। उसका जो लाभ है वो अनुराग्या ले नहीं पाई हैं। इस वजह से देखिए 0-2 से इस मुकाबले में वो पिछड़ रही हैं। फिलहाल सुचिता के पास वो मौका, और ऐसा लग रहा है कि दोबारा ये सर्विस करनी पड़ेगी। 6-4 से लीड कर रही हैं तीसरे गेम के अंदर सुचिता प्रसाद। शुरुआती दोनों गेम उन्होंने अपने नाम किए, और उसके बाद अब तीसरे गेम में भी लीड पर हैं। अनुराग्या को प्रदर्शन में बेहतर करना होगा। एक बार फिर से वो गलती नेट पे, एक वापसी की उम्मीद जगती हुई यहाँ पर अनुराग्या के लिए यहाँ, लेकिन ऐसी कोशिशों से आपकी उम्मीदें धूमिल होंगी। ऐसी कोशिशों से ना सिर्फ आप अपने लिए मुश्किल ही खड़े करेंगे, जबकि सामने वाला आप पर चढ़कर हावी होकर खेलेगा। That wasn't the replay we were looking for. It wasn't the last shot, but yes, going back to that last shot, Ragya going for that open-handed backhand across the table was not the best choice. She had enough space on the right of the table. She could have gone for the forehand drive on the sidelines, could have been a better option. But that's a very, very ambitious and difficult shot to execute, especially when you are standing very close to the sidelines. So perhaps her choice of going for a cross-table backhand wasn't all that bad. But that has allowed Sucheta Prasad to move up in this third game at 7-6 as she serves. I like the response from Sucheta Prasad, even though she couldn't keep it onto the table. That one falling off and gives one more point to Ragya Manjunath as she levels the score at 7-7. And from here on, if there is any way back to Ragya Manjunath, it is this moment. From there on, if she can hold on to that momentum and keep advantage in her favor, Ragya Manjunath from Jain University, Karnataka. 8-7. Now she gets one more point. Good. It's good to see that she's keeping her nerves cool. Now at 8-7. She would like to hold on to her serve and get a couple of more points as quickly as possible and put more pressure on Shweta Prasad. But brilliant forehand. Brilliant forehand from Shweta Prasad there on that occasion.
as she levels the score at 8-8. Look at that in replay. What a delightful little player she is, Sucheta Prasad from University of Kolkata. एक ऑल पर सर्व करती हैं इस समय सुचिता। अच्छी सर्विस, लेकिन उससे ये खराब रिटर्न, बिल्कुल भी इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती इस स्टेज पे आकर, और बढ़त पर पहुंचा दिया है इस गलती ने, अनुरज्ञा की इस गलती ने सुचिता को 1 पॉइंट से आगे कर दिया है। और इस बार गलती हालांकि थोड़ा सा ज्यादा एक्साइटेड हो गई, और जिसकी वजह से वो देखिए जब मौका था तो वो फोरहैंड पर गलती हुई उनसे। 9 ऑल इस समय स्कोर है, और थोड़ा सा मोमेंटम इस समय जो है वो शिफ्ट हुआ है। कुछ एक गलतियां हुई हैं जरूर, लेकिन इस बार बेहतर नजर आई हैं सुचिता प्रसाद के खिलाफ। अनुरज्ञा सर्व करती हुई फिलहाल, अनुरज्ञा और अच्छा अंक, बिल्कुल मनोबल बढ़ाएगा। एकदम सही जगह पर प्लेस किया, और जो स्पेस था राइट फ्लैंक में उसका यूटिलाइज किया। This is what I've been talking about, Anuragya Manjunath, even on earlier couple of occasions when she had this opportunity. She chose to go for a backhand cross table, but this is what I meant when she goes for that forehand strong drive on the sideline, as she seals the game and keeps her hopes alive. The sidelines also jubilant. See that in replay as she has a quick word, as she has retrieved her chances, keeping her hopes alive in this game number 3, winning it 11-9. Sucheta Prasad obviously will be disappointed, as you see on your TV screens, in yellow jersey representing University of Calcutta. Sucheta Prasad, she was so good in the first 2 games, winning comfortably with 11-7 and 11-8, but losing 9-11 will be hurting her, because she's almost exposed all that she had in her armory. It will be interesting to see Sucheta Prasad in game number 4, if she can bring about any more versatility and something which she has kept secret so far, because she's become a tad bit predictable, and that has been the cause of her downfall in as far as the third game is concerned. And Anuragya Manjunath saw that happening as players come back to the table in the midst of applause from their respective contingents. It will be Anuragya Manjunath who will be serving in this game number 4. Love all. तीसरे गेम को अपने नाम कर अनुरज्ञा ने वापसी की है। क्या उस मोमेंटम को चौथे गेम में भी बरकरार रखेंगे, देखना होगा। और ऐसी गलतियां अगर सामने से होती चली जाएंगी तो फिर वो वापसी थोड़ी आसान हो जाएगी, और अपनी मजबूती पे खेलने के साथ साथ जो आपका कमजोर पक्ष है उसको भी संभालने की जरूरत होती है, और फिर से इस चीज का ध्यान रखने की जरूरत। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के अंदर इस समय ये मुकाबला चल रहा है, और क्या खूबसूरत ये रिटर्न आया फोरहैंड पर, और बिल्कुल भी कहीं भी फ्रेम में नहीं थी जब वो रिटर्न आया फोरहैंड पे। क्रॉस कोर्ट जो वो रिटर्न था तो उसका कोई जवाब नहीं था अनन्या के पास। Forehand from Shweta Prasad would be the shot of the day as far as the style of playing is concerned. Shweta Prasad brought about serving Sucheta. Oh, lovely serve, lovely serve. Good side spin on the ball. Good response, but not like that, girl. You have to control the pace. She did all the hard work in the last rally. If we could go back in the replay, we'll find out that she was so good throughout the rally. It's just that the last shot she couldn't control and keep it on the table. Sucheta Prasad, such little mistakes on crucial junctions can prove fatal in a crucial match. Mind you, we are watching live action of Group A, third round match here between University of Kolkata and Jain University. एक बार फिर से ये गलती नेट पर होती हुई, और इस गलती का खामियाजा गंभीर हो सकता है। जिस तरीके से ये शेप ले रहा है मुकाबला, ऐसा लग रहा है कि 5वें गेम के अंदर ना जाए ये मुकाबला।
देशभक्त तरुण राम फाकोन नेहरू स्टेडियम के अंदर ये मुकाबला चलता हुआ। और इस समय अब सिर्फ एक अंक की बढ़त और उसको कभी भी खत्म कर सकती हैं सुचिता। और फिलहाल वो उसमें कामयाबी मिली नहीं और अंकों का फासला एक बार फिर से 2 अंक तक पहुंच गया है। देखिए लॉक करने का प्रयास था, वो डेलिकेट टच और वो बाउंस जो है वो टेबल पे मिला नहीं, जिसकी वजह से वो अंक मिलता हुआ अनुरज्ञा को। 5-3. और यहाँ पे ऐसा एक पल के लिए छोड़ सा दिया था अनुरज्ञा को, लगा कि शायद वो नेट से उलझ के गेंद वही रह जाएगी, लेकिन नेट से उलझने के बाद वो ड्रिबल होके दूसरी तरफ पहुंची और फिर थोड़ी सी परेशानी में नजर आई, बैलेंस बिगड़ा था वहां पर। अच्छा क्रॉस कोर्ट शॉट ये, और फोरहैंड पर जब वो रिटर्न आया अनुरज्ञा का तो वो फिर रिटर्न जाके नेट से टकराता हुआ। Lucky for Sucheta Prasad also, as it is, it was going out, but she has a tendency of swinging her arm. Lucky that she was able to connect it well, and good for her that 5-6. Anuragya Manjunath was not able to get the elevation from the net. Sucheta Prasad serving at 5-6. Good serve on the sideline, and that spin not only took away the pace but also kept it really flat, making it really difficult for Anuragya Manjunath. Look at that in the replay, how difficult was it. She committed into her shot, Manjunath, a little too early because of that spin that she had generated. Sucheta Prasad, she's a very cheeky character. She's looking a very deceptive player, that she's relying a lot on her spin-loaded serve. Backhand. Also good to see Sucheta now varying her game. She's using more of her forehand now. Obviously still relying a lot on her backhand, but good that she's bringing forehand into play as well now, Sucheta Prasad, as she is still lacking by 1 point at 7-6 as Anuragya Manjunath will be serving. Nice angle generated there. Good backhand. 6-8. So disheartening when she does so well in a rally. Good variation from backhand and forehand. Nice forehand there, but couldn't close it a little early. I think the spin was also the cause because on that occasion Manjunath brought that little chop, which kind of gave it a bit of a bounce, and she will have to wait for that return. And 6-9. not like that, going for that full throttle drive, closing the bat to face a little early. Look at that, hitting the top of the net. She was in a good position, but the elevation of the ball wasn't there. It was a lot flatter, and Anuragya Manjunath at 9. See, this kind of soft knocking is not going to help Sucheta Prasad because 10-6. बिल्कुल, और उसी की झलक दिखती हुई कुछ गलतियों और कुछ अच्छे शॉट की वजह से इस समय दूसरे गेम को लगातार जीतने की कगार पर हैं अनुरज्ञा। एक समय शुरू के 2 गेम हारने के बाद वो पिछड़ सी गई थी, लेकिन इस समय अब गेम पॉइंट पर सर्व किया और उसके बाद से अच्छी स्थिति में नजर आ रही हैं, लेकिन अभी भी उनके पास 3 गेम पॉइंट हैं। थोड़ा सा स्कफ किया और इस वजह से वो कनेक्शन नहीं बैठा। फिर से एक बार सर्व करती हूँ गेम पॉइंट पर, और इस बार कामयाबी मिलेगी और दूसरा गेम भी अपने नाम किया है। शुरू के 2 गेम हारे जरूर, लेकिन उसके बाद से बाकी 2 गेम अपने नाम करके अब डिसाइडर में पहुंचाया है इस मुकाबले को। 5वें गेम के अंदर अब इसका फैसला आना है, और इस चीज के लिए अब दोनों खिलाड़ियों को, दोनों पैडलर को तैयार रहना पड़ेगा। अपनी एनर्जी को फिर से इकट्ठा कीजिए और फिर आप इस मुकाबले में एक अच्छी तैयारी के साथ आइए। ये वो कुछ प्रमुख झलकियां इस मुकाबले की, जहां पर शुरुआत अच्छी देखने को मिली हमें सुचिता प्रसाद की तरफ से, जबकि अनुरज्ञा मंजुनाथ ने भी
कुछ अच्छे प्रदर्शन की बदौलत इस मुकाबले में खुद को बनाए रखा है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के अंदर वुमेन्स टीम में ग्रुप ए का मुकाबला तीसरे दौर में चलता हुआ, और यकीनन अब हम डिसाइडर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वहां और भी कड़ा होता चला जाएगा मुकाबला। As the players make their way back to the table for the final and fifth decider game, Anuragya Manjunath, the momentum she has shifted in the last few games will definitely help her cause, but Sucheta Prasad looking good now. Not only she has brought a little speed into her returns, but also hitting it a little shorter to the net and wider the angle, making Anuragya Manjunath work for her rallies. And that is the result that she compelled Manjunath to hit that one out of the table. Yes, like that. Good variation on that part of Sucheta Prasad, keeping it flat and slow. There you see, was very flat and low. And the mistake that Anuragya Manjunath made, that she was stranded. She didn't really try to move her body or crouch a little bit so that she could get the elevation. Now with a lead of 3-0, it will be Anuragya Manjunath will be a little bit of under pressure. She can sense the touch of urgency in Sucheta Prasad's game. Good wide angle there. She knew that Sucheta is a little wide on the corner of the table. And even though there was not much pace in her return from Anuragya Manjunath, but that soft backhand was wide enough to create the trouble for Sucheta Prasad. अच्छा लगा कि अब थोड़ा देर से सही, लेकिन अब कमजोरी सामने वाले खिलाड़ी की अनुराग्या ने थोड़ी सी समझ ली है और अपना जो रीच है उसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं। सुचिता के कंपैरिजन में अनुराग्या की जो रीच है वो ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है और इसका एडवांटेज मिलना भी चाहिए। इस समय लगातार 3 गलतियों की वजह से स्कोर जो है अब अनुराग्या के पक्ष में है, 3-3 की बराबरी पर पहुंच गया है और 3-3 की बराबरी के साथ इस समय अब सर्व करेंगी अनुराग्या। और एक बार फिर से एक और गलती, ऐसे अनफोर्स्ड एरर बहुत भारी पड़ने वाले हैं। एक समय 2-0 से लीड कर रही थी सुचिता, लेकिन इस समय अब देखिए इस गेम के अंदर पिछड़ती नजर आ रही हैं और एक और गलतियां लगातार हो रही हैं। 5वें और डिसाइडर सेट में अब साइड चेंज होंगे, क्योंकि ये डिसाइडर में रूल है कि आपको 5 अंक के बाद आप अपना साइड चेंज कर सकते हैं। We'll have to see if changing side will bring any change in fortunes for Sucheta Prasad. Also, the timeout has been taken by the players, and rightly so. Most of the players don't want to mentally exhaust themselves in a decider. It's a long match under a lot of pressure. Look at the highlights, how this game has panned out so far. Those unforced errors on part of Anuragya Manjunath. It's good that she rectified those unforced errors quite early in this match, realizing that Sucheta Prasad has become a tad bit predictable as well. As players make way back to the table, it is Anuragya Manjunath who first makes and picks up her bat. That tells you that she is literally rearing to go, as Sucheta Prasad still walking slowly towards with a towel in her hand. It is Sucheta's serve. She will be serving at 3-5, a very important junction, as you rightly pointed out, Vikas, after changing the side. Let's see if fortunes also change for Sucheta Prasad of University of Calcutta, who is serving against University of Karnataka, Jain University. Into the net, that backhand, she was a little over anxious there. Now 4-5 for Sucheta Prasad. Let's see if she can bring out
Anything new from her armory? Oh, good forehand. 5 all. Nice speed into it. Even though Manjunath was able to connect it, but couldn't keep it down on the table. That would boost Sucheta Prasad's confidence. And it's very difficult to read. She's got a poker face. Very difficult to read Sucheta Prasad on your TV screen in yellow jersey. Her expression. It's very difficult to read her mind. She's got a very, very calm countenance. Soft knocking there, going for a little forceful drive. A good backhand from Sucheta Prasad, flat and fast. And Manragya Manjunath makes another mistake, another unforced error, hitting that one into the net. Look at that in the replay. You will understand that how this rally was literally controlled by Sucheta Prasad. अच्छी रैली और उसके बाद से अब एक बार फिर से मुकाबले में वापस आती हुई सुचिता प्रसाद यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता की। इस बार फिर से वही गलती, फिर से वो नेट पर बार बार की गलतियां भारी पड़ती हुई। 2 अंक से पीछे चल रही थी सुचिता प्रसाद और टाइम आउट के बाद बिल्कुल से परिस्थितियां चेंज सी हो गई हैं और इस समय अब 2 अंकों की बढ़त पर सर्व करेंगी। 7-5 पर सर्विस सुचिता की। एक और गलती, कभी नेट पर तो कभी बैकलाइन पर, यही कहानी रही है। Because did I hear a shrek from Sucheta Prasad? I think this is for the first time in this match I have seen the girl making some sound. She has been absolutely calm as a cucumber. But mind you, this is another shout and strike from Sucheta Prasad, pumping that fist into you. And why not? She has literally come back from down and out situation. Now in a very, very commanding and strong position. She will be taking on Manjunath's serve at 5-9. Just seeing that forehand coming. Look at that. Unfortunately, couldn't control. It was a very, very correct option going for that sideline forehand drive. But just that she was away from her body. She couldn't put her body weight into it. Had she come in a better position, probably she would have. Oh, look at that beautiful forehand. Beautiful backhand, I beg your pardon. And what an angle. What an angle Shweta Prasad had produced just at the right moment, just when she needed. And now 4 game points and 4 match points for Sucheta Prasad. क्या इस मुकाबले में कुछ और रोमांच बाकी है, देखना होगा। लेकिन बिल्कुल भी नहीं। फोरहैंड पे एक जबरदस्त शॉट के साथ इस मुकाबले को फिनिश किया है सुचिता प्रसाद ने। शुरुआती 2 गेम जीता, उसके बाद पिछले 2 गेम हारी थी, लेकिन निर्णायक समय जब आया तो उन्होंने अपने नर्व पे कंट्रोल किया और 11-6 से 5वें और निर्णायक गेम को अपने नाम करके इस मुकाबले में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता को जीत दिलाई है। एक अच्छी वापसी। पहला मुकाबला जरूर हारी थी यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता की टीम, लेकिन इसके बाद अब 1-1 की बराबरी पर पहुंच चुका है ये मुकाबला। देखिए इस मुकाबले की झलकियां, जहां पे आपको ज्यादातर समय सुचिता प्रसाद शुरुआती लम्हों में लीड करती नजर आएंगी और उनके कंट्रोल भी बहुत सही रहे थे, लेकिन जैसे जैसे गेम आगे बढ़ा और दूसरे के बाद तीसरे और चौथे गेम में यकीनन प्रभावशाली खेल दिखाया अनुरज्ञा ने, लेकिन इसके बाद जब निर्णायक समय आया तो वहां सुचिता ने एक बार फिर से अपनी क्लास दिखाई और बहुत शांति से और आराम से ऐसा लगा कि गेम को अपने नाम कर लिया। Absolutely, it was one of the most delightful and sensational match that we watched throughout the day. Men's and women's events both included, and hats off to Sucheta Prasad for keeping her cool. And one thing is for sure, that this contest between Jain University of Karnataka versus University of Kolkata is definitely going into reverse singles now. And to take you further in the third match, in the commentary box, it will be Anil Sharma and Shriman Srinivasan. बहुत धन्यवाद पांडे जी एंड मौर्य जी। It was really
इतनी खूबसूरती से आपने पूरे खेल के बारे में बताया। और जैसा कि अब हम देख रहे हैं, दिस इज वोमेन टीम ग्रुप ए राउंड 3, तीसरा मुकाबला, और ये होगा जैन यूनिवर्सिटी वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। करुणा गजेंद्रन रेड 223 आप देख सकते हैं, और सामने आकांक्षा दास 257 कलकत्ता यूनिवर्सिटी की। और इस जो एम्पायर है, जैसे कि टॉस करना एम्पायर 1 अतुल सती केरला के, और आकांक्षा दास 257, और ये टॉस हार गई शायद 223। करुणा गजेंद्र ने साइड चूज किया है। तो फेसिंग द कैमरा इज जैन यूनिवर्सिटी की करुणा गजेंद्र, और दूसरी तरफ है कलकत्ता यूनिवर्सिटी की आकांक्षा दास। आकांक्षा दास के बारे में हम आपको बता दें, आकांक्षा दास की उम्र है 22, और वो मास्टर्स इन अकाउंटेंसी BCom की छात्रा है, सेकेंड ईयर। उन्होंने वेस्ट बंगाल को रिप्रेजेंट किया है एट कैडेट एंड सब जूनियर इवेंट एट द नेशनल चैंपियनशिप, और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने रिप्रेजेंट किया है एज अ मेंबर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता इन द ईयर 2019, 2021, 2023, और ये तीसरी बार उन्होंने हिस्सा। इसके पहले प्लेड एट द फर्स्ट एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2019-20 उड़ीसा कटक में जो हुआ था, और ये दूसरी बार वो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में भाग ले रही है। और गोल्ड मेडलिस्ट है ईस्ट जोन यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप, जो कि भुवनेश्वर में हुई थी 2019 में। दूसरी तरफ सिल्वर मेडलिस्ट भी है ईस्ट जोन यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप 2023, जो कि गुवाहाटी में हुई थी। This is a women's team A around 3 in this Khelo India University Games being held at Tarun Ram Phukan Indoor Stadium in Guwahati. And this match will be between Karuna Gajendra of Jain University in Karnataka taking on from Calcutta University Akansha Das. This player is just warming up before the match. दोनों खिलाड़ी थोड़ा सा वार्म अप करते हुए, जो कि 5 मिनट का समय दिया जाता है, और ये तीसरा मुकाबला होगा वोमेन्स टीम का ग्रुप ए राउंड 3 का, और दूसरा दिन है। चौथा संस्करण ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 अष्टलक्ष्मी, जो इस वक्त नॉर्थ ईस्ट में आसाम के अलावा 5 अन्य राज्यों द्वारा आयोजित किया गया है, और 200 से ज्यादा यूनिवर्सिटी इसमें भाग ले रही है। 20 अलग अलग स्पोर्ट्स, और टेबल टेनिस में 16 यूनिवर्सिटियां भाग ले रही है। ये बहुत ही सुनहरा मौका है सभी उभरते हुए खिलाड़ियों के लिए। और अब सर्विस करते हुए आकांक्षा दास, अच्छी रैली, दोनों खिलाड़ी नेट के काफी नजदीक खेलते हुए। बहुत बढ़िया फोरहैंड शॉट, मगर उतनी ही कोशिश जरूर की थी वहां पर करुणा गाजेंद्र ने, मगर उनको सफलता नहीं मिली। एक खाता खोला आकांक्षा दास ने 1-0 से। Just trying to go for that backhand. Akansha Das putting into the net, 1-all, and Karuna serving. There's a terrific aggression there on the forehand from Karuna Gajendra, picking up that point. 2-1. Good thinking, but not a good execution. Trying to force that point on the forehand. Could have kept the ball in play, but hit it long. Akansha Das. 3-2. That's a good point. Deep return. Let. So the scoreline updated there. Quickly going on to the forehand.
Karuna Gajendran picking up that point with a stamp of authority there. Quick movement there. Have a look at that. There she is going on to the forehand cross court. Lot of power on that. 3-all. Karuna Gajendra serving. Both the players on the backhand. 4-3. And as Karuna Gajendran was whipping it on the backhand, look at that. That is what is forcing that error. Lot of power on that. Quit thinking 3-5. yet again. Just going on that relentless attack on the forehand cross court. Changing that angle. See the power. And it again. And completely miscuing it. Kanshada serving 3-5. 3-6. Just missing the table there. Down 3-6. Akansha Das, Calcutta University. This time Karuna Das making that unforced error, trying to force that point. And erratic return going long. 6-4 2-point lead for Jain University. Oh, very good thinking here. 5. Quickly changing the flanks and going on the backhand, going on the cross court. Akansha Das, look at the point here. Very good flick on the backhand. 6-5. Karuna Gajendran. Oh, this is a good thinking, seeing that Akansha Das just moving to her left, wanted to go on the forehand cross court, putting it out. There it is. Look at that. She saw that opportunity but hit it wide. ये शॉट उन्होंने 4 बार कोशिश की थी मगर उनको सफलता सिर्फ एक ही बार मिली है और ये इनका फेवरेट शॉट है मगर हर वक्त उनका वो साथ नहीं देता। आकांक्षा दास सर्विस करते हुए 6 की बराबरी पर बहुत बढ़िया उनका बड़ी ताकत बैकहैंड स्मैश और काफी धैर्यपूर्ण तरीके से अपनी इस खेल को आगे बढ़ाते हुए 6 से आगे एक अंक की बढ़ोतरी। फिर से बढ़िया सर्विस नेट के पास यहाँ पर 7-7 की बराबरी। Pretty evenly contested opening set. That is the last point. Now it is Karuna Gajendran serving. Look at that. Lot of power on the backhand from Akansha Das. Picking that point, 8-7. Good backhand slice. Picked again. And great, trying to go for that forehand. Going for that powerful smash. Hitting it long. So 2-point lead in favor of Akansha Das of Calcutta University, 9-7. See, when you serve, the receiver has to look at the hand, the wrist, which way she is going to serve. And that is completely miscued on the backhand by Karuna. तारीफ करनी पड़ेगी आकांक्षा दास की। उन्होंने भाप लिया था कि फोरहैंड पे देना काफी जोखिम भरा हो सकता है और उन्होंने बिल्कुल राइट इन साइड में उनको खिलवाया और पहला दूसरा तीसरे प्रयास में उनको सफलता मिली। एक और सर्विस के तरफ आकांक्षा दास 10-7 3 अंकों की बढ़त और ये लकी पॉइंट और 11-7 से पहला गेम जीत लिया। First game in favor of Calcutta University. Akansha Das picking it up at 11-7. Look at the highlights of this particular game. Oh, that is a powerful stroke from Karuna. This was a good attack on the forehand. Good that backhand slice serve. Forcing that point. Very good side spin on that. And it again. And what a return from Akansha Das. Creating a lot of power on that backhand. There's a slowing down the pace here by Gajendran. Again.
Now suddenly coming up with change that power, change that depth on that return, but hit it long. See it again, trying to slow down the pace. That is where going for that backspin and slowing down the rally. That's a Second game. whipping backhand, but taking the net and going long. Jain to serve. So that is where the first game had been Now all. wrapped up. 11-7 in favor of Kolkata. दूसरे गेम की शुरुआत Now और one. पहला खाता खोला आकांक्षा दास को एक बोनस अंक 1-0 से आगे और सर्विस करती हुई करुणा जैन यूनिवर्सिटी की और ये One कोशिश जरूर की थी मगर भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया और अब 1-1 की बराबरी सर्विस फॉर आकांक्षा दास कलकत्ता यूनिवर्सिटी 1-1 पर नेट के काफी करीब और फिर से 2-1. 2-1 एक अंक की बढ़त। आकांक्षा दास की सबसे बड़ी ताकत है जो मैं देख रहा हूं कि उनका पेशेंस लेवल जो है वो बहुत ज्यादा है, काफी धैर्यपूर्वक 2-all. पहले मैच में भी हमने देखा 11-7 किसी भी तरफ वो मैच मुड़ सकता था मगर अंत में जीत है आकांक्षा दास की। और 3-2. दूसरे मैच में भी 2-2 की बराबरी। दोनों खिलाड़ी को खेलने की जो शैली है, जो तरीका है, थोड़ा अलग है। एक फोरहैंड प्लेयर है, एक बैकहैंड प्लेयर है और दोनों अपने अपने स्ट्रेंथ पर खेल रहे हैं। 2-4. That is a good backspin serve set up that point. Actually, that is where she is not able to control that return. Akansha Das hitting it long. It's 2-4. Akansha Das. Three, 4. Trying to close out the point early, bit over anxious. Karuna Gajendran going for that forehand, hitting it long. 3-4. Das. 5-3. Trying to go for that backhand flick, hitting it long. 5-3. Karuna Gajendran. Good backspin serve. Setting up that point very well. When you have the backspin, the ball also tends to go slow after pitching. That is where, look at this. That gave a big opportunity for Gajendran to go for the winner. 6-3. करुणा गाजेंद्र जब ये शॉट खेलती है तो किसी भी खिलाड़ी के लिए 4-6. शॉट को रोकने का या उसको असफल बनाने का प्रयास करने में उनको सफलता कभी नहीं मिलती। ये इनकी सबसे बड़ी ताकत है। और जैसा कि हम देख रहे हैं स्कोर हो गया है 6-4, 4-6 पे सर्विस करती हुई और फिर से एक बार 4-7. अच्छी शुरुआत होने के बाद अपने शॉट को कंट्रोल नहीं कर पाए। अभी भी 4-7 ही लगने की बढ़त यहाँ पर करुणा गाजेंद्र और ये 4-7. मैच दूसरा गेम बहुत महत्वपूर्ण है करुणा गाजेंद्र के लिए। उनको जीतना होगा अगर इस गेम में बने रहना है तो। जहाँ तक उनका 7-5. जरूरत से ज्यादा आक्रामक खेल कभी कभी काफी महंगा पड़ जाता है और उसकी भरपाई भी नहीं होती। 7-5 इन 5 अंकों में से 3 अंक जो आकांक्षा दास है वो सारे बोनस अंक है, मुफ्त में मिले हुए अंक है। करुणा गाजेंद्र उसी 7-6. अवसर और मौके की तलाश में, मगर हर वक्त वो जो चाहती है वैसा नहीं हो सकता। काफी नाखुश अपने आप से फिर से सर्विस करती हुई 6-7, 7-6 माफ कीजिएगा। 7-all. और अब स्कोर हो गया है 7-7 की बराबरी पे। Tremendous power on that forehand with a side spin. 7-all. Das. Eight, 7.
Both the players are giving some powerful deep returns. Look at that one. She could have just blocked that instead. 8-7. Das. Very good 7, serve. Good 9. thinking there. It was a pretty short spun serve. You have to read the hand, what kind of serve you are going to receive. 7-9. 8, This time 9. Akansha Das hurrying it up with the attacker. Tapping it long. 8-9. Gajendran. There was no 10, need to 8. hurry it up like that. Could have kept the ball in play. Gajendran, look at that. Wanted to close it out, but close the face of the paddle fast. That is where the ball going into the net. करुणा गजेंद्रन को जरूरत से ज्यादा जल्दबाजी काफी महंगी पड़ सकती है. Sets up 2 game points in favor of Das, serving at 10-8. Finishing it with 11, that very 8. good powerful Game forehand 2, cross-court smash. Kolkata. And the return from Gajendran. See, setting up that point so beautifully. Tremendous power on that. That is where the error from Gajendran. 11-8 is the score. They set the game number 2. So it's very important in Jain University point of view that Gajendran has to win this third game, and Das on the picture frame having a word with the coach. In fact, accepting that she hurried up some of the returns, I don't think there was anything much of a deficit in her game. नहीं उनके खेल में आकांक्षा का दास का जो खेल था बिल्कुल बैलेंस था. उन्होंने इंतजार किया. सबसे उनकी ताकत यह है कि वो वेट करती है, इंतजार करती है कि सामने वाला जो प्रतिद्वंदी खिलाड़ी है वो गलती करे. और जैसा कि हमने देखा करुणा गजेंद्र पहले 1-2 प्रयास काफी अच्छा करती है, मगर जो फिनिशिंग पार्ट है वहाँ उनसे चूक हो जाती है. और कम से कम 4 या 5 अंक उन्होंने मुफ्त में दिए हैं आकांक्षा दास को. That's because of the anxiety to close out the point to finish the rally. जो दर्शक हमसे Third देश game. से जुड़े उनको हम बता दें कि इस वक्त ये डीडी स्पोर्ट पर आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं. तनुनम फुकुइनो स्टेडियम Calcutta to serve. आरजी बरुआ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गुवाहाटी से, जहां पर Now चौथा off. संस्करण खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 अष्टलक्ष्मी पूर्वोत्तर के 6 राज्यों में खेला जा रहा है. 11 स्पोर्ट्स गुवाहाटी में और बाकी पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में. अब ये गेम नंबर 3 पहले 2 गेम Now जीतने one. के बाद आकांक्षा दास थोड़ी सी उनका आत्मविश्वास जरूर थोड़ा लेवल ऊपर होगा, मगर दूसरी तरफ करुणा गजेंद्र इतना अच्छा वो बेहतरीन प्रदर्शन करने के बाद भी अगर वो हार जाती है तो थोड़ा सा उनके अपने खेल में बदलाव लाना बहुत जरूरी है. So it's 2-love. Gajendran serving, taking her time to serve, the right thing to do. Two, 1. Yet again, Karuna Gajendran trying to close out the point. He could have kept the ball in play. 2-1. That was a relentless attack from Gajendran, but in the end, as the returns were also coming in from Das, and again overheating it in her anxiety to close out the point. 2-all, and it is now Das serving. Goes for the backhand serve. 2-3. Very nicely countered that spin on the as a return of serve by Gajendran. That is why the error from Das. Serving down 2-3. आकांक्षा दास की कोशिश ये रहती है कि वो बिल्कुल कोने पे खिलाए करुणा गजेंद्र को, 4-2. क्योंकि करुणा गजेंद्र को फोरहैंड स्मैश, फोरहैंड ड्राइव उनकी सबसे बड़ी ताकत है. हालांकि हर वक्त उनको उसमें सफलता नहीं मिलती, मगर जब भी उनको अवसर या मौका मिलता है वो प्रयास जरूर करती है. एक बार फिर से दोनों खिलाड़ी नेट के काफी करीब, टेबल के भी बिल्कुल इंतजार करते हुए ये अच्छी रैली है. और यहाँ पर आकांक्षा दास ने वही गलती की जो करुणा गजेंद्र पिछले कई पॉइंट में कर चुकी है.
तो इस तरह से एक अंक गंवाया और अब स्कोर हो गया है 5-2 पर सर्विस करते हुए करुणा गाजेंद्र। Lovely small little rally, but Gajendra not able to close it out, putting it into the net. Swift rally it was. 2-6. What a power on the forehand cross court from Gajendra. ये जो 4 अंकों की बढ़त है, 1 अंक अब कम हो गया है। 3 अंकों की जो बढ़त है, इसको जल्द से जल्द इस फासले को कम करना बहुत जरूरी है आकांक्षा दास के लिए। 7-3. Karuna Gajendran getting that point in that rally as Das was not able to control that return. There it is, overheating it. 8-3. Very nicely Gajendran trying to slow down the pace on that little rally. 8-3. She needs to pick up this game. 3-9. Again, unforced error from Das, trying to scoop that forehand, hitting it long. 9-3, 2 points away from wrapping up this game number 3 for Karuna Gajendra. तीसरे गेम में करुणा गजेंद्र ने बढ़त ही नहीं बनाई है, बल्कि दबाव बनाए हुए है। काफी मनोवैज्ञानिक दबाव है आकांक्षा दास के ऊपर। वो जानती है कि वो पिछड़ रही है 6 अंकों से और 1 और अंक की बढ़ोतरी होगी। अब 10-3। 7 game points for Karuna Gajendra. Completely in control of this particular game. Good serve on the backhand. 10-4. This time she's just the backhand letting her down, trying to close it out, being a game point. Still 10-4, 6 game points in her favor. Good backhand slice. Going on to the forehand. 10-5. And yet another good point. Das survives in this game. Look at that. Lot of power on that from Das, extracting that error. Again a good backhand slice. No, this time she's trying to change the angle and scooping it long. Very interesting, getting dragged. Still in the game, Das. आकांक्षा दास का जो खेलने की शैली है बिल्कुल सीधी और सरल। वो ज्यादा कुछ जरूरत से ज्यादा अधिक कुछ नहीं करती, मौके का इंतजार करती है। अब सर्विस करते हुए 6-10 पर 4 अंकों से पिछड़ती हुई। एक बार फिर से वही दोबारा लगातार तीसरी बार ये गलती की और 11-6 से तीसरा गेम करुणा गाजेंद्र ने बहुत बढ़िया कमबैक किया है। इस तीसरे गेम में 2-1 से पिछड़ रही है। Absolutely good comeback by Karuna Gajendran from Jain University, losing the first 2 games 7-11, 8-11. Coming back strongly in the third game, finishing it at 11-6. Word of advice from the coach to Akanksha Das. She did a lot of unforced errors, and definitely Gajendran came back very nicely. And have a look at the highlights of the game number 3, which Gajendran took at 11-6 comfortably. And you can also see some of those unforced errors coming in from Akanksha Das, but of course not on that occasion. And see here, just that forehand push. Both the players choosing to keep the ball on the table, not taking undue risks. Good rally. That takes us to this game number 4. Akanksha Das in her picture frame, taking the first 2 games and then losing the game number 3. That is what is taking the particular match on to the 4th game. बिल्कुल सही। जैन यूनिवर्सिटी की करुणा गाजेंद्र 4th game. लाल रंग की जैन टी शर्ट में 223 नंबर जर्सी और यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता की आकांक्षा दास फेसिंग द कैमरा। सर्विस फॉर करुणा गाजेंद्र तीसरे मैच में कमबैक करने के बाद सर्विस करती हुई। और ये पहला
Love 1. अंक खाता खोला यहाँ आकांक्षा दास ने 1-0 की बढ़त. अभी भी सर्विस करुणा के पास. अब तक की सबसे शानदार रैली है, सबसे जबरदस्त दोनों ही खिलाड़ियों का प्रदर्शन. लेफ्ट राइट बाएं दाएं, फोरहैंड बैकहैंड, और अंत में किसी एक खिलाड़ी का तो पेशेंस. और ये अंक 1-1 की बराबरी दोनों खिलाड़ी. सर्विस फॉर आकांक्षा दास. Suddenly change that 2-1. pace and depth on the return. Akansha Das on the forehand. That is where the error coming from Gajendran. 2-1 Das. One, 3. Trying to go on the backhand push, overhitting it. Karuna there. No control on that. 3-1 lead for Das. Again, a change in the 2-3. pace. Completely miscued return from Das. 2-3. 4-2. Again in a hurry to close it out. That is a very good rally. Short rally, but a good one. For a moment, from Jain University, Gajendran was in control, it looked, but then in the end, making that error on the forehand, trying to go for a 4-2. cover and hitting it long. 4-2 Das serving. Good spun serve. 4-3. For a moment, the return was good. Have a look at that return. That is what extractor. You need to sense it. What kind of serve it is? Is it on the left or on the right on the side spin, or it is no spin serve or a backspin serve? Read it on the hand and try to return it. She did very well to return that. Oh, there's a powerful smash on forehand by Das. When we talk of Anil in cricket, they say you read the googly, read the finger, look at the finger of the bowler, and that's exactly the case here. You have to look at the hand of the server to return it. मैं आपसे पहले कुछ बोलना चाहता था. स्टांस और जिस तरह से आप अपने रैकेट को पकड़ते हैं, the way you are, that's also very important. The foundation of the game. Absolutely, the kind of grip you're talking about. It can be a handshake grip or it can be pen grip. बिल्कुल सही, क्योंकि वही डिसाइड करता है कि आपका शॉट किस तरह और सही तरीके से जाएगा कि नहीं. You see, personally, I always would like to see the, go for, the handshake grip, because it's easy for you to move quickly onto the backhand when you have that kind of a grip. वो किसी भी खिलाड़ी की नींव होती है, फाउंडेशन होता है, और उसके बाद उसका जो स्टांस होता है, क्या वो टेबल के बहुत करीब है या दूर है, खिलाड़ी लंबा है या उनकी हाइट कम है. आप ये देख सकते हैं हाइलाइट्स पिछले जो खेल अंक जो अर्जित किए दोनों खिलाड़ियों ने. ये देखिए फिर से बैक हैंड की कोशिश, मगर उतना स्ट्रेंथ नहीं है करुणा गजेंद्र का. उनका जो स्ट्रेंथ है जो फोर हैंड है, वहां पर उनको कोई भी तकलीफ नहीं है, कोई भी दिक्कतें नहीं आती. मगर बैक हैंड में थोड़ी सी कभी कभी उतनी सफलता उनको नहीं मिलती जितना फोर हैंड में उनको अंक मिलते हैं. That is why the opponent always try to see which could be the weaker part in the game in the opponent, and then try to go on the relentless attack on the backhand. It happens, and of course you don't have much time. Otherwise, normally the tendency is to convert the backhand into the forehand by quickly moving to the left, but that takes a little bit of a time, and that's where errors come in also. ताल और लय जो एक खिलाड़ी की होती है, चाहे वो पहले गेम में हो या दूसरे में हो या तीसरे में हो. अभी मैंने देखा दोनों खिलाड़ियों की जो लय है वो बिल्कुल वापस लौट के आई है, और दोनों खेलने का जो तरीका है बिल्कुल थोड़ा बदल गया. 7-3. Das serving. 7-3. Good toss. Actually, that was read very well by Karuna. That serve. When you high toss, you have, normally you tend to deceive the opponent, but then Karuna was judging it very well. Good return. That's that of the point. 7-4.
What a powerful returns from both the players trying to close at the point. Absolutely attacking game, what do you say? Fantastic. 8-4 lead for इसी Das. तरह के खेल से जो रोचकता बढ़ती है खेल के अंदर में, खास करके टेबल टेनिस में, कौन खिलाड़ी जीत रहा है कौन हार रहा है यह तो अंत में पता चलता है, मगर फिर भी इस तरह के खेल से जो रोचकता पैदा होती है दर्शकों में, और जो भूतपूर्व खिलाड़ी है उनको भी अपनी जो जब वो खिलाड़ी थे और ये खेल का जो नज़ारा हम देख रहे हैं इस वक्त बिल्कुल अलग, खास करके ये चौथा गेम है और ये बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके जैन यूनिवर्सिटी के लिए मैं कहूँगा करुणा। लेकिन दूसरी तरफ आकांक्षा दास चाहेगी कि जो बढ़त बना के रखी है उसको और बढ़ाए वो। 8-6. The serve 9-6. that brings up just 2 points to wrap up this match. 9-6. Completely mistiming it. Gajendran. High toss, good serve. 6-10. What an anticipation by Das. In fact, for a moment I thought that Gajendran's return was superb with a side spin. इसमें कोई शक नहीं है, लाजवाब शॉट। यहाँ पर टेक्निक और टैलेंट के अलावा टेम्परामेंट काफी महत्वपूर्ण रखता है। 4 match points. One is saved by Gajendran. So it is 7-10. She's serving. Still not out of trouble. Preparing to serve. Underspin serve. Backspin. Oh, what an attacking forehand. This is what she needed. Probably a little earlier as well. Look at that control. Look at the way, the control, the shoulder movement also. Still 2 game points, 2 match points. लाजवाब शॉट है। Perfect. Das prepares to serve. 2 match points in her pocket. Oh, squandering one of them. Still a match point. 10-9. What a comeback by Jain University's Karuna Gajendran. Taking the time to serve. The right thing to do. Not hurry up. Anxiously waiting is Gajendran there. 10-9 match point for Akansha Das. There it is. What a powerful backhand. Game 2. From Akansha Das Calcutta with that University. 11-9 the game University score. wins the match 3-1. Wrapping up the match in 4 games from Calcutta University, Akansha Das. जैसा कि मैंने कहा था, दोनों ही खिलाड़ी काफी प्रतिभावान है, प्रतिभाशाली है और अनुभव की कोई कमी नहीं है आकांक्षा दास में। और जैसा कि उन्होंने पहले 2 मैच से अपने प्रदर्शन का एक बताया था कि किस स्तर के खिलाड़ी है, मगर दूसरी तरफ तारीफ करनी पड़ेगी करुणा गाजेंद्र की, जिन्होंने बहुत बड़ी वापसी की थी तीसरे मैच में, लेकिन चौथे मैच में आकांक्षा दास ने फिर से साबित कर दिया कि दोनों में से कौन बेहतर खिलाड़ी है। तो इस तरह से बेस्ट ऑफ 5 में 4 मैच में 3 गेम आकांक्षा दास कलकत्ता यूनिवर्सिटी उन्होंने जीता और 1 मैच करुणा गाजेंद्र ने जीता। तो अब हम चलेंगे अगले मैच के लिए, जो कि होगा यशस्विनी गोरपाडे और सुचिता प्रसाद के बीच में। और सुचिता प्रसाद जो कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी की तरफ से खेलेगी और जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटक की तरफ से यशस्विनी गोरपाडे। और हम दर्शकों को बता दें कि आज दूसरा दिन है, ये 3rd एडिशन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020-23, इसका सीधा प्रसारण 2023 इसका आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं यहाँ पर तरुण राम फुको इंडोर स्टेडियम आरजी बर्मा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गुवाहाटी से। और 16 यूनिवर्सिटियाँ इस टूर्नामेंट में टेलीविजन टेबल टेनिस टूर्नामेंट में भाग ले रही है। और आज दूसरा दिन है और इसके बाद 2 और दिन है। ये तीसरा राउंड चल रहा है अभी, ग्रुप ए का राउंड 3। तो अब तक के 3 मुकाबले में अब चौथे मुकाबले की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन इससे पहले हमारी कमेंट्री टीम में बदलाव, जैसा कि हमेशा होता है।
मौर्य जी और पांडे जी हमारे साथ हैं, हम उनका फिर से स्वागत करें। शुक्रिया शर्मा जी। और यकीनन एक अच्छे मुकाबले की तरफ हम बढ़ चले हैं, क्योंकि अब रिवर्स सिंगल्स की शुरुआत होने जा रही है। क्योंकि शुरुआती जो मुकाबला था यशस्विनी घोरपड़े ने जहां जीता था यूनिवर्सिटी ऑफ जैन के लिए, जो कर्नाटका की है, तो वहीं दूसरा मुकाबला वो सुचिता प्रसाद ने जीता था यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता की। उसके बाद तीसरा मुकाबला जब हुआ तभी अभी आकांक्षा दास जो थे यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता की हैं, उन्होंने परास्त किया करुणा को। और अब ये मुकाबला पहुंचा है रिवर्स सिंगल्स में, जहां पर यशस्विनी घोरपड़े का सामना होने जा रहा है सुचिता प्रसाद का। दोनों अपने अपने मुकाबले जीत कर आए हैं यहाँ पर। ऐसे में एक दिलचस्प मुकाबले की उम्मीद हम कर सकते हैं। यकीनन सुचिता प्रसाद का वो मुकाबला याद आ रहा है अक्षय, जब उन्होंने गेम तक चले मुकाबले में अनुज्ञा मंजुनाथन को हराया था। चलिए रिवर्स सिंगल्स की शुरुआत। और अक्षय, पहली कमेंट आपकी तरफ से। Well, my first comment would be that I'm very happy to be back in the commentary box, especially watching this sensational Sucheta Prasad. Just a little while ago, before this match between Akanksha Das and Karuna Gajendran, we were in the box commentating on Sucheta Prasad and Ragya Manjunath. And as you rightly reminded people, all the viewers on Doordarshan, that it went into a 5-setter, 5 games. So that will be a bit of a concern, because she's a tiny little player and must have feeling exhausted, whereas Yashaswini Ghorpade won comfortably the first match between Mahek Das and herself in straight sets of 11-8, 11-5 and 11-7. So Yashaswini Ghorpade has had not only rested, but she's been able to conserve her energy. And but looking at the moment, that ferocious forehand, good rally, but couldn't keep it onto the table. Good to see that aggression from Sucheta Prasad in this first reverse single that we are watching. And she's challenging Yashaswini Ghorpade as the scores are stands at 2-1. 2-3. With that little unforced error on part of Sucheta Prasad, the scores are leveled at or 4-2. Yashaswini Ghorpade going for that strong forehand cross table, and look at that, brilliant, just touching the edge of the sides of the table, and what an accurate forehand it is. Obviously when you hit it successfully, it looks all the more good looking, but one has to say Yashaswini Ghorpade has looked in good nick after that well rested 5-2. an hour or so in this contest between Jain University and University of Calcutta. पिछले 2 अंक जिस तरीके से हासिल किया है यशस्विनी ने, वो कमाल का फोरहैंड उनके तरफ से स्मैश देखने को मिला है। उसकी बदौलत एक बढ़त जो है वो 3 अंकों तक पहुंचाई थी। हालांकि एक गलती उनकी तरफ से नेट पे हुई है, और इस समय एक बार फिर से मौका वापसी का सुचिता के पास, लेकिन 3-6. अभी भी वो वापसी की तलाश में। रिटर्न एक बार फिर से जबरदस्त, और बिल्कुल संभाल नहीं पाई सुचिता वहां पर। 3 अंकों की वो बढ़त। 7-3. और एक बार फिर से वो गलती लगातार भारी पड़ेगी। अगर इस तरीके की गलतियां होंगी तो मुश्किल हो जाएगा सुचिता के लिए। यशस्विनी कमाल का एक बार फिर से फोरहैंड पे वो शॉट आया, और इसका कोई जवाब था नहीं। स्पेस का पूरा इस्तेमाल किया। Also good use of the side of the net on that occasion from Yashaswini Ghorpade. So she's looking extremely good, extremely dangerous, and look at that backhand. Beautiful cross court from the middle of the table. Look at that placement.
As far as Sucheta Prasad is concerned, she had no chance whatsoever, and in no time, Yashashwini Ghorpade is receiving that serve at the 3-9. Brilliant work once again, looking to go for that cross table forehand. Just that couldn't keep it on the table. Hitting it long. Sucheta Prasad just looking at the score on the sides of the table. Net 4-9. Suddenly raising the finger and just not happy with the service probably. Good to see she's changing the direction. Yeah, 9-5. like that, Sucheta Prasad. Immediately when she had that last serve let by the umpire, she changed the angle, bringing in the variation. This is what we have been talking about even in her last contest, because that she's become a tad bit predictable. But the fact that she's come out in this first reverse singles contest against Yashashwini Ghorpade, she is using her forehand more often. Definitely not one of her strongest points, but at least it gives her a little bit of dynamism in her. Now Yashashwini Ghorpade got 4 game points in this opening game, and shouldn't be a problem, and especially with such unforced error from Sucheta Prasad at 11-6. The first game of the first reverse play goes in favor of Yashashwini Ghorpade. 11-6, a bit of a concern, but cheers and joy in the contingent of Jain University, Karnataka. Check it out in the replay how this game panned out, and those unforced errors, if she could look at the replay, they will be pinching her too much, Sucheta Prasad. That backhand from the middle of the table, because for me was the most interesting and accurate shot of the game, number 1. Right into her body. Very difficult for Sucheta Prasad. I'm sure looking at the gestures of her coach, this is what she's telling, that keeping your body a little upright and tight. You need to move and open up a little bit. Let's see if she can bring about Sucheta. that variation that is required from Sucheta Prasad to keep her chances alive and that of her team. They've done the hard work. It's one of the most closely fought contests between two universities that we have seen in the last 2 days or so. It is almost 6 in the evening, and we've watched some of the best of the table tennis, especially at the university level, because and Sucheta Prasad and Yashashwini Ghorpade have been 2 of the most bright and promising talents. यकीनन अच्छा है, क्योंकि कई सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का हिस्सा हैं, जिनको अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर हासिल है। और यही वजह है कि इस आयोजन का स्टैंडर्ड इतना हाई हो चुका है, कम से कम टेबल टेनिस के अंदर। एक अच्छे गेम की शुरुआत की है, जिस तरीके से सुचिता प्रसाद ने पहला गेम गंवाया था, उसके बाद से समय अब लीड कर रही हैं 2-1 से। शुरुआती लम्हे हैं दूसरे गेम के अंदर। Net 2-1. लेकिन एक बार फिर से काम आया। वो सुचिता प्रसाद का जो पिछला मुकाबला था, उसमें भी हमने देखा था कि 2 गेम जीतने के बाद 2 गेम हारी थी, और फिर निर्णायक गेम में उन्होंने अपनी काबिलियत दिखाई थी। तो यहाँ पर नेट पर थोड़ी सी उलझन, और उसका फायदा मिलेगा यशस्विनी घोरपड़े को। अच्छा मुकाबला खेला था पिछला उन्होंने, यशस्विनी ने, और इसी को दोहराने की कोशिश कर रही हैं, और लगातार 2 अंकों के साथ अब उन्होंने स्कोर को बराबरी पर पहुंचा दिया है। What Sucheta Prasad has tried to do in the last couple of occasions that we saw with us, that she's trying to forcefully drive those rallies into Yashaswini Ghorpade's body, but in doing so, she's lost the control and she's not been able to keep it on the table. So if she's trying to be a little more aggressive, she will have to be a lot more accurate. Otherwise, those unforced errors will cost her the match.
And oh, look at that beautiful backhand. 5-3. Lovely angle and a side spin generated by Yashashwini on that occasion. It will be interesting to go back in the replay. Look at that beautiful. Oh, what a great position she came into, right behind the ball there on that occasion. And once again, I knew that the moment she hit that Sucheta Prasad, she gave her the opportunity for Yashashwini to go all out from the sides of the nets. And as a taller player, she's got a much better range and she executed it to the perfection. At 6-3, Yashashwini Godpode serves it. 3-7. Another point for Yashashwini, as Sucheta couldn't keep it on the table. But the service is back with Sucheta at 3-7. Once again, she's trying to strong, forceful forehands, trying to hit it into Yashashwini's body, but not getting the accuracy for the table. Back to, oh, beautiful once again, almost like a replay of her earlier shot. Yashashwini Godpode so accurate from the center of the table, opening the face of the bat there, and also a bit of a side spin into it. Always that ball going away from Sucheta Prasad. Very difficult to respond to something like that. And around the net, she's been really good. On that occasion, the shot was a little deep, making it a little difficult, of rare difficulty for Yashashwini Godpode. Now it will be serving at 9-4 in a very, very strong position. Mind you, she's already won the opening game at 11-6, and beautiful forehand, but 5-9. difficult to keep it from the center of the table. Such strong drives, more often than not, go out of the table. Check it out. You see there, it's almost an inch or two away from the deep line, and deep in the frame was Mona Lisa Barua Mehta. If the tennis lovers could spot on 6-9. into her. Yesterday she was with us in the commentary box and we had a good chat about the positive progress that table tennis has made as far as the Indian sporting circuit is concerned. And yes, another 10-6. mistake, and this has been a classic case with Sucheta Prasad, that she's swung her arm, and in spite of being within the reach, she's not been able to connect. 11-6. And that's it. It's all over in game number 2 at 11-6. The identical score for Yashashwini Godpode. She has sealed 2 games in this first reverse singles, as the contest between Jain University of Karnataka and the University of Calcutta gets more and more intense. अच्छी वापसी कही जाएगी जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटका की तरफ से, और यकीनन यहाँ अगर सुचिता प्रसाद विजयी होती हैं तो मुकाबला खत्म हो जाएगा, और इस चीज़ का इल्म है और इसी चीज़ को ध्यान में रखने की ज़रूरत, क्योंकि अब यहाँ से अगर यशस्विनी जीतती हैं तो ये यकीनन 5वें मुकाबले में ये जाएगा टाई, क्योंकि दूसरे रिवर्स सिंगल्स की जरूरत पड़ेगी और इसके लिए अब तैयारियां फिलहाल इस मुकाबले पर बहुत कुछ टिकी हुई। सुचिता प्रसाद को संभलना होगा, ऐसी गलतियों से बचना होगा, और एक बार फिर से वो सिलसिलेवार गलतियां जिसकी वजह से शुरुआती बढ़त पर आ गई हैं यशस्विनी घोरपड़े। एक बार फिर से वो रिटर्न जाके नेट से टकराया, लगातार 2 गलतियां नेट पर, और संभवतः ये वो गति है जिसकी हम चर्चा लगातार करते रहे हैं। यशस्विनी ने जो गति अपनी दिखाई है फोरहैंड पे, उसी की वजह से वो रिटर्न में लगातार गलतियां करती नजर आ रही हैं यहाँ पर सुचिता प्रसाद। यहाँ पर कुछ ज्यादा ही उत्साहित होकर वो स्मैश लगाया फोरहैंड पर और वो बिल्कुल वाइड जाके गिरा। थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत, 3 अंकों से आगे इस समय चल रही हैं इस मुकाबले के अंदर। पहला दोनों गेम जो है उनके नाम रहा था और अब इस समय तीसरे गेम पर में भी लीड पर हैं। यहाँ पर फिर से वही गलती लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से सुचिता प्रसाद नेट पर उलझती नजर आई हैं और इसका फायदा उठाया है बखूबी तरीके से। वहीं दूसरी तरफ से वो फोरहैंड पर कुछ गलतियां हो रही हैं यशस्विनी घोरपड़े से, ध्यान रखना होगा।
ज्यादा समय अगर दिया तो वापसी का कोई कसर छोड़ेंगी नहीं सुचेता प्रसाद। 5-2. बड़े और लंबे उनको गेम्स में मुकाबले को ले जाने की आदत है और इसकी झलक हमने देखी थी जब उनका पिछला मुकाबला हो रहा था। That's right. Even in that contest against Anuragya Manjunath, 2-6. Sucheta Prasad stretched it all the way to 5 games. And even after having lost the third and fourth game to Anuragya, she never 2-6. lost her calm and cool and turned out to be winner. But yes, it will be very interesting this game number 3 if Sucheta Prasad can hold on to this game and keep her chances alive. She's a very, very bright prospect. It will be very interesting to see if she could continue in this first reverse singles contest between Jain University and University of Kolkata. Going for that cross table, hitting that one into the net. Couldn't find the elevation on that occasion. Sucheta Prasad must be very disappointed. Such points really hurt you because she had enough time. She had ample time into executing that. No, it's not going to help you, goal. 8-3. Such open-faced drop shots will give all the opportunity to a champion player like Yashashwini Ghorpade, and she went all out with that strong cross-forward. Beautiful. Late. 8-3. She's straight away raising her finger and asking her to give back the ball as she wants to reserve. But really, now another point, even though Sucheta was able to connect it but couldn't keep it onto the table. Interesting to see that Yashashwini Ghorpade, in spite of all her prowess and talent, she's not been able to generate those spin which Sucheta Prasad has been able to do it. Perhaps she's not intentionally relying on that. Good rally, but the speed from Sucheta Prasad on that occasion was a little too much. Back to her backhands, Sucheta Prasad. Now with 6 game points and match point also. 10-5. It will be Yashashwini Ghorpade. Sucheta Prasad being able to save 1 match point. But I think it will be done and dusted quite quickly. Oh, look at that brilliant forehand, and she seizes it, closes it quite comfortably. Yashashwini Ghorpade. And now it will go into the 5th and final decider, the second reverse single match that will be played between Anuragya Manjunath and Mehak Das, who was defeated by Yashashwini Ghorpade in the opening match of this contest between Karnataka and Kolkata universities. So Yashashwini Ghorpade has won this match comprehensively and quite comfortably, like she had done earlier in her opening match against Mehak Das. But now it will be back to Mehak Das, who will be taking on Anuragya Manjunath. And to tell you about who makes it to the next round, it will be Anil Sharma and Srinivasan in the commentary box. Thank you, Akshay Maurya and Vikas Pandey. It was really nice listening to your commentary throughout the day on different matches of this 4th edition of this Khelo India University Games 2023. Ashtalakshmi, which is right now going on at Tanur Ramfuka Indoor Stadium's RG Verma Sports Complex, Guwahati. And you're watching live on DD Sports. तो अब हम चलते हैं दूसरे रिवर्स सिंगल्स की तरफ, जो कि ये मुकाबला होगा जैन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के बीच में। और जैसा कि हम देख रहे हैं, अनज्ञा मंजुनाथन और महक दास। अनज्ञा मंजुनाथन रेड टी शर्ट 221 नंबर जर्सी पे, और दूसरी तरफ फेसिंग द कैमरा महक दास 255 नंबर की जर्सी। दोनों काफी अनुभवी खिलाड़ी, बेस्ट ऑफ द प्लेयर्स ऑफ देयर टीम। 16 यूनिवर्सिटियां इस चौथे संस्करण में टेबल टेनिस में भाग ले रही है और काफी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में भाग ले रहे हैं, जो यह बताता है कि किस स्तर का यहाँ पर ये चैंपियनशिप हो रही है।
The warm-up session going on here. It is the Anargya Manjunath of Jain University, Karnataka, taking on Mahek Das from Kolkata University. This particular tie has been extended to the fifth game, rather the fifth match, the second of the reverse singles. Anargya Manjunath facing First game. Mahek Das on the Calcutta picture to frame serve. there. Love all. Calcutta University, and this is Manjunath in red jersey, Lawal. Das serving. Oh, lovely forehand. You look at that, a lot of power on that, and the ball just picking up the edge of the table. One love. This time good backhand cross court from Manjunath, extracting that error from Das there. 1-all. Manjunath serving. 2-1. Trying to go for that, there is no opening on that return. She could have just kept the ball in play just to respond to the serve. 2-1. 2-all. दोनों खिलाड़ियों ने एक ही गलती की. जरूरत से ज्यादा कुछ करने की कोशिश करने की यहाँ जरूरत नहीं है, क्योंकि यह पहला गेम है बेस्ट ऑफ द 5 का, और अभी शुरुआत है, अभी लगातार दूसरी गलती, तो 2 मुफ्त में अंक प्रदान किए महक दास को. अनज्ञा मंजुनाथन जैन यूनिवर्सिटी की अब सर्विस फॉर महक दास 2-3 से पिछड़ते हुए, और फिर से 2-4. बिना टेबल के नजदीक आए इस फोरहैंड टॉप स्पिन खेलने की कोशिश, और नेट पे दे मारा इसको. Good attempt from Manjunath, trying to go for that side spin, putting it into the net. Again hurrying up that 2-5. point. She could have kept the ball in play, wanted to close it out, hitting it out of the table there. Look at that, loose shot there. This is a good tactics from Das to keep the ball on the table, and Manjunath trying to go for that powerful forehand, hitting it long. 6-2 Das. That is a bit of an overhitting there. Look at that, not able to control that roll of the wrist on that forehand. 4-6. Hurrying up that. In fact, she was in the position, but tried to go on that back and see that into the net. Manjunath serving. 6-4. 4-7. Yet again, this absolutely unforced. There, look at that. She could have just kept the ball in play. Absolutely, there is no problem in that. What a powerful inside-out forehand from Manjunath. Look at that, quickly moving into that position. That is what is very important, how fast you get into the position to create that shot. And she did it in style there. Seven five. 7-6. Now she knows that she didn't close the face, so the paddle on time. Look at that. Six, 7-6. 7-all. Trying to create the pace on that forehand smash. Look at that, lot of spin, side spin on that from Manjunath. That is where the error happened. 7-all now. Opening game. Good serve. Very nicely moving and quickly moving to her left and coming with that forehand down the line.
picking up that error from Manjunath. Seven, 8. 7, 9, 7. Let us let. No, not really. The point is given there. And it is Das serving now. 9-7, 2 points away from this game. Left. 9, 7. Serves again. Again, that return is actually well anticipated by Manjunath. But then hurrying up that forehand, thus putting it into the net. 9-8. Oh, Manjunath scooping that forehand over the table there. See that. She had enough time, but shouldn't really control that. Went with that forehand spun return. 2 game points. 9, 10. One saved with a smash. Still a game point. Oh, that's long. 10 all. The ball hitting the top of the net and then going over the table from Das. So that makes it a deuce, 10 all. Here you need a 2 points lead to wrap up the game. Let's see who is going to do that. Das serving now, 10 all, deuce. Oh, that is a very 11, powerful 10. forehand from Manjunath. Picked up that error there. Look at the pace on that. And also changed that angle. So a game point this time. This is in favor of Manjunath. Oh, 11 squandered all. that point. Was in a hurry to close it out, putting it into the net. 11 all. That is the last point. Just rolling the wrist to cover the forehand, but not able to get past the net. 11 all. Thus serving. Oh, that is a relentless forehand attack from Das. Powerful. Look at the pace on that. The desperate backhand from Manjunath into the net. So it's another game point. 11-12. Manjunath. all. This is exciting. For a moment it looked as if it was closed out, not to be so. 12 all. Both the players are trying to give their best to stay in this opening game. 12 all now. It is Mahek Das is serving. Good serve. Oh, that's a powerful inside out from Manjunath, forcing that error from. Look at that. So much power on that inside out forehand. Error from Das, and a game point for Jain University. Oh, look at 14, that. 12. With a stamp of authority, coming with that forehand and winning that game. 14-12. What a game it was. Both the players giving their best. Look at that highlights of this particular game. Tremendous power on that forehand cross court from Manjunath, picking that point and wrapping up the game as well. जिस तरह का खेल हमने अभी भी देखा, काफी नजदीकी मुकाबला, बहुत मुश्किल निर्णय लेना कि कौन जीतेगा, अंत तक बताना मुश्किल था, मगर अंत में मंजुनाथ जैन यूनिवर्सिटी की रेड जर्सी ने आसानी से, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये शॉट, मगर काफी प्रयास करने के बाद मगर अंत में जब उनको सफलता मिली, खास करके ये जो फोरहैंड शॉट था, आप देखिए
दोनों खिलाड़ी, और ये तो आसान सा मौका। एक बार फिर से अच्छी सर्व, मगर उतना ही अच्छा रिटर्न, लेकिन यहाँ पर अपने बैक हैंड शॉट को कंट्रोल नहीं कर पाई। एक बार फिर से काफी ललचाया उनको, और यहाँ पर फिर से अपना शॉट पे कंट्रोल खो दिया। और बेस्ट ऑफ द 5 में पहला गेम जैन यूनिवर्सिटी ने जीत लिया है, और अब कलकत्ता यूनिवर्सिटी पे थोड़ा सा दबाव, और शुरुआत काफी धमाकेदार। 1 अंक की बढ़त यहाँ पर महक दास की। अच्छी शुरुआत, काफी सकारात्मक रवैया, और निर्णय भी काफी अच्छे। 1-0 की बढ़त, और लगातार दूसरा अंक। उनके साथी खिलाड़ी उनका उत्साह बढ़ाते हुए, और वो चाहते हैं कि दूसरे मैच में महक दास अच्छी तरह कमबैक करे, और जो गलतियां उन्होंने पहले गेम में की वो अब न करें। और ये लकी पॉइंट, ये बहुत ही दुर्भाग्यशाली कि जब गेंद टेबल का एक कोने से टच होकर चली जाती है तो कोई कितना भी बेहतर खिलाड़ी हो कुछ भी नहीं कर पाता। 2-1 पर सर्व करती हुई फिर से एक बार महक दास, कलकत्ता यूनिवर्सिटी की। बढ़िया रिटर्न, मगर यहाँ पर चूक हो गई महक दास से। It is 2-all. The game number 2, the first game in favor of Jain University. 14-12. Oh, tremendous power. The ball, in fact, a lot of time she had. The ball was bouncing up slowly and came with that powerful smash. 3-2. 2-4. That backhand flick going long. So down 2-4, it will be Das serving. Dropping the first game at 12-14. Now serving at 2-4. Mahek Das of Calcutta University. Just trying to go for that forehand. See, what happens is this is more of an unforced error. There is nothing much. She could have easily placed it on the table. 3-4. Mahek Das. Lot of spin on that serve, not able to counter it, putting it into the net. That is more of a backspun serve. And look at that side spun. 4-5. Unlucky net caught. Look at that. No way Manjunath could have taken that. 5-all. Scores level with that 5-all. It's a very, very important match here. As Mahek Das preparing to serve. Let's see what kind of serve she's going to come up with now. Backspin on that. Both the players happy to keep the ball in play. And sudden that aggression from Manjunath on the forehand. That is what is picking up that error. अनज्ञा मंजुनाथन को अपनी लंबाई का पूरा फायदा उठाया। हालांकि शॉट में काफी पावर था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जिस तरह से रिटर्न किया बिल्कुल संभल नहीं पाई महक दास। Terrific control on that forehand cross court. She had to close the face of the paddle in time. She did it well. 7-5. Have a look at that. Mahek Das was in position but really couldn't retrieve. It all depends on how fast you are in the roll of the wrist. 7-5. If you are shared early or shared late, it makes an impact. 7-5. 8-5. But this was something on the backhand, trying to close at the point.
Mike Das putting it into the net. 8-5. Manjunath. This is again, this time it is an unforced error from Manjunath. She was in the right position, could have controlled that return, but hurried up and then hit it long. 6-8. Das. Sudden change in that onto the forehand. 6-9. A lot of power on that. Backhand slices and then suddenly coming with a powerful forehand. Look at that. That is where the error coming from Das racket. 2 points away from picking up this game for Jain University, Karnataka. Manjunath 6-9. as Das prepares to serve. 6-9. Backspin. Terrific control this time from Das. She anticipated that well. It was a good serve. In fact, that then it was on the backhand, and there is no way she could control that, hitting it wide. With that 11-7 the score. Manjunatha wrapping up this particular game, and the earlier one was at 14-12. So she has to keep the momentum going. That is a highlight of this particular game. The deep return from Manjunath, picking up that error from Das racket on that occasion, and Manjunath having a chat with the team, with the coach and the teammates, and all that she has to do is to keep that momentum on. That is how the situation here is. 14-12, 11-7 for Manjunath of Jain University, Karnataka. This is Team A event, round number 3. Jain University of Karnataka taking on Calcutta University. टेबल 1 पे वोमेन टीम ग्रुप ए, वोमेन टीम ग्रुप ए राउंड 3 जैन यूनिवर्सिटी और कलकत्ता यूनिवर्सिटी के बीच में पहले 2 गेम आसानी से जीत लिए अनज्ञा मंजुनाथन ने, और हालांकि कोशिश बहुत की थी महक दास ने, मगर सफलता उनको नहीं मिली। अपने अनुभव का पूरा उन्होंने उपयोग किया। अब तीसरे गेम में सर्विस करते हुए थोड़ा दबाव जरूर है उनके ऊपर, लेकिन अनुभव की कोई कमी नहीं है। और एक बार फिर से पहला अंक गवा दिया सर्विस करने के बावजूद, 1-0 से पिछड़ते हुए। अभी भी पहले फोरहैंड पे गलती और अब बैक हैंड पे रिटर्न सही ढंग से पुश, हालांकि पोजीशन में नहीं थी वो, और अपने आप से थोड़ी सी नाखुश। अब सर्विस और यहाँ पर भी अपनी सर्विस पे अंक बटोरे, और आत्मविश्वास जो अनज्ञा मंजुनाथन का काफी भरपूर, और उनकी जो शारीरिक भाषा है उससे पता चलता है कि उनको लगता है कि वो तीसरा गेम भी जीत सकती है। Time out taken in the right moment to stop the momentum which was in favor of the opponent, and Mike Das taking that time out in the right moment, because you have to also look at the score position, where exactly how you manage and to take it like that. And 3 of them are absolutely unforced errors, trying to close out the point, trying to close out the rally earlier. See that she could have very well kept the ball in play. The good rally, keeping on going, and then trying to go on the attack. First one was a good inside out, but the second one was a big error. And here she can just pushing it and keeping the ball in play at the moment. But of course on this occasion there is a powerful return from Manjunath, picked up the point. That's a timeout taken by Kolkata University. The right moment to stop the momentum going in favor of the opponent. And the first 2 games in favor of Jain University, Kolkata, 14-12, 11-7. And right now 3-0 lead for Manjunath, as the player is just getting back to get going with business. And it is Manjunath who will be serving now, as she gets ready to serve at 3-love. Game number 3.
What a power. Love See, four. right in position. That makes all the difference. You have to be right in position to go for that powerful forehand cross court. Love 4. Formidable 4-point lead for Manjunath. As Das serves. Good serve. Shot. Love But see the quick 5. sense of anticipation from Manjunath. She anticipated that short serve and was ready for that. See how quickly she had moved in as well here. And then created that power on that backhand. Love 5. Under tremendous pressure now. Mahek Das. Look at that. This is why we call the table tennis as a very swift game. You saw those returns, but the question is closing out the point will matter. And straight away 6 points in favor of Jain University. Manjunath, 6 love. A 7 very love. good serve. See that last bounce on that serve as well because of the spin. इनकी सबसे बड़ी ताकत मंजुनाथन की सर्विस ही नहीं, रिटर्न भी बहुत बढ़िया कर रही है। और कोई भी खिलाड़ी, कोई भी टीम अगर 7-8-0 से बढ़त लेती है और बेस्ट ऑफ द 5 में अगर पहले 2 मैच में वो जीत चुकी है, बढ़त है, और तीसरे मैच में 8-0 से आगे है, तो आप समझ सकते हैं किस तरह का खेल का प्रदर्शन यहाँ पर वो कर रही है। और ये पहली गलती और मुफ्त में 1 अंक, सो कम से कम खाता तो खुला महक दास का 1-8 पे सर्विस करती हुई। Absolutely. That was a bit of a loose forehand from Manjunath. With that, Das is opening her account on the scorecard. In fact, for a moment, I 9-1. thought that Das was keeping the ball in play with a right pace and length on that. But then, look at this. So much of suddenly changing that angle, changing that power, 10-1. getting that point in style. She's running away with this game and the match. Jain University's Karnataka. Manjunath serving 9 game points. And squandering one of them that was there for the taking. And that backhand letting her down. Still 8 game points, and it is Das serving to stay in this match. Look at that error coming on the backhand. With that 11-2 is the game score in favor of Jain University Karnataka. Manjunath doing so very well there. 14-12, 11-7 and 11-2. The last game, in fact, it was more of complete command by the Jain University Karnataka girl. That is Manjunath doing so well, in complete control of that particular game, picking it up so nicely and then wrapping it up in 3 straight games. 14-12, 11-7, 11-2. There you see the highlights of this match. आप देख सकते हैं किस तरह का प्रभावशाली प्रदर्शन यहाँ पर जैन यूनिवर्सिटी की मंजुनाथन ने किया। पहला मुकाबला थोड़ा सा नजदीकी था, 14-12, कहना मुश्किल कौन सी टीम जीतेगी, मगर दूसरे मुकाबले में थोड़ी सी हावी रही, और तीसरे मुकाबला तो बिल्कुल एक तरफा। जब कोई भी खिलाड़ी 8-0 की बढ़त की नींव रखता है, तो आप सब समझ सकते हैं कि इस तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव उसके विपरीत खिलाड़ी पर पड़ता है। तो इस तरह से ये 5वां मैच ग्रुप ए राउंड 3 वोमेन टीम का जैन यूनिवर्सिटी ने यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता को लगातार 3 गेम्स में 14-12, 11-7 और 11-2 से आसानी से हरा दिया। तो अब हमारी साथी कमेंटेटर विकास पांडे हिंदी में और अक्षय मौर्य अंग्रेजी में आपसे जुड़ेंगे। आने वाले बाकी जो आज दूसरे दिन ये 4था संस्करण खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020-23 जिसका आप सीधा प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स पर देख रहे हैं, तरुण लम्फो इंडोर स्टेडियम आरजी बरुआ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गुवाहाटी से। आगे का हाल मेरे साथी कमेंटेटर विकास पांडे हिंदी में। Thank you, Anil, and sensational stuff going all the way down the line in a complete full lineup of the contest. All the girls playing with each other, especially the last 2 reverse singles was something to really watch out for, because those comeback made by University of Kolkata by Suchoita Prasad and Akanksha Das in match number 2nd and 3rd
was the one that made it all the more interesting, this entire contest. Nevertheless, it's over to Group C, round number 3, in which Kavya Yadav of University of Delhi will be taking on Amruta Phadke of University of Mumbai. And Vikas is with me in the box. Vikas, a very good evening to you, and good evening to all our viewers on Doordarshan. What fun we are having. Just that's the wide angle given by our cameraman. There are 4 tables. Simultaneously, those matches are played out. I will request the cameraman to take us back to table number 1 as we pan, and the players make their way. The 2 teams making way onto the table number 1 court. All smile, and I'm sure they have butterflies in their stomach because those smiles are to camouflage their nervousness, perhaps, because this is round 3 of Group C in women's event. And later in the evening, it will be the last match of the day on table number 1, and a very, very tense situation out there for University of Delhi and Mumbai, because yesterday we saw Amruta Phadke, who is coming out. She lost out to Kavya Shri, Gladlyn Flora of Tamil Nadu, actually. So it is her chance to take that revenge and come out with flying colors in this round 3 of Group C matches. यकीनन एक बड़ा मुकाबला आने वाला है अब से थोड़ी देर में, और इस मुकाबले को संचालित करने की जिम्मेदारी स्वप्ना घोष और अरीना नाथ के जिम्मे सौंपी गई है, जो इस मुकाबले में अंपायर की भूमिका में होंगे। और यकीनन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बनाम यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, 2 महानगरों की 2 यूनिवर्सिटीज के बीच में ये मुकाबला। कौन होगा विजयी, किसे शाम वो खुशी नसीब होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। यकीनन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के अंदर हमने कई अच्छे मुकाबले आज देखे हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी आज अपनी दावेदारी पेश करते नजर आए, और यकीनन उस स्तर का खेल भी हमें देखने को मिला। और अब जैसे जैसे शाम ढल चुकी है गुवाहाटी में, वैसे वैसे अब हम आज दिन की समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे कि हमारे साथी अक्षय मौर्य ने बताया, ये आज के शाम का कि इस टेबल के अंदर आखिरी मुकाबला होगा, और पहले मुकाबले में आमने सामने होंगे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की काव्या यादव और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई की अमृता फड़के। Players out there with the toss, and the umpire for this contest will be Swapna Ghosh from Bangalore and Arina Nath also from Bangalore. So as the players do a bit of a knocking, Kavya Yadav of Delhi University will be taking on Amruta Phadke from Mumbai University, and you're watching us live from Deshbhakt Tarun Phukan Indoor Stadium in Guwahati. In a blue jersey, it is Kavya Yadav, and that's girl, jersey number 264 on your TV screens. And in yellow jersey, it is Amruta Phadke from University of Mumbai. So a great day we are having here, starting with the goals earlier in the day in the round 2 of Group B matches between University of Madras and Chandigarh University, which we have been talking about for almost throughout the first half of the day, that such a strong contender Chandigarh University is
as far as Khelo University Games is concerned, because they have produced such talented players, one after the other, ample experience at state and national and even at international level. In some of these most scintillating matches in the men's event also, especially the one with Josh Modi and Ankit Bose, and they were up against with Adamas University. And obviously girls displaying such top quality tennis there, that it was a delight for all the table tennis lovers as the girls do their final knocking before that warm-up time gets over. It will be very interesting how Amruta Phadke comes out in this match, because after having lost that match yesterday to Gladlin from Tamil Nadu, I'm sure she's looking to find a way out. It was a straight set loss to Gladden Flora Siagraj of Tamil Nadu SRM University, in which Amruta Phadke lost out in straight of games 11-7, 11-9, 11-5. Kavya Yadav, on the other hand, has been looking in good nick, and straight away opening the account, Kavya Yadav. One love. Now serve with Amruta Phadke, trying to chop that, giving it a bit of an underspin straight into the body of Kavya Yadav there, and levels the score at 1-1. Now it's 2-1. Good to see Kavya Yadav looking to take her chances, but Amruta Phadke going for that strong forehand on the sideline. Beautiful execution there. She was in a very good position. Check it out in the replay. Solid position, making good use of the side of the table. और एक बार फिर से उसी जगह से फिर से वही पोजीशनिंग, और बिल्कुल वो फोरहैंड पर जवाब नहीं है उस स्मैश का। इस बार जरूर मंशा अच्छी थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिली और नेट से जाकर वो फोरहैंड टकराया था। लेकिन अच्छी शुरुआत की है दोनों तरफ से, हमने देखा। हालांकि ज़्यादा एग्रेसिव अभी तक के गेम में अमृता फडके नजर आई हैं। फिर से एक बार नेट पर गलती, लगातार वो नेट पर गलतियां, और इसकी वजह से काव्या यादव यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की इस समय लीड पर। इस बार किस्मत का साथ, और किस्मत का साथ मिलता हुआ अमृता फडके को, इसलिए स्कोर जो है 4-4 की बराबरी पर रुक सी गई वहां पर बॉल नेट से टकराने के बाद। इस बार रिटर्न बहुत तेज जरूर आया था, लेकिन वो बाउंस जो टेबल के ऊपर मिलना चाहिए था वो मिला नहीं, जिसकी वजह से एक बार फिर से अमृता लीड पर। एग्रेशन दिखाने की कोशिश है, लेकिन वो बैकहैंड पर नेट पर गलती होती हुई काव्या यादव से। Also good backhand from Amruta Phadke, because she compelled Kavya into that mistake, in that unforced error. And in no time, she is in the lead with 3 points margin. Amruta Phadke, 7-4. Very good position. And now with 8-4, Kavya Yadav seems to be losing her rhythm here. Check it out in the replay there. Trying to take a leaf out of Amruta's book, going for that backhand shot. Oh, that forehand was a little too forceful for her liking. Couldn't keep it on the table on that occasion, Amruta Phadke. Too much force into that, and even her expression tells that it wasn't that required. She had all the time in the world to react. The backhand for Kavya Yadav is a bit of a concern. They are now at 9-5. Amruta Phadke serving with a lot of confidence and a lot of belief in this opening game between University of Delhi and University of Mumbai. Again, the same mistake. She was in a good position, but charging a little too much. Not being able to roll that bat completely over the ball. Nice slice serve there, but couldn't get the spin enough. Oh, good return on that occasion from Kavya Yadav, right into the body of Amruta Phadke. No chance whatsoever for Amruta.
That forehand, even though it wasn't that forceful, but Kavya had enough time, but unfortunately couldn't control it. Now with the 3 game points, Amrita Phadke, she will be receiving serve from Kavya. Lovely spin on that occasion, but really unfortunate for Kavya Yadav, as she loses this opening game between Delhi and Mumbai universities with 11-7. Amrita Phadke, mind you, she is on a revenge mode. She is looking to make up for the loss against Gladlin Flora of SRM University yesterday when she was playing on this table number 1. Lost in straight sets. But here, opening the account against Kavya Yadav. Check it out in the highlights how this game went about. Game number 1, because obviously Amrita Phadke from Mumbai University comes out as a favorite. She is a player which is talked about. She has the potential, but so is Kavya Yadav. And both of them would like to make most of this occasion at this 4th edition of Khelo India Youth Game University Games, and obviously a great platform, and nobody would like to go empty hand from here. It's only day 2. We still got good 2 days as far as table tennis is concerned, and both of them would like to move on to next round. यकीनन और दोनों खिलाड़ियों में वो प्रतिभा है और उसकी बदौलत वो आगे अगले दौर तक प्रवेश कर सकती हैं। हालांकि इस समय जो स्थिति है उसके हिसाब से काव्या यादव के खिलाफ अमृता फडके बेहतर नजर आ रही हैं। पहला गेम जीता और उसके बाद से देखिए, ऐसी जब गलतियां होंगी, आपके पास पूरा समय था, आप ले सकती हैं, लेकिन जल्दबाजी में ऐसे शॉट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा प्लेसमेंट पे भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत, और वही इस समय कमी दिख रही है। ज़्यादा एग्रेशन की ज़रूरत नहीं है, अभी आप कंट्रोल कीजिए गेम को, ये बहुत ज़रूरी। 3-0 से अब बढ़त पर इस गेम के अंदर भी अमृता फडके यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई की। यहाँ कहाँ चूकने वाली थी वो, एकदम सेंटर ऑफ द टेबल के स्थिति से ये स्मैश लगाया, तब कोई मौका नहीं था क्रॉस कोर्ट पर काव्या यादव के पास। इस बार चालाकी से देखा कि पोजीशन थोड़ी सी बाईं तरफ है काव्या यादव की, तो बड़ी चालाकी के साथ उन्होंने वो स्विंग, देखिए कितना खूबसूरती से पैडल का स्विंग जो उन्हें इस्तेमाल किया, और इस बार उत्साहित होके जरूर उन्होंने वो कोशिश की, लेकिन अंक मिलता हुआ यहाँ पर एक गलती जरूर आई है अभी अमृता फडके की तरफ से, लेकिन सर्व इस समय काव्या यादव के पास। और इस बार बॉडी में थोड़ी सी उलझ सी गई, ऐसा लगा अटक सी गई थी गेंद, और इस वजह से बैलेंस नहीं बना, और 2 अच्छे अंक हासिल करती हुई काव्या यादव। बहुत कोशिशों के बावजूद वो जो टेबल पर रखने की कोशिश थी, वो उसमें कामयाबी मिली नहीं अमृता फडके को। Just get the feeling that Kavya Yadav is looking a tad bit fidgety, not much in control. She's a tall girl. She is already on the top of the ball when she is swinging her arms. She should be careful with the pace only, and that shouldn't be much of a problem if she could anticipate a little bit. Nice return on that occasion, giving one more point to Kavya Yadav. Now with that margin narrowing down in favor of Kavya Yadav, she would like to carry on that momentum, and such unforced error from Amrita Phadke will only help her cause. Oh, look at that forehand, little unlucky, obviously, that deflection, the ball ricocheting from the top of the net, and the scores are leveled at 6-6 now. That ball could have fallen anywhere, Vikas, but it's just that little bit of luck a player needs when they're playing at such a level. The scores are 6-6 at the moment, and it's anybody's game. But the way Amrita Phadke seems to be changing the gear, mind you,
she can run away in no time. She's a cheeky customer. Look at that forehand cross table, but great response from Kavya Yadav on that. Equally good, right into Amruta Phadke's body. At 7-7 now. The match is cruising along, evenly balanced. बिल्कुल अच्छी वापसी है और इसमें कोई दो राय नहीं है. लेट का इशारा था वो अंपायर की तरफ से. इस बार अच्छा रिस्पांस, लेकिन उतनी ही खूबसूरती के साथ प्लेस किया था. जब रिटर्न दिया, स्विंग देखिए पैडल का, उससे आप समझेंगे कि कितनी सही तरीके से व्यवस्थित किया अपने आप को और वो शॉट अटेम्प्ट किया था. इस बार नेट पर गलती. अनफोर्स्ड एरर एक बड़ी वजह रही है अभी तक का, जो पूरे दिन हमने देखा है हार जीत के फासले के अंदर. थोड़ा सा कुछ अलग करने का प्रयास और उस प्रयास में कामयाबी हालांकि मिली नहीं. 9-7 से लीड कर रही हैं. आपको बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका अपोजिशन उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है. काव्य यादव एक और अंक गंवाती हुई और अब गेम पॉइंट, और ये गेम भी आसानी के साथ खत्म किया है अमृता फड़के ने. पहले गेम में 11-7 से जीत के बाद सेम स्कोर लाइन के साथ दूसरे गेम में भी जीत दर्ज किया है और अब यहां से मुश्किलें बढ़ जाएंगी काव्या यादव के लिए. यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए अगर इस मुकाबले में बने रहना है कम से कम इस टाई के अंदर, तो काव्या यादव को बाकी के बचे हुए कम से कम अगले दोनों जो गेम है वो अपने आप अपनी झोली में डालने होंगे. यही मंत्रणा इस समय चल रही होगी कोच और साथी खिलाड़ियों के साथ कि कैसे, अगर इन हाइलाइट्स पे आप नजर डालें तो देखेंगे कि किस तरीके से कंट्रोल किया बहुत खूबसूरती के साथ गेम को और शेप में लेकर आई हैं और ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है अपने आप को जहां पर अगर कोई बड़ी गलती ना करें तो यकीनन इस मुकाबले में आसानी के साथ अमृता फड़के विजयी होकर निकल सकती हैं. अच्छे स्मैश लगाए, थोड़ा सा एडवांटेज भी मिला नेट का कई मौकों पर हमने देखा, लेकिन जब बारी आई वो फोरहैंड की तो वहां कभी चूकी नहीं और रिटर्न्स भी कमाल के रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है. चलिए तीसरे गेम की शुरुआत होती हुई. Obviously, with those two comfortable games under her belt, Amruta Phadke looking ominous for Kavya Yadav. And if Kavya wants to stay in this match, she will have to play a little differently. She's looked a lot more predictable for her liking. And that backhand from Amruta Phadke was a little too early. Couldn't control that, hence difficulty in keeping it on the table. Kavya Yadav with a 2-1 slender lead of 1 point. Look at that, this is what I'm saying, that even when Kavya Yadav has had the opportunity, because she's not looked aggressive enough to be able to capitalize on that. And that's what you need. You need to be offensive, you need to be aggressive, you need to grab those opportunities with both hands. But look at Amruta Phadke there, jumping and relaxed, looking in full control of the match in this third game as University of Delhi takes on University of Mumbai in this last contest of the day on day 2 of Khelo India University Games 2-2-2-3. Nice open slice, but changing the pace of the game and giving full opportunity to Amruta Phadke, even though she couldn't capitalize on that occasion. But such easy balls for Amruta Phadke are going to be a cakewalk for her because she is too good a player to let go such opportunities. 3-3 की बराबरी है और इस बार वो रिटर्न जब आया एक पल के लिए ऐसा लगा कि शायद रोल होगी साइड लाइन पर, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं और वाइड गिरता हुआ वो टेबल से प्रयास उनका. कभी भी मौका मिलता है तो फोरहैंड पे वो अपने गति को दिखाने से चूकती नहीं है. यहाँ पर नेट का थोड़ा सा एडवांटेज मिला और वो अंक मिला और देखिए 2 अंकों की बढ़त पे फिर से जाके बैठ गई हैं. हालांकि एक बार फिर से थोड़ी सी गलती, लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही है अमृता फड़के के इस गेम में कि उन्होंने अपना एग्रेशन कम नहीं किया है.
गलतियां उन्होंने की है, गलतियों की वजह से कुछ अंक भी गंवाए हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कंट्रोल खोया नहीं है मुकाबले के ऊपर। अच्छी रैली चलती हुई और इस अच्छी रैली को खत्म किया है एक अच्छे शॉट के साथ अमृता फड़के ने। कमाल का प्रदर्शन अभी तक देखने को मिला है अमृता फड़के की तरफ से, और एक बार फिर से देखिए किस तरीके से पोजीशन किया, और उसके बाद से जब वो फोरहैंड लगाया तो कोई जवाब था नहीं काव्या के पास। यहाँ नेट पे एक बार उलझी जरूर, दूसरी बार जब नेट से टकराई तब काव्या थोड़ी सी अनलकी रही। अमृता फिर से एक अच्छी स्थिति में पहुंचा चुकी हैं, हालांकि फिर से एक गलती क्या वापसी दिलाएगी थोड़ी सी। 3 अंक दूर हैं सिर्फ इस मुकाबले को अपने नाम करने से। अमृता फड़के, काव्या को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत, और यहाँ पर ये गलती थोड़ी सी भारी पड़ सकती है जिस तरीके का ये अटेम्प्ट आया। 8-6 पर सर्विस इस समय अमृता की, और बहुत निराश होंगी इस तरीके की गलतियां, और यकीनन एक टाइम आउट की भी जरूरत थी, थोड़ा समय लेना भी चाहिए। 8-7 से लीड कर रही हैं, और यकीनन ये देखिए जिसकी हम बात कर रहे थे, ऐसी गलतियां अमोना अक्षय हमने देखा नहीं है। 2 मैचेस हमने उनके देखे हैं, ऐसी गलतियों को हमने उनके खेल में देखा नहीं कभी। Amrita Phadke is a very, very bright talent. There is no doubt about it. And coming all the way to university level, she's had ample experience having represented her school, college and universities in various state and national tournaments. But yes, sometimes when you are up against a cheeky customer like Kavya Yadav, sometimes it can affect your game. And you try to do something different, you try to rush up things, and in the process you can lose a bit of a rhythm. Those are the highlights of the last 2 games. How this contest between Mumbai and Delhi universities have gone about in the last 2 games or so. We are in the middle of the 3rd game as the players have gone back to the table after that timeout is over. There you see the energy, the positivity of a yellow jersey girl is all evident. It's almost infectious. We can feel it even in the commentary box. Amrita Phadke, a brilliant forehand coming there from Kavya Yadav, but equally good return from Amrita Phadke. And that return was too good for Kavya to return on the table as she loses one more point. The good thing is that she will be serving, so if she could generate some spin, I think she did that on occasion. A little bit of chop and underspin on that serve on last occasion probably deceived Amrita Phadke. There you see a little slow, but got the right angle. Great forehand, a great response, but closing the face of the bat a little too early on that occasion. The scores are level at 9-9 in this game number 3 because Kavya is not letting it go that easily. Check it out in the replay how this entire rally played out by these 2 champions. Great forehand will be coming soon, and that was cut short. Never mind, we are back to live action there. Another forehand, ferocious forehand, but hitting the net on that occasion, giving that slender edge to Kavya Yadav in game number 3 at 10-9 with 1 game point to Kavya Yadav. But look at that, she's not aggressive enough, and scores are tied. Back to deuce now at 10-10. Kavya Yadav, Amrita Phadke talking to herself and trying to pepper up spirits. Good forehand. Nice forehand. Great response from Kavya Yadav. Amrita Phadke went for a backhand, but in process of taking the pace away, she found the net, and that ricocheted into her side of the table. Now Kavya Yadav, can she close it? And she does that. She does that with a bit of a difficulty, but the good thing is that she is still alive and kicking in this first match
in this exciting contest between the universities of Delhi and Mumbai. Kavya Yadav sealing this third game with 12 points to 10 there. And the match is still on because it's very difficult to pick a favorite. We know that Amrita Phadke has looked good, and all the viewers will also vouch for the same. But Kavya Yadav, with that one game now in her kitty under her belt, will definitely boost her morale, and she will come out a lot more positively in the fourth game. यकीनन, और हाइलाइट्स अगर देखें तो आपको सब कुछ स्थिति साफ नजर आएगी कि किस तरीके से जो समय लिया, रिदम जिस रिदम पे खेल रही थी अमृता फड़के, वो रिदम कहीं ना कहीं ब्रेक हुआ और वो टाइम आउट ने अच्छा काम किया। हालांकि वो टाइम आउट जरूर लिया गया था अमृता फड़के के द्वारा, लेकिन वो कारगर साबित हुआ काव्या यादव के लिए। और यकीनन शुरुआती 2 गेम हारने के बाद एक अच्छी वापसी काव्या यादव की तरफ से, और अब चौथे गेम की शुरुआत। नेट पर फिर से एक बार वो गफलत और उसका फायदा मिलता हुआ इस समय, और एक अंक मिला जरूर है काव्या को, लेकिन बहुत जल्दी बराबरी हासिल कर लिया यहाँ पर। 1-1 की बराबरी पर पहुंचा, और इसलिए क्योंकि वो रिटर्न जो है वो बॉडी लाइन पे आया था जिसे संभाल नहीं पाई थी काव्या। और एक अच्छी स्थिति में ये मैच ऐसा लग रहा है कि पहुंच रहा है धीरे धीरे, अब बेहतर नजर आ रही है काव्या। फिर से एक बार अच्छा स्मैश, और पूरा समय लिया, सेंटर ऑफ द कोर्ट उसको प्लेस किया, और जब वो गति मिली तो उसके बाद रिटर्न बिल्कुल दूर गिरता हुआ। 2-2 की बराबरी पर क्या जबरदस्त रिटर्न है, क्या जबरदस्त ब्लॉक आया, और देखिए दंदनाता हुआ वो फोरहैंड ब्लॉक पीछे निकल गया, और काव्या एक बार फिर से लीड पर। Well, look at that. The pressure put by Kavya Yadav is all evident on Amrita Phadke's face and in her game as well. I dare not say too much about Kavya Yadav because, as they say, commentators curse, because the girl has just started looking good in this fourth game after having won the third game with a lot of hard work. And look at those return. Beautiful. Once again, sharp into her body and flat. Good work by Kavya Yadav as she leads the fourth game by 5-2. And now Amrita Phadke, after a long time, it seems that got the point, and her serve is also with her. Oh, beautiful forehand. It started with a nice chopping serve. She kept the momentum and rally in her favor, and just when she found the width, she went for that forehand, flat and sharp, and compelling Kavya to hit that one into the net. Oh, not like that, girl. You will have to control your emotions. You will have to control your force. You're doing well, but one has to say, we really have to applaud Kavya Yadav for her effort. She's looking good. She's found her rhythm, and she's looking very attractive as far as her play is concerned. इस बार गलती काव्या यादव की तरफ से। यकीनन अच्छे ब्लॉक शॉट दिखाए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और अच्छा डिफेंस में काम किया है काव्या यादव ने। लेकिन एग्रेशन के खिलाफ कभी कभी आपको एग्रेसिव खेल भी दिखाना पड़ता है। देखिए एक बार फिर से वही जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, जिस गति से साथ आप अपने ओपोनेंट का मुकाबला कर रहे हैं, उस गति के से आपको मैच करना पड़ेगा, और वही करने की कोशिश काव्या यादव कर रही हैं। और फिलहाल 6-6 के स्कोर पर, और फिर से एक वाइड
दूर गिरता हुआ वो रिटर्न, जिसकी वजह से अब बढ़त पर फिर से जा पहुंची हैं अमृता फड़के। काव्या यादव काफी देर तक इस मुकाबले में लीड पर रही हैं, लेकिन अब अमृता क्या इस मोमेंटम को बनाए रख पाएंगी? मुझे ऐसा लग रहा है शायद अब मोमेंटम शिफ्ट हो चुका है और यहां से संभवतः मौके बहुत कम देने वाली हैं अमृता फड़के। उन्हें पता है कि उन्हें सिर्फ 3 अंक चाहिए इस मुकाबले को सील करने के लिए। That little bit of over-aggression on part of Kavya Yadav has cost her another point and given a lot more advantage to Amruta now. Oh, beautiful, beautiful. She was trying to control Kavya Yadav on that occasion, trying to strand into her one corner, Amruta Phadke, but what a superb backhand, and now she's got 4 game points and match points. Amruta Phadke goes for that strong forehand and she finds it. 10-7. Unfortunately, hitting that return away from the table, giving 1 point, but she's still got 3 game points and match point. Nice chopping serve. Another forehand, but finding the net. That over-eagerness, because sometimes has been a problem as far as Amruta Phadke is concerned, but she's in a very, very strong position. 2 game points and match points, also in a very, very strong position in this opening game, opening match of exciting contest between Delhi and Mumbai. Goes for that forehand and seals it. That's it. A solid forehand cross table. Even though Kavya was able to connect it, but couldn't control the distance and dropping it long. 11-8. So that is the score. Wonderfully executed by Amruta Phadke. Doing well. I told you in the beginning she had lost to Gladlin Flora yesterday of SRM University of Tamil Nadu, but today up against the University of Delhi, tipping Kavya Yadav to the post in this opening match of University of Mumbai versus University of Delhi. 11-8, 11-7, 11-7, 10-12, and finally this game 11-8, sealing comfortably. And now the baton will be passed on to Adyashri Jog of Mumbai, who will be taking on Vanshika Bhargav of University of Delhi, and to take you through the proceedings and find out how it fares for these 2 girls in the next round. It will be Anil Sharma and Ashwari Nivasan in the commentary box. धन्यवाद। और जैसा कि हमने देखा कि आज दूसरे दिन का ये मुकाबला, जिसका आप सीधा प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स पर तरुणाम फुके इंडोर स्टेडियम साजी बरुआ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गुवाहाटी से देख रहे हैं। और अब तक का जो मुकाबला अभी ये वुमेन टीम ग्रुप सी राउंड 3 का दिल्ली और मुंबई के बीच में, जिसको मुंबई ने आसानी से दिल्ली को हरा दिया। और अब दूसरा मुकाबला भी दिल्ली और मुंबई के बीच में, मगर यहाँ पर खिलाड़ी है वंशिका भार्गवा और आद्यश्री जोग। वंशिका दिल्ली की तरफ से और जोग मुंबई यूनिवर्सिटी की तरफ से। और आप देख सकते हैं दोनों खिलाड़ी, ये वंशिका भार्गवा स्क्रीन पर स्काई ब्लू जर्सी में फेसिंग द कैमरा, और दूसरी तरफ क्रीम कलर की जर्सी में आद्याश्री जोग। और ये भी बेस्ट ऑफ द 5। और ये दूसरा मुकाबला वुमेन टीम ग्रुप सी का राउंड 3, और टेबल 1 पर ये मुकाबला कुछ ही देर में शुरू होने जा रहा है। और एम्पायर नंबर 1 है सपना घोष बंगाल की और बेंगलुरु, और एम्पायर 2 है अरीना नाथ।
एम्पायर 1 है स्वप्ना घोष बेंगलोर और एम्पायर 2 है अरीना नाथ बेंगलोर की। और पहली सर्विस और पहला ही अंक, पहले मिनट में पहला अंक पहले गेम का। स्वप्ना घोष बंगाल और अरीना नाथ बंगाल की दोनों एम्पायर्स। और सामने खिलाड़ी है वंशिका भार्गवा दिल्ली की और उनके अपोनेंट है अध्यश्री जोग मुंबई यूनिवर्सिटी की। So that is a very good serve from Delhi's Vanshika Bhargava. 2-4. Oh, this time 4. Bhargava just trying to force that point, going on that forehand, not controlling it, putting it long. 3-4. Net. Let that serve. 4. Oh, very good thinking, 4 all. taking the opponent by surprise. And very clearly, Jog coming up with that forehand down the line winner, 4 all. Bhargava just trying to go for that forehand cross court in a hurry, putting it into the net there. This is a good sense of anticipation by Jog. Quickly moving to her right and covering that down the line point. But this time not able to control that back and cross court, hitting it wide. Net. 6-5. 6 Jog. all. Now the score's level 6 all. 7 Score line just updating a little bit slow there. The digital scoreboard there. Also very good serve, the forehand, the scooping return going into the net. So it is 6-8 Jog serving. Trying to force that point, not in the right position there to go for the forehand smash. Look at that. That is always trying to roll the wrist and trying to have that spin on that. A very good rally, but in the end that forehand cross court going into the net from Bhargava there. Oh, that is a very good serve, and game point for 3 game points, hitting it wide and long. That is Bhargava in a hurry to close it out, losing that point. And it is 8 Jog to serve. Game facing 2 game points. Oh, there it is. 8-11. Terrific inside out, Goes to powerful Delhi one. University. Very clearly coming up from Bhargava, Delhi University. So wrapping up that opening game at 11-8. And there she is, Bhargava from Delhi University, having a chat with the coach and the teammates and rehydrating herself. It's the late evening match here. And there you are, Jog having a chat with the teammates and the coach, trying to check what is happening on that. In the first game, of course, it has gone in favor of Bhargava of Delhi University, taking it at 11-8. And as the players will be just getting back onto the court for the game number 2. This is women's Team C event round 3. Delhi University taking on Mumbai. And as the players just coming back onto the court. Sets for 1-0 up. Delhi. Second game. And it is going to be Mumbai Mumbai. University to serve. Jog preparing to serve, dropping the first game at 8-11.
Love 1. Love 1. That is an absolutely an unforced error. Short rally, not able to close it out. Good serve there. 2. But the Love. return was even better. Not really anticipated by Joke. That is where the error coming up. 2 Love Delhi. काफी रोचक मुकाबला। पहला गेम दिल्ली ने जीत लिया है 11-8 से और दूसरे मुकाबले में 3-0 की बढ़त। आप देख सकते हैं यहाँ पर वनिष्का भार्गवा नीले रंग की स्काई ब्लू जर्सी के अंदर में फेसिंग द कैमरा इज अध्यश्री जो सर्विस करती हुई 1-3 पर और इस वक्त ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाई। 1-4. हालांकि कोशिश भरपूर की थी उन्होंने। अभी भी 1-4 पे और इस बार सही 5-1. शॉट था मगर वहां पे बाएं साइड में काफी गैप। She created that opening and then went with that forehand cross-court winner. This is a great work from Joke. Quickly moving and then going on the down the line on the forehand. Look at that. Absolutely not anticipated by Bhargava on the occasion. Superb display of table tennis by both the players in this game so far. Points are immaterial, but see the quality. Doing so very well. काफी सोच समझकर अपने खेल को संवारते हुए और इस बार फिर से चूंकि वहां पर 6. आद्यश्री जो कोशिश जरूर की थी मगर गेंद टेबल को टच करे बिना और अंत में 3-6 पर सर्विस करते हुए नेट 3. रिसर्व 3 अंकों से पिछड़ते हुए 3-6 पर सर्विस करती हुई और ये बहुत लाजवाब सर्विस मगर 6-4. रिटर्न काफी खराब था। Quickly change that angle also on that. That is where Vanishka made that error. 7-4. Good serve. और इस बार काफी ज्यादा उत्तेजित होते हुए आद्यश्री मौका मिलने पर भी उसका पूरा फायदा नहीं उठा पाई। अच्छी सर्विस और यहाँ पर देखिए 5-7. जैसे ही वहां मौका मिला भरपूर उनकी सबसे बड़ी ताकत है ये। जिस तरह का खेल का प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है खास करके दिल्ली की वनिष्का भार्गवा को काफी प्रभावित किया है उन्होंने अपने खेल से। टेक्निकली काफी 7 साउंड all. और टेम्परामेंट भी लाजवाब उनका। 7-7 काफी अच्छी सर्विस। 7. कुछ देर के लिए तो उसको अच्छा रिटर्न किया मगर अपने स्ट्रोक्स को संभाल नहीं पाई। अब 8-7 1 अंक की बढ़त 8-7 पे सर्विस करती हुई वनिष्का भार्गवा 7-9. और इस तरह से 1-1 अंक बटोरते हुए थोड़ा आगे बढ़ती हुई दूसरे गेम में। That is a very good serve on the last occasion there. And not reading it properly. Joke putting it long. Now serving 7-9. Good serve. Perfect serve. In fact, 8-9. that is where she could capitalize on that serve. Look at that serve. And then quickly change the angle as well and the return going long. 8-9. Joke. Good rally. 9 Good all. intention here from Vanishka Bhargava, just trying to go and close out that point, going for that forehand, but hitting it long. 9 all. Good comeback by Joe. कोशिश काफी अच्छी थी मगर यहाँ पर परिणाम सकारात्मक नहीं थे। एक बार काफी फिर से अच्छी लगातार अपनी सर्विस बदलते हुए और यहाँ पर बैक हैंड रिटर्न गेंद टेबल को छुए बिना चली गई और 1 अंक गवा दिया। 10-11 पर 1 अंक दूर। Game point 9. Oh, there it comes. 11-9. Second The forehand cross court from Delhi University. Joe, just going along there. With that, she is able to close out that particular game. Look at the last point here. ball. अच्छा. That forehand just letting her ये तो down. आप लोगों को check करना With that, पड़ेगा. wrapping it up at 11-9. The first game had taken at 11-8. देखने को आप- University of Delhi. That is Vanishka Bhargava on the picture frame there. दिल्ली और मुंबई का रोचक मुकाबला यहाँ पर तमिलनाडु फुकन इंडोर स्टेडियम चार्जिवल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गुवाहाटी से आप डीडी स्पोर्ट्स पर सीधा प्रसारण देख रहे हैं। और आज ये दूसरे दिन
चौथा संस्करण खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020-23। यहाँ पर 16 यूनिवर्सिटी टेबल टेनिस टूर्नामेंट में भाग ले रही है और इस वक्त जो मुकाबला चल रहा है टेबल नंबर 1 पे वो है ग्रुप सी राउंड 3। This is the highlights of this particular game, which was taken by the Delhi University at 11-9. And we saw some glimpses of high quality table tennis from both the players, Jog as well as Bhargava. And this match is being played on the table number 1, which comes as a live coverage to you on DD Sports as well as Prashar Bharati YouTube live streaming. As the players just get back onto business here. It is 2 games in favor of Delhi, Bhargava. 11-8, 11-9. And for Jog, it is necessary to win this game to stay in this particular match. इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में अहम भूमिका निभाई है आयोजन के हिसाब से यूथ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनका साथ है नॉर्थ ईस्ट काउंसिल्स और यहाँ पर एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज ऑफ फिट इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ असम। इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस पूरे भव्य खेल जो इस वक्त पूरे नॉर्थ ईस्ट में चल रहा है। 11 गेम गुवाहाटी में और बाकी 5 अन्य राज्यों में। 20 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन, 200 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज इसमें भाग ले रही है और इस वक्त जो मुकाबला चल रहा है ग्रुप 3 राउंड 3 टेबल 1 पर दिल्ली और मुंबई का मुकाबला। दिल्ली की तरफ से वंशिका, मुंबई की तरफ से आद्यश्री। अच्छी सर्विस मगर नेट दोबारा सर्विस किया, मगर इस बार सफलता नहीं मिली। कोशिश जरूर की थी मगर और ये अनलकी पॉइंट। तो तीसरे मुकाबले में पहले 2 गेम जीतने के बाद दिल्ली की वंशिका तीसरे मुकाबले में 2-4 से पिछड़ रही है। एक बार फिर लगातार तीसरी गलती और अब 3 अंकों की बढ़त हो गई है मुंबई की जोग के पास सर्विस करते हुए। But unlucky net card for Bhargava there. Now she's going to serve a 2-6. Good thinking from Bhargava. Just nicely moved the angles there. Or a quick move here. And picking up that 3-6. सर्विस अच्छी हो और असरदार हो और उसका निर्णय अगर सकारात्मक हो तभी आपको अंक मिलेंगे। एक बार बहुत अच्छी सर्विस पे सब मगर अपनी ही सर्विस पे गलत स्ट्रोक रिटर्न नहीं कर पाई और इस तरह से अंक 7-3 की बढ़त यहाँ पर अजयश्री जोग के पास में। और फिर से टॉप स्पिन करने की कोशिश मगर पोजीशन तो सही था मगर जो तालमेल है, जो एग्जीक्यूशन है वो गलत हो गया। 4-7 और ये बहुत बढ़िया फोरहैंड शॉट मगर रिटर्न काफी खराब। See here slowing down the pace with that backspin and then trying to force the point with that forehand but hitting it long. This time they were successful on that backhand. Bhargava, look at that, very quickly she moved in to get that point. Good little rally. But in the end that forehand cross court error coming from Jog. वंशिका अजयश्री को टेबल के दोनों तरफ बाएं दाएं उनको बिल्कुल भी संभलने का मौका नहीं दे रही और लगातार अपनी सर्विस में अपने खेल के जो रिटर्न में बदलाव करती हुई और पूरा फायदा उठाते हुए टेबल के दोनों कॉर्नर का भरपूर उपयोग करते हुए सर्विस फॉर अजयश्री जोग। Oh, perfect. Suddenly going on that backhand down the line. And then trying to go for that forehand cross court, hitting it long, Bhargava. 7-9. 8-9.
This was absolutely unforced error from Jog. Look at that rally, just trying to roll the wrist and trying to go on the forehand down the line, hitting it into the net. 9 all. थोड़े से दबाव में यहाँ पर Time out taken by Mumbai because it's a very crucial point, and that is where to obstruct the momentum of the opponent, and because this game is very crucial for Mumbai. Look at whatever has happened. Look at those points in this particular game. Now it is 9 all, game number 3. Taking the time out in the right moment, because in this particular game it is necessary for Mumbai to win this and doesn't want the momentum to go in favor of Delhi. That is where this time out and a quick chat and quick wiping, toweling off, and then trying to regain momentum, regain that the cool mind, which is very important. You have to keep the nerves because this game is pretty crucial to stay in this particular match. 9 all. मुंबई के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि दिल्ली ऑलरेडी पहले 2 गेम जीत चुकी है और ये तीसरे काफी नजदीक है अपनी जीत से. देखते हैं किसका टेम्परामेंट ज्यादा अच्छा है. जिस खिलाड़ी का टेम्परामेंट ज्यादा अच्छा होगा वही जीतेगी. Took the time out correctly. That trying to hurry it up. Match point. 11. Oh, there it is with that error on the forehand coming from Joe Racket. 11-9 is the score in the third game. Wrapping it up in straight games. 11-8, 11-9, 11-9 in favor of Vanishka Bhargava of University of Delhi, beating Adyashree Jog in straight games. अभी टेबल नंबर 1 पर ग्रुप सी राउंड 3 का दिल्ली और मुंबई के बीच में मुकाबला वंशिका और आद्यश्री के बीच में, जिसको बहुत ही आसानी से वंशिका ने लगातार 3 गेम जीते, 11-8, 11-9 और 11-9. कहीं पर भी ये नहीं लगा आद्यश्री ने, जोग ने हालांकि कोशिश जरूर की थी, मगर जहां तक टेक्निक और टैलेंट के सवाल है, काफी अनुभवी है, अच्छी खिलाड़ी है, मगर जहां टेम्परामेंट का सवाल है वहां पर वंशिका भार्गवा काफी भारी नजर आती हुई. और अब थोड़े से अगला मुकाबले के लिए, जो कि लगातार 3 मैच जीतने के बाद आप देख सकते हैं, ये देखिए किस तरह से ये तीसरा और अंतिम गेम. That's a highlight of that highlight. Third game, winning in straight games, University of Delhi. And there you are looking at the highlights of the match where Delhi wrapped it up in straight games. So now we are getting on to the women's team C, round number 3. Tisha Kohli of Delhi University taking on Meghna Karandikar of Mumbai University at this magnificent indoor stadium here in Guwahati. The coin toss here. And the umpires being Swapna Ghosh and Arina Nath of Bengal. The players just commence their warm-up session just to get into that rhythm. And it's very important because it all depends on the fact we have got 5 matches in each of these, and then if a particular team is able to wrap it up at 3-0, then there will not be a need to play the reverse singles. That is how the format is about. And joining me in the commentary position is Vikas Pandey in Hindi. Come in, Vikas. शुक्रिया श्रीनिवास. और यकीनन एक खूबसूरत शाम के समापन की तरफ हम बढ़ रहे हैं और अब अगले मुकाबले की तरफ धीरे धीरे हम रुख कर रहे हैं, जहां पर अब सामना होना है तिशा कोहली का, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की हैं. उनके सामने होंगी मेघना, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई को रिप्रेजेंट कर रही हैं. चलिए
मुकाबले की शुरुआत, और शुरुआती लम्हों में वो अंक गया है मेघना के हक में। अच्छा रिटर्न का प्रयास था लेकिन वो वाइड गिरता हुआ, और इस वजह से तिशा कोहली 2-0 की लीड पर पहुंच गई हैं। अच्छा बैकहैंड रिटर्न देखने को मिला था हमें। अच्छी रैली, और इस रैली में इस बार कामयाबी मिली है मेघना को। मेघना के खिलाफ ये गया। वैसे ये शॉट देखें अगर तो जिस तरीके से रैली बनी थी उसको देख के लगा था एक पल के लिए कि गलती का इंतजार कर रहे हैं दोनों पैडलर। 2-2 की बराबरी पर सर्विस यहां पर मेघना की, और देखिए क्या जबरदस्त प्रदर्शन। मेघना धीरे धीरे अब अपनी लय पकड़ती हुई और यकीनन अब 3-2 से इस मुकाबले में लीड करती हुई। नेट पर गलती, तिशा कोहली को ध्यान रखना होगा। शुरुआत अच्छी की थी उन्होंने, लेकिन उसके बाद अब देखिए 2 अंक के फासले पर पहुंच चुकी हैं मेघना उनके खिलाफ। सर्विस करेंगी तिशा। इस बार हल्के हाथों से उसको डेलिकेट तरीके से खेलना चाहती थी, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही उसमें डिस्टेंस मिला। एक बार फिर से वो गलती होती हुई, और अब फिर से बराबरी पर पहुंचता हुआ एक बार फिर से मेरे साथ इस मुकाबले पर चर्चा करने के लिए जुड़ते हुए अक्षय मौर्य। पूरे दिन आज हमारा साथ निभाया आपने, और यकीन करते हैं कि जैसे जैसे ये मुकाबला समाप्ति की तरफ बढ़ेगा ये साथ इन खिलाड़ियों के खेल पर भी असर दिखाए। Thank you, Vikas. It's always a pleasure to share the commentary box with you. And even though there are no doubles in this table tennis tournament here, but it's good to commentate in tandem as a team with you. So, and look at that forehand. The challenge there is to keep it on the table. And Tisha Kohli on that occasion missing out completely. The intention was right. I was watching Tisha play earlier in this day on table number 3. And she's looked in good nick. The question is, does she have enough energy to go through this exciting contest? And obviously Vanchika Bhargav winning against Adyashri Jog in straight games with 11-8, 11-9 and 11-9. So she has set the ball rolling, Vanchika Bhargav. And the baton has been given to Tisha Kohli now, who is looking good at 8-6. She will be serving to Meghna Karandikar. She had the opportunity. The length was right, going for the straight forehand down the ground. Tisha Kohli, but just couldn't keep it down enough. Oh no, lucky break for Meghna Karandikar, to be honest. That Tisha Kohli hit that one into the net because there was ample time for her. I think she was overly soft on that rally. This is what's happening. Good night deception on part of Tisha Kohli on last occasion. Check it out in the replay. How Tisha Kohli deceived Meghna. She went for that strong forehand, finding the net once again. It is getting more and more difficult as Tisha Kohli will be serving for the game with 2 game points. Oh, good forehand, but once again the same story. How difficult it is for these players because they have to rely on their reflexes, because and obviously when the chance is there they go for that strong forehand, but a lot depends on the length of the ball also, and also your position, how close you are to the table. That's it, and lucky for that unforced error on part of Meghna Karandikar. The game's sealed by Tisha Kohli at 11-9. The University of Delhi setting the momentum rolling and keeping the good things
up as far as the game 1 is concerned. बिल्कुल, और ये शुरुआत अच्छी मानी जाएगी। जिस तरीके से पहला मुकाबला गंवाया था यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने, उसके बाद से वंशिका ने वापसी कराई पिछले मुकाबले में, तो अब यहाँ से परिस्थितियाँ थोड़ी सी बेहतर होंगी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए। और यकीनन ये रिवर्स सिंगल्स में जाएगा मुकाबला, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस समय जो ये मुकाबला चल रहा है विमेंस टीम में, ग्रुप सी का ये मुकाबला है, तीसरे राउंड का मुकाबला देशभक्ता तरुण राम ठाकुर नेहरू स्टेडियम में ये मुकाबला इस समय खेला जा रहा है, जहां पर आप डीडी स्पोर्ट्स के जरिए सीधा प्रसारण देख रहे हैं। इसके अलावा आप इसका प्रसारण प्रसार भारती के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। चलिए अगले गेम की शुरुआत, और शुरुआती जो शॉट एक्सचेंज हुए उसमें कामयाबी मिलती हुई एक बार फिर से मुंबई की मेघना को। शुरुआत में पहले गेम में भी हमने कुछ ऐसा ही देखा था, लेकिन इस बार कंट्रोल नहीं कर पाई अपने इस पेस को, जिसकी वजह से अब स्कोर 1-all की स्थिति में पहुंच गया है। Meghna Karandikar with the serve. Just having a word, perhaps she's not really happy with the ball sometimes, because when the ball hits the edge or the corner of the table, there could be a minutest dent, and that can completely change the trajectory of your shots. So a final inspection from a bit of consultation between Swapna Ghosh and Arina Nath, the two umpires for this game. And finally the ball has been changed. A bit of a knocking done. It's always good to get used to the bounce and pace of the ball before you actually get into the play. So yes, the players are satisfied with it. Just touching and tapping it from the both sides. The feel of the ball on your rubber also tells you that if it is good or not. It is going to be Meghna Karandikar. So good response from Tisha Kohli on that occasion. Sharp and flat it was, away from her body also for Meghna Karandikar, and making it very difficult for her to return. Trying to generate that spin but not being able to get it. Meghna Karandikar with her serve, as the change of serve happens with the 3-1. It will be Tisha Kohli, and look at that, what happened there. If you could go back and replay, hitting once again the edge from where the ball ricocheted, and the point was given to Meghna Karandikar. Hopefully the ball has not got another dent, because यकीनन, और अभी अभी वो बॉल बदली गई थी। इस बार अच्छा रिटर्न आया जरूर था, लेकिन वो रिटर्न बैकहैंड पे जाकर सीधे नेट से टकराया, और वो बाउंस के बाद वो परेशानी थोड़ी सी देखने को मिली। लेकिन एक बार फिर से वो गलती मेघना लगातार जो बैकलाइन पे कर रही हैं, उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि पहला गेम वो हार चुकी हैं और इस समय पिछड़ रही हैं दूसरे गेम में भी। इस बार इस्तेमाल किया, बिल्कुल जगह देखी और क्रॉस कोर्ट के लिए गई। देखिए पूरा इस्तेमाल किया उस कोर्ट का, और टेबल पे जो जगह मिली उन्हें, वहां से वो अंक हासिल करने से पीछे नहीं उठी। एक बार फिर से उसी जगह से अंक हासिल करने की कोशिश। रिटर्न आया जरूर, लेकिन वो रिटर्न इतना सक्रिय नहीं था मेघना का कि उन्हें बचा पाए। अच्छा रिटर्न, लेकिन फिर से वो बैकहैंड पर एक बार गलती होती हुई तिशा से। A slight objection from Tisha Kohli for her return, because it was her serve actually, and a lovely forehand from the sidelines there. It was close to her body. I like the way she positioned herself, Tisha Kohli, at 9-4.
looking very good to seal this game number 2 also, and she moves on to 10-4 now with the 6 game points in game number 2. It will be Tisha Kohli. I'm sure shouldn't be much of a trouble for her to cruise through game number 3, but such unforced error, as they say, commentators curse. She finds the net and the serve change. Oh, that's all over. And yes, that unforced error on part of Meghna Karandikar will allow Tisha Kohli to win the second game convincingly with 11-5, and she will come out with all guns blazing in game number 3 because the momentum provided by Vanchika Bhargav in last game and straight games beating Adeshri Jog of Mumbai. Tisha Kohli is looking very good. There you see on your TV screens, it is Meghna Karandikar in yellow jersey, looking tense, and rightly so. These are some of the highlights, how this game panned out in the last few minutes. We'll have to see that. Even when you're playing with that open bat, Meghna Gulzar on that occasion, she was already halfway down the court, halfway down the table. So she has to control the pace, otherwise you're wasting that opportunity. You have the chance, the ball was there, she had enough time for her, but she's missed out on some very, very crucial opportunities because she will be cribbing and pinching herself hard. Love all. बिल्कुल, और पहले गेम में भी हमने देखा एकदम नेक टू नेक मुकाबला चल रहा था. दूसरे गेम में भी काफी हद तक प्रभावशाली खेल दिखाया, लेकिन अब जब तीसरा गेम शुरू हुआ है तो वहां किस तरीके से मुकाबले में वापसी करती है मेघना, ये देखना दिलचस्प होगा. फिलहाल टिशा ने एक बार फिर से बढ़त बना ली है, और वो मौके जितने मिलेंगे और वो कोर्ट का जो इस्तेमाल करने की हम लगातार बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्सेस आप अगर देखें टिशा के तो काफी बेहतर नजर आ रहे हैं, और यही वजह है कि इस समय मेघना के खिलाफ वो बेहतर नजर आ रही है. देखिए कितनी बढ़िया से वो बैकहैंड पर रिटर्न आया था, और एक बार फिर वही कोशिश थी, लेकिन इस बार थोड़ा सा किस्मत का साथ नहीं मिला. यहां से थोड़ी सी गफलत में और थोड़ा सा ज्यादा फोर्स जनरेट किया, जिसकी वजह से वो डिस्टेंस मिला और वाइड जाके गिरा था. यहाँ पे एक स्लैप शॉट क्रिकेट की भाषा में, वो कुछ ट्राई किया था, कुछ अलग करने का प्रयास था, लेकिन वो सीधे जाके नेट से टकराया तिशा का. और तिशा कोहली अच्छी स्थिति में हैं इस मुकाबले के अंदर, ज्यादा गलतियां वो कर नहीं सकती हैं और बिल्कुल करेंगी नहीं. जब जब मौके मिलेंगे फोर हैंड पे, तब तब उन्होंने अच्छे अंक तब्दील किए हैं, और इस बार भी वही देखने को मिला. इस बार अच्छा इस्तेमाल, इस बार कॉर्नर का, वो टेबल का जो कॉर्नर है उसका अच्छा इस्तेमाल करती हुई मेघना. और यकीनन ऐसे ही कुछ अच्छे शॉट्स की जरूरत है, और टाइम आउट इसे बीच लिया गया है. थोड़ा सा मोमेंटम शिफ्ट करने की कोशिश, और टाइम आउट के बाद क्या परिस्थितियां बदलती हैं. देशभक्त तरुण राम फुकान नेहरू स्टेडियम से हम सीधा प्रसारण आपके लिए लेकर आ रहे हैं. खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के अंदर टेबल टेनिस में विमेंस टीम में ग्रुप सी का ये मुकाबला तीसरे दौर का चल रहा है, और ये आखिरी मुकाबला है आज के दिन का. Absolutely, and both of these teams would not leave any stone unturned to stretch it all the way down to the second reverse singles. And looking at the situation right now, if Tisha Kohli goes on to win this game, it will be definitely into the first reverse singles between Kavya Yadav and Adeshri Jog. So in the meanwhile, getting back to live action, Tisha Kohli ready with the serve at 4-3. Another unforced error from Meghna Karandikar, making life much easier for Tisha Kohli as she will face the serve from Meghna at 3-5. Now it is 3-6. Meghna Karandikar seems to be missing a point here. Also, the way she's trying to serve, she's constantly looking to generate that spin, but not even on a single occasion she's been able to generate that spin.
That has been a bit of a bother for her. Now Tisha Kohli serving at 7-3. Simple forehand, but lucky for Meghna that she got a slight touch of that back line there, and lucky to have that point in her kitty. She's been trying to do that for a while now. Look at that spin. That's what we are talking about. The Tisha Kohli, when she serves that, she chops it so beautifully. She does generate some side spin in her ball, and that has been a very, very strong and positive sign as far as Tisha Kohli's game is concerned. On the contrary, Meghna Karinder, even though she got a nice block drop from forehand on that last occasion, as she narrows down the margin to 6-7 now. As she got the touch, no. She's missed out the sideline and the back line as well, as the Tisha Kohli gets one more point at 8-6. A touch of net will be such mistakes. She should realize, Meghna Karinder Vikas, that she is standing right in the center of the table and very close to the table, and she is going for that open backhand drop. She will have to control the pace, otherwise get the angle at least right. 4 मैच पॉइंट, और क्या ये फिनिश हो चुका है? बिल्कुल एक तरफा बना के रख दिया। अच्छा मुकाबला किया मेघना ने, लेकिन इसके बावजूद तिशा कोहली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की हावी रही इस मुकाबले पर, और लगातार 3 गेम में 11-9, 11-5, 11-6 से जीत दर्ज की है, और अब 2-1 पर पहुंचा दिया है अपनी टीम को। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई को अगला रिवर्स सिंगल्स मुकाबला अगर जीतती है तब 5वें और निर्णायक मुकाबले में जाएगा ये टाई, अन्यथा दिल्ली अगर जीतती है, काव्या यादव अगर जीतती हैं, तो वहीं पे ये मुकाबला समाप्त हो जाएगा। Because obviously Kavya Yadav, we saw that up against Amruta Phadke in the opening game. She did win the third game by 12-10, but she looked rusty. Even though she found her momentum much later, it was too late in the day for her. But this is her second chance of salvation, if I could call it. And Kavya Yadav would have a go at Adishri Jog in this first reverse singles. And to take you through the proceedings, in the commentary box, it will be Srinivasan along with Anil Sharma. बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय मौर्य और विकास पांडे। और जैसा कि अभी भी हमने देखा कि पहला मुकाबला मुंबई ने जीता, दूसरा दिल्ली ने, और तीसरा भी दिल्ली ने जीता। तो 2-1 की बढ़त, और अब चौथा मुकाबला यानी कि रिवर्स सिंगल्स में भी फिर हम चल रहे हैं, और ये कुछ ही देर में ये मुकाबला शुरू होगा दिल्ली और मुंबई के बीच में, काव्या और आद्यश्री जोग के बीच में। ग्रुप सी राउंड 3 मैच नंबर 4, टेबल नंबर 1। The matches under the table number 1 are being brought to you live on DVD Sports as well as live streaming in Prasar Bharati YouTube. Adishri Jog taking on Delhi University's Kavya Yadav. This is a reverse singles, as it is a 2-1 lead at the moment for Delhi. If Kavya Yadav is able to wrap it up, it will be 3-1, and they would have won this particular tie as well. If she loses, it will go on to the decider match. That will be played between Vanishka Bhargava and Amruta Phadke. Right now the players just warming up there. Mr. 5 game. Delhi The table number 1. versus Mumbai University. Delhi to serve. It's all set here, Love all. and it is Kavya Savi. One love. Oh, superb work here Love on the two. forehand down the line from Kavya Yadav. 2 love.
This bit over anxious to go on that backhand cross court. Jog hitting it wide. Look at that right position there, but that backhand cross court letting her down. Good serve. The return going long. 3-1. Kavya Yadav, Delhi. Net. Let 3-1. that serve. Serving again. Oh, that backhand push going long. 3-2. Kavya Yadav. That's a good thinking from Kavya Yadav, changing that angle and suddenly coming with that forehand cross court return from Jog going long. 2-4. Jog serving. Good return. This is where when there is a spun serve, you need to anticipate to counter that spin. She did it. 2-5. Couldn't really control that forehand. Jog, look at that. Ball just bouncing on her own side. Very good serve. 7-2. Good 5-point lead for Kavya Yadav of Delhi. Opening game. First of the reverse singles. Superb. Tremendous power on the forehand cross court. Good sense of anticipation. More so in the right position and able to transfer the shoulder movement well. Again, yet another good 2-9. powerful one. And serving 2-9 is Jog under tremendous pressure at the moment. Oh, very good serve. Lot of spin. Not able to read that serve. That is why the backhand push going long. Still 9-3. Kavya Yadav serving. Oh, lucky net caught. Immediately apology rendered, the right thing to do. So that sets up the 7 game points in the opening game of the first reverse singles as Kavya Yadav prepares to serve 10-3. Oh, tremendous spin on the serve. And keeping that momentum with that good serve, coming with that backhand cross court winner. 11-3 is the score. Look at the last point there. Terrific punch on that backhand. With that 11-3, Delhi leading the proceedings here, taking the first game at 11-3 in this women's Team C round 3 event. And the first of the reverse singles here, Kavya Yadav Delhi taking the first game 11-3. Have a look at the highlights of this particular game. इस पूरे पहले गेम में 11-3 की स्कोर के अलावा जिस तरह का खेल का यहाँ प्रदर्शन किया है वह यह बताता है कि उनके जो खेल का जो स्तर है वो कितना ऊपर है और इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में खास करके पहले गेम में काफी फासला है और आप देख सकते हैं फोरहैंड सर्विस तो लाजवाब है ही लेकिन साथ साथ इनकी सर्विस का कोई जवाब नहीं। अद्यश्री जोग के पास में मुंबई यूनिवर्सिटी की अद्यश्री जोग आप स्क्रीन पर देखिए काव्या यादव और अब दूसरे गेम में पहले गेम में पिछड़ने के बाद दूसरे गेम में सर्विस करती हुई अद्यश्री जोग और एक बार फिर से एक अंक गवा दिया और खाता खुल गया यहाँ पर दिल्ली की तरफ से काव्या यादव का। That is a very good serve, the backhand letting her down for Kavya. 1-1. Game number 2. Kavya serving. See, quickly moving to her left, getting into the right position there. Jog coming with a powerful forehand, inside out. 1-2. Good thinking there, try to punch on that forehand. But the ball just flying over the table there. 3-1 Joe. Oh, that's a good spun serve. Not reading it right, the return going long. Oh, very nicely changing the angles here. Joe 1-5. making the opponent to move from forehand to backhand. Look at that, creating that opening. Perfect game here. Good point, 4-point lead for Joe.
Kavya serving 1-5. This was an error coming because she could not move to her right and take that position. Good thinking from Jog. Changing the flanks comfortably, making the opponent run around. 1-6. दूसरे गेम में अजयश्री जोग का खेल बिल्कुल अलग किस्म का 7-1. खेल देखने को मिला है. 6-7-1. आप समझ सकते हैं कितना सुंदर कमबैक उन्होंने किया है. 6 अंकों का फासला. और ये यहाँ पर बहुत बढ़िया फोरहैंड स्मैश, मगर यहाँ पर रिटर्न नहीं कर पाई. और अब काफी देर बाद एक अंक बटोरा 7-2 पर सर्विस करती हुई. टेबल के दोनों तरफ, मगर इस बार लगातार दूसरा अंक. 3-7. तो अब 4 अंकों का फासला दोनों खिलाड़ियों के बीच में. मुंबई और दिल्ली, ये चौथा मुकाबला है. पहले 3 मुकाबलों में से Next. 3-7. एक मुंबई ने जीता, 2 दिल्ली ने, और ये चौथा मुकाबला जिसमें बहुत बढ़िया वापसी की है यहाँ पर मुंबई की 3-7. अजयश्री जोग ने. सर्विस फॉर काव्या यादव. और लगातार 3-8. बहुत बढ़िया प्रदर्शन, अपने खेल में काफी निखार, चाहे फोरहैंड हो या बैकहैंड हो. सर्विस, और सबसे अच्छी बात उनका जो आत्मविश्वास है, उनका जो अपने आप कि मैं ये कर सकती हूं, उन्होंने करके दिखाया इस दूसरे मैच में. काफी संभल कर खेलती हुई, कोई जल्दबाजी नहीं है. और एक बार फिर से 8-4. एक अंक बटोरा अपने लिए, और इस तरह से अब स्कोर हो गया है 4-8. यह गवाया है उन्होंने अंक. सो अब 4 अंकों का फासला सर्विस करते हुए एक बार फिर से. और यहाँ पर कुछ 9-4. अलग तरीके का खेल नजर आ रहा है काव्या यादव का, थोड़ी सी दबाव में. हालांकि पहला गेम वो जीत गई है, मगर दूसरे मैच में यहाँ पर अजयश्री जोग मुंबई की दबाव बनाए हुए. 4-10. Kavya Yadav serving, facing a. Oh, that is the game Legged. going in favor of Mumbai. Goes to Mumbai University. Ajayashree Jog in command right through this particular game, winning it at 11-4, and took an early lead and then consolidated the lead rather comfortably and convincingly, winning this game. Even though earlier losing the first game rather easily, but then coming back so strongly. Have a look at that highlights of the last game. Good, the moving from the flank to flank, keeping that, you see that backhand, both the players, and certainly going on to the forehand and coming with that point here. Jog really changing a clear strategy here on the attack, and some of the unforced errors also coming from the racket of Kavya Yadav. And when you are under pressure, you tend to make more errors. And look at the good rally here. In the end, what happens in rally is how do you close it out? And you see the change in that pace at the last point. As the players are back here in action, it's the game on, game number 3. Flower. And it is Kavya Yadav from Delhi University serving here. Lower. Oh, that is a relentless attack on both the flanks 1 love. by Kavya Yadav, picking up that error on the forehand from Jog. 1 love. The return of 1 serve was all. actually setting up that point, keeping that momentum going. Look at the return. 1 all. Deep and powerful backhand from Kavya, forcing that error from Jog racket. 1-2. Oh, what a rally. 3-1. Both the players going on the attack. In the end, look at that powerful forehand, cross court. Picking up that error from Jog racket. 3-1, Kavya.
3-2. This time both the players are trying to close out the point early, and the error coming from Kavya. She's not in the right position. She just had to take it on the backhand in a hurry, making that mistake. 3-2. Oh, that's when we say table tennis is a swift game, that is what you are seeing here. And trying to go for that backhand push, Jog putting it into the net. 2-4. Oh, that's a good one. Just ball clipping the edge. There it is, on the line. Absolutely outstretched. Kavya has no chance of retrieving. 3-4. That's a good serve. Lot of spin on that. If you can't read that spin, which way it moves, which way it's going to spin, you make that error of hitting it long. Lucky net card in favor of Jog. 4-all. Good comeback by Jog. Rather, it is 4-5. Kavya Yadav serving. Oh, that was just missing the table there. The backhand push from Jog. There it is. 5-all. Jog to serve. Game all, 5-all. Very good serve. 5. Again, when you want to close it out early, you make that error. 6-5. Both the players not taking any chance here. But then slightly increase the pace from Kavya Yadav. That is what is picking up that error from a backhand of Jog. 6-all. Game all, 6-all. As Kavya Yadav gets ready to serve. Yeah, very good serve. Pretty deceptive. Not anticipated. Hurried return from Jog on the backhand going wide. 7-6. Yadav. Oh, what a shot, but a good rally. 7-all. Powerful deep forehand cross court from Jog. And a hurried forehand from Kavya going long. 7-all as Jog prepares to serve. Lovely rally. What matters is in the end who's going to close it out. Good little rally here. And Jog making that error, overheating. Serving 7-8 now. Taking the allotted time to serve. That is a very good return of serve. Reading that spin rightly and giving a deep return, countering that spin. And it's 9-7. Kavya Yadav preparing to serve. Not hurrying up with the serve. Oh, weak return. And quickly moving to his left, right position there, and coming with that powerful forehand winner. That sets up 3 game points for Kavya Yadav of Delhi as she gets ready to serve. Oh, a bit of a lucky point here, but nevertheless winning this game 11-7. That backhand hitting the edge of the table. Have a look at that here. That is why immediately apology rendered here. That is a sportsmanship here. That is a sport, it is. So with that, it's pretty interesting the way it is going on. Taking the first game at 11-3 and losing the second one at 4-11. Wrapping up the third game at 11-7. So when the players get back onto the table, there you see Jog having a word with the coach and the teammates. When the players just get back, it is for Jog to make sure that she wins the game to stay in this particular match. बेस्ट ऑफ द 5 में पहले 2 मुकाबले एक तरफा थे. पहले मुकाबले में दिल्ली ने डोमिनेट किया.
काव्या यादव। बिल्कुल काफी गैप था दोनों के स्कोर में, 11-3। आप अंदाज लगा सकते हैं किस तरह से हावी रही वो, मगर उसी तरह का ट्रीटमेंट उनको दूसरे गेम में मिला जब मुंबई ने दिल्ली को हराया दूसरे गेम में 11-4। मगर तीसरे गेम में बिल्कुल नेक टू नेक फाइट। और अब हम चौथे गेम की शुरुआत और आध्याश्री जोग सर्विस। Right now, in fact, the momentum is in favor of Delhi, but the first point taken by Mumbai, Jog, forcing that error on the backhand of Kavya Yadav. Yeah, very good deep return on the backhand of Kavya Yadav, and a hurried return going wide. There it is. Look at that, increasing that pace on that backhand. Love to Kavya Yadav. Net card not going in Jog's favor. 1-2, Kavya Yadav. Focused. What a return of serve. Judging that to spin and then countering it so nicely with that lovely top spin there. 3-1. Another error coming from Kavya's racket here. 4-1 lead for Mumbai Jog. As she gets ready to serve. Oh, interesting rally here, but in the end Kavya not able to close it out. Going on that forehand. There it is, going for a spun. Top spin letting her down. Oh, look at that big lead now, 6-1 for Jog of University of Mumbai. Powerful forehand there on the desperate backhand from Kavya going over the table. 6-2. Jog serving. Net. Let 6-2. serving again. Oh, that is a very good serve there. Side spun serve, picking up that error. 7-2. This was unforced. She was in the right position there, Jog, but not able to control that backhand. 3-7. Here again, just hurrying up that backhand, Jog putting it into the net. Now she'll be serving 7-4 anyways. Or rather 4-7 for Kavya. Still a 3-point deficit for her. There is a lot of side spin from Kavya. That is where the error coming from the racket of Jog. Now serving 7-5. बहुत बढ़िया कमबैक किया काव्या यादव ने। 5-6 अंकों से पीछे रही थी, मगर जिस तरह से वो वापसी की, अच्छा प्रदर्शन, मगर एक बार और कोशिश, लेकिन यहाँ पर उनको सफलता नहीं मिली। अब 8-5, 3 अंकों से बढ़त अभी भी 8-5 पर सर्विस करती हुई मुंबई यूनिवर्सिटी की जोग। काफी पैनापन है उनकी सर्विस में और यहाँ पर चूक हो गई उनसे और 6-8 पर सर्विस करेगी अब काव्या यादव। ये रोचक मुकाबला दिल्ली और मुंबई के बीच में चौथा, पहला मुंबई ने जीता, बाद में दूसरा और तीसरा दिल्ली ने, और ये चौथा लगभग एक बार फिर सही ढंग से अपने स्ट्रोक्स को कंट्रोल में, और ये बहुत बढ़िया वापसी 3-3, 4-4 अंकों से पिछड़ने के बाद
अगर आप 7-8 पर है यानी लगभग 1 अंक का फासला 7-8 पर सर्विस करती हुई काव्या यादव। बहुत बढ़िया रैली है मगर इसका कोई जवाब नहीं और 8-8 दोनों टीमें बराबर 8-8 पे। और ये काफी रोचक मुकाबला आप देख सकते हैं। इस बैक हैंड रिटर्न का कोई जवाब नहीं यहाँ पर आद्यश्री जोग मुंबई की खिलाड़ी के पास। That is a very good rally, and the timeout taken by Delhi University because it's very important. Now she has made a comeback, and now the score is leveled 8-all, and they are aware that if this game, if Kavya is able to win, they can wrap up this particular match, the 5 match. You can go it at leave it at 3-1. Look at that, the way this. Oh, that was a lucky net card. Immediately apology rendered there by Jog. There she is on the picture frame having a word with the teammates and the coach. And as the players just get back after the timeout taken by Delhi, and the right thing to do at this moment, because for them, if they win this particular game, they would have wrapped up the match as well. It's 8-all. That is the score now, and it is going to be Jog serving 8-all, game number 4, 2-1 game score in favor of Delhi. ग्रुप सी राउंड 3 का मैच 4 टेबल नंबर 1 पे ये चौथा मुकाबला 9-8. आप देख सकते हैं और अब अंक हो गया है 9-8। 9-8 पर सर्विस करती हुई आद्यश्री जोग मुंबई की। बेहतरीन स्ट्रोक, कोई जवाब नहीं यहाँ पर काव्या यादव के पास। 8-10. और इसी तरह का प्रदर्शन की उपेक्षा है यहाँ पर आद्यश्री जोग से। और अब 10-8 1 अंक की दूरी 8-10 पर सर्विस करती हुई काव्या यादव। 2 game points. Oh, the error on the return of serve. Still not out of trouble. Serving at 9-10. Still a game point in favor of Jog. And Kavya getting ready to serve. Kavya Yadav of Delhi. Superb control on that. Right position there. Weak return. Very nice put away there. Look at that tremendous power on that forehand. Making it deuce 10-all. Now it is Jog serving. काफी नजदीकी मुकाबला दोनों ही खिलाड़ियों में से कौन जीते ये कहना बहुत मुश्किल। और 11-10 पे 10-11. आप देख सकते हैं यह मुकाबला देखने जिस तरह का यह मुकाबला चल रहा है, दोनों ही खिलाड़ी का अद्भुत प्रदर्शन और जितनी सुंदर सर्विस उतना ही सुंदर रिटर्न। और इस तरह से ये 4 game goes to चौथा Mumbai University. 12-10 से ये मुकाबला जीत लिया है मुंबई की आद्यश्री जोग ने। तो दोनों खिलाड़ियों ने 2-2 मैच जीते। पहला दिल्ली ने, दूसरा मुंबई ने, फिर वापस दिल्ली ने और फिर जबरदस्त वापसी मुंबई की 12-10। तो बेस्ट ऑफ द 5 में दोनों खिलाड़ियों ने 2-2 मैच जीते हैं। और अभी 5वां और अंतिम निर्णायक मुकाबला कुछ ही देर में शुरू होने जा रहा है टेबल नंबर 1 पर मैच नंबर 4 ग्रुप सी राउंड 3 का वुमेन्स टीम। These are the highlights of the last game, which was wrapped up by Mumbai at 12-10 and taking it to the decider game. What a match it has been. 2-all. Very closely contested. Delhi And it to is serve. Kavya Yadav of Delhi preparing to Love all. serve. 1. One love. Backhand error from Jog. 1 love Delhi. Oh, what a rally it has been. Love 2. In the end, coming with that powerful forehand cross-court, exploiting the error from Jog on the forehand. Look at that. Tremendous power on that.
Love to. Joke serving. No, that's completely miscued. Return, not reading that spin. Trying to go on the attack on the return of serve. 1-2. Decider game. Oh, not a way to drop that particular point like this. Error on the serve. It's 3-1. Kavya Yadav. Staying focused, taking the time to serve. What a rally. And a lot of power on the turf. Backhand from Kavya Yadav. That is where Jog is not in the right position and not able to close the face of the paddle and making that error. 4-1, 3-point lead. Kavya Yadav. A very good serve, keeping the receiver guessing on that serve. अब जब पांचवें और अंतिम मुकाबले में अगर आप 5-1, change of sides. पांचवें और अंतिम मुकाबले में अगर आप 4 अंकों की बढ़त ले लेते हैं, जिस तरह का नींव रखी है काव्या यादव ने अपने प्रदर्शन में, जिस तरह का बदलाव किया है, और खास करके फोरहैंड जब भी उनको मौका मिलता है बिल्कुल हर एक अंक के लिए आज श्री जोग मुंबई की सर्विस करते हुए, और ये जितना सुंदर शॉट उतनी ही सुंदर रिटर्न. Perfect reflex there. Look at the powerful forehand and equally good on from Kavya Yadav. 6-2. Oh, what a return of serve. Quick sense of anticipation. Moved quickly into the position. Coming with that powerful forehand. 6-3. Decider game. As Kavya Yadav prepares to serve. Good back spun serve. Return was very good. Countering that spin. There it is. That is where it's forcing the error from Kavya's racket. 4-6. Joke serving. Serve. Good serve. 5-6. इस सर्विस के पहले मैं सोच ही रहा था कि उनकी जो सबसे बड़ी ताकत है स्पन सर्विस, वही वह करेगी, और इस सर्विस के द्वारा जो अंकों की दूरी है उसको कम किया, और अब 5-6 पर टाइम आउट. तो काफी नजदीकी मुकाबला. ये 5वां और अंतिम. आप देख सकते हैं यहाँ पे स्कोर जो दिखाया जा रहा है वो गलत है. बेस्ट ऑफ द 5 में पहला मुकाबला दिल्ली ने जीता, दूसरा कमबैक किया मुंबई ने, फिर वापस दिल्ली ने, और फिर वापस मुंबई ने. मगर ये चौथा और अंतिम 5वां मुकाबला. 6-5 दोनों खिलाड़ी अपनी भरपूर कोशिश करते हुए, प्रयत्न करते हुए, और चाहते हैं कि जो सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है वही जीते. मगर दोनों खिलाड़ियों की जो खेल में जो उनका टैलेंट है, उनकी जो टेक्निक्स है, काफी साउंड है. मगर यहाँ पर जिसका टेम्परामेंट अच्छा होगा वही खिलाड़ी विजेता बनेगा. Test of nerves apart from test of skills here. As you'll see, Joe preparing to serve now. 5-6 in the decider game. Oh, lucky there. 6 all. Joke the ball just hitting the sideline, the edge of the table, not side of the table. That is why the point goes in our favor, and apology rendered immediately. 6 all as Kavya Yadav prepares to serve. What a return! Honestly, I don't think Kavya anticipated that return from Jog at all. Powerful forehand, and then of course that lucky net card as well.
Oh, 6-8. very close contest. Look at that last point here. 8-6, Kavya Yadav. Eight. What a rally. In the end, that powerful backhand cross-court punch from Kavya Yadav. There it is. Right in the body. And picks up a point in style. Down 6-9. Joke serving. Decider game. Oh, unlucky on the net part. She did move into the position, moved to her left, wanted to control that forehand, but the ball just hitting the high part of the net and falling back on her own court. That sets up 4 match points as well for Kavya Yadav of Delhi as she serves now. Oh, it's all over here. 6. The game and match With that in favor of powerful Delhi University. stroke from Kavya Yadav, picking up error on the return. 11-6 is the score on the decider game. What a match it has been. Kavya Yadav of Delhi wrapping it up. Have a look at the highlights of this particular game here, which she wrapped up at 11-6 Kavya Yadav. That is the last point. What a match. Absorbing match. So, ये अंतिम मुकाबला जो हमने देखा अभी ग्रुप सी राउंड 3 मैच 4 टेबल नंबर 1 पर दिल्ली और मुंबई का काफी नजदीकी मुकाबला। बेस्ट ऑफ द 5 में दोनों टीमों ने एक एक मुकाबले जीते थे। पहला दिल्ली, दूसरा मुंबई, उसके बाद फिर दिल्ली, फिर मुंबई, मगर अंतिम निर्णायक जो मुकाबला था वो दिल्ली की काव्या यादव ने जीता 11-6। तो इस तरह से ये ग्रुप सी राउंड 3 मैच नंबर 4 टेबल नंबर 1 पे दिल्ली ने मुंबई को हरा दिया है। और जो हमसे और ये हाइलाइट्स ये देखिए किस तरह से जो अंतिम पॉइंट्स किस तरह से ये निर्णायक मुकाबले में और ये भरपूर कोशिश जरूर की थी वहां पे आदर्शिया जोग ने, मगर आज शायद भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया। काव्या यादव उनका खेल का प्रदर्शन बिल्कुल अलग 5वें और अंतिम मुकाबले में। सो डे 2 सो ग्रुप सी राउंड 3 मैच 4 टेबल 1 सो आज डे 2 चौथा संस्करण खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के आज सभी मुकाबले समाप्त हो गए। और जैसा कि हमने देखा 5 मुकाबलों में दिल्ली की काव्या यादव ने, आप ये हाईलाइट देख सकते हैं, जो अंतिम और रोचक मुकाबला काफी नजदीकी, मगर दोनों ही काफी प्रतिभावान खिलाड़ी। और अब सारे मैच खत्म हो चुके हैं टेबल 1 और इस अद्भुत और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 जिसका सीधा प्रसारण आज आपने देखा डीडी स्पोर्ट्स पर। और यह अंतिम मुकाबला खत्म हो चुके हैं। अब सारे मुकाबले खत्म हो चुके हैं डे 2 के। और अब हम आपसे अनुमति लेते हैं कि कल डे 3 में आपसे फिर हमारी मुलाकात होगी इसी समय पर, और फिर जो बचे हुए मुकाबले हैं वो हम आपसे करेंगे। और मेरे जो साथी कमेंटेटर्स उन सभी का साथ में धन्यवाद देते हुए, विकास पांडे हिंदी के, शेषाद्रि श्रीनिवासन अंग्रेजी के, अक्षय मौर्य इंग्लिश के, और मैं आदिल शर्मा बात्रा हिंदी के कमेंटेटर, आप सभी लोगों का धन्यवाद देते हुए अलविदा। जय हिंद।